president of this conference was Sri Bagara of the Hindu Parishad. Uh, uh, Now, as I look at this whole thing, uh, I go deeper and deeper into the vision of Sri Aurobindo and the mother of education. It was in the early 50s that the ashram school was established, and a special status was given to this school, which was left alone to carry on education as they wished, not shackled by government rules and regulations. This gave us an opportunity to really closely implement the integral education as not propagated, but as mentioned by Sri Aurobindo and the mother, integral education. So it started with KG and went right up to knowledge, which we call knowledge is the last rung of education. And my daughter, who studied in this school since the age of 3, she tells me that the last 3 years, which we call knowledge, really told us what was being done in the earlier part of the schooling. And what she tells me that whatever she has learnt was in knowledge. So it's a remarkable system, or should I say, a remarkable lack of system in Pondicherry. But what we have to understand is that there is a system which is being followed in different shapes and sizes in India as far as education goes. We are slowly heading towards what Sri Aurobindo and the mother have talked of education at the different levels of consciousness, going from body to spiritual. And we are giving, it seems that the government now itself is through NEP is slowly heading in the same direction. So we are very happy about that. And that has encouraged us to set up a large school in Delhi and bring in all these things which we are going to discuss and have been discussing on this in this IKS, that and also we realize as to how to implement it. But I'm very happy that so many people have joined us in, as Sri Aurobindo says, to recover the old system of education and principles that we learnt. And I'm sure that when we put it into practice, as we will one day, because it's backed by all of you people who are so involved with education, teachers, and who have so much goodwill for India, which is Bharat. And it is going to be a series of 5 get-togethers. One is over, and this is the first virtual one. And 3 more are to follow. So I look forward to seeing you more and more in the future and interacting with you as and when the time permits. So my good luck to you, best wishes, and may your progress in the future be deep and wide. Thank you so much. Thank you so much, Divya. Thank you. Thank you so much, sir. Your words were truly inspiring, and we too look forward to the better upliftment for IKS as a collaborative effort. Now, since we have more of the attendees who have joined us,
I would again like to welcome each and everyone. I am deeply honored to be the host for today's second international conference on integrating Indian knowledge system in school education. It is truly a joy to stand here representing a collective vision that is so close to my heart and to the heart of thousands who believe in meaningful, conscious, and holistic education. This remarkable initiative is organized by Sri Aurobindo Society in collaboration with Maharishi International University, Fairfield, USA, Sri Lal Bahadur Shastri National Sanskrit University, India, Bharatiya Shiksha Board, BSB, India, and Future Icons, India. What a privilege! Today's gathering is much more than an event. It is a movement. It is a shared intention and a collective step towards receiving timelines wisdom for the classroom of tomorrow. On behalf of Sri Aurobindo Society, I extend my heartfelt welcome to every dignitary, panel member, and invitees. The Society has been a guiding light in reimagining education, inspired by Sri Aurobindo and the mother's vision of learning as a journey of deep inquiry, inner growth, and conscious evolution. Following the successful commencement of our mission to responsibly integrate Indian knowledge system into school education, we now advance this momentum into the next panel of the series. With the launch of the IKS Charter in the first edition, the discussions ahead seek to further deepen our collective understanding and to ensure that its development and implementation progress is done in a thoughtful, relevant, and responsible manner across the school. Now, before we proceed further, we will just take a moment to watch the IKS Charter video, a powerful introduction to the spirit behind this entire movement. सोच की शुरुआत है। तो सबसे पहला और बड़ा सवाल, आखिर इस चार्टर की जरूरत ही क्यों पड़ी? ये कोई और सरकारी दस्तावेज तो है नहीं। इसके पीछे एक बहुत गहरी सोच है। तो चलिए पता करते हैं कि इस बदलाव की नींव में आखिर है क्या। आज हमारी शिक्षा व्यवस्था एक तरह के चौराहे पर खड़ी है। एक रास्ता हमें ग्लोबल दुनिया की तरफ ले जाता है और दूसरा रास्ता हमारी हजारों साल पुरानी सांस्कृतिक जड़ों की तरफ। अब सवाल ये है कि क्या हम दोनों। तो भारत की स्कूली शिक्षा में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। एक नया चार्टर आया है जो हमारी क्लासरूम्स को शायद हमेशा के लिए बदल सकता है। और देखिए, ये सिर्फ सिलेबस में एक और चैप्टर जोड़ने की बात नहीं है। ये एक पूरा रोड मैप है कि कैसे हमारी हजारों साल पुरानी ज्ञान परंपराओं को आज की मॉडर्न एजुकेशन से जोड़ा जाए। तो चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि इसका असल में मतलब क्या है। वह अपनी समृद्धि लुटाती है, जैसे अनंत अंतरिक्ष के हर इंच को जीवन और ऊर्जा से भर देता है।
तो है नहीं, इसके पीछे एक बहुत गहरी सोच है। तो चलिए पता करते हैं कि इस बदलाव की नींव में आखिर है क्या। आज हमारी शिक्षा व्यवस्था एक तरह के चौराहे पर खड़ी है। एक रास्ता हमें ग्लोबल दुनिया की तरफ ले जाता है और दूसरा रास्ता हमारी हजारों साल पुरानी सांस्कृतिक जड़ों की तरफ। अब सवाल यह है कि क्या हम दोनों पर एक साथ चल सकते हैं। ये चार्टर कहता है हाँ, बिल्कुल चल सकते हैं। और सच कहूं तो यही संतुलन बनाना सबसे बड़ी चुनौती भी है और सबसे बड़ा मौका भी। अच्छा, हम बार बार भारतीय ज्ञान या इंडियन नॉलेज की बात कर रहे हैं, पर इसका मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ वेद पुराणों की बातें हैं या कुछ और भी है इसमें? ये समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए देखते हैं कि ये चार्टर खुद इसे कैसे डिफाइन करता है। तो ये बात बिल्कुल साफ है। आईकेएस का मतलब सिर्फ पुराने ग्रंथ नहीं है। हम बात कर रहे हैं साइंस की, फिलॉसफी की, आर्ट की, आर्किटेक्चर की, इन सब का एक बहुत बड़ा और जीता जागता खजाना। ये भारत की इंटेलेक्चुअल विरासत है जिसे अब क्लासरूम्स तक लाने की तैयारी है। और ये कवर इमेज ये पूरी सोच को एक This तस्वीर में system दिखा है, देती है। you can जरा block ध्यान it से from the देखिए source. कैसे साइंस, And then आर्ट open और it when you require. एक ही पहिए में साथ Oh. घूम रहे हैं। ये यही बताता And है what's it all? ज्ञान What it को all अलग work? अलग डिब्बों में नहीं बांटा जा सकता। Was ये सब it एक right? दूसरे से All जुड़ा what हुआ I है। said? लेकिन अच्छा, सवाल ये है कि ओके। बड़े ज्ञान के भंडार को क्लासरूम में लाया कैसे जाए। क्या बस नया सिलेबस जोड़ने जैसा आसान काम नहीं है। इसे बहुत ही जिम्मेदारी से करना होगा। और इसीलिए ये चार्टर कुछ गाइडलाइंस देता है, कुछ सिद्धांत जो इस पूरे प्रोसेस की नींव है। पहला और सबसे never mind. ये ज्ञान सबके लिए है। चार्टर बिल्कुल साफ कहता है जो भी पढ़ाया जाएगा वो किसी एक धर्म या विचारधारा का प्रचार नहीं करेगा। ये हर तरह के स्टूडेंट्स के लिए होगा और भारत की शानदार डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करेगा। इसका मकसद जोड़ना है, तोड़ना नहीं। दूसरा सिद्धांत है एकेडमिक मजबूती। इसका मतलब ये कि आईकेएस को अंधविश्वास की तरह नहीं बल्कि एक साइंटिफिक और लॉजिकल नजरिए से पढ़ाया जाएगा। जो भी फैक्ट्स होंगे वो ऐतिहासिक रूप से सही होंगे और इसका मकसद होगा स्टूडेंट्स को सवाल पूछने और क्रिएटिव बनने के लिए उकसाना, ना कि आंख बंद करके कुछ भी मान लेने के लिए। और हाँ, यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। आईकेएस कोई नया अलग से सब्जेक्ट नहीं बनाया जाएगा। ऐसा करने से तो बच्चों पर सिर्फ बोझ पड़ेगा, बल्कि इसे मैथ्स, साइंस और आर्ट्स जैसे मौजूदा सब्जेक्ट्स में ही गूंथा जाएगा ताकि स्टूडेंट्स चीजों को गहराई से समझें, सिर्फ रट्टा ना मारें। ठीक है, तो सिद्धांत तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, पर सबसे बड़ा सवाल ये सब कागज से निकलकर असली क्लासरूम तक पहुंचेगा कैसे। जमीन पर इसे लागू कैसे किया जाएगा। चलिए अब इसके कैसे वाले हिस्से पर आते हैं। तो इसके लिए चार्टर एक 4 स्टेप का रोड मैप देता है। पहला, ये एनईपी 2020 जैसी बड़ी नेशनल पॉलिसी के साथ मिलकर चलेगा। दूसरा, और ये बहुत जरूरी है, टीचर्स को सही ट्रेनिंग और रिसोर्स दिए जाएंगे। तीसरा, जैसा हमने अभी बात की, इसे सब्जेक्ट्स में इंटीग्रेट किया जाएगा। और चौथा, स्थानीय कारीगरों और एक्सपर्ट्स को सम्मान के साथ इस प्रोसेस में शामिल किया जाएगा ताकि ज्ञान सिर्फ किताबों तक ना रह जाए। और इस पूरे प्रोसेस को जमीन पर कामयाब बनाने के लिए चार्टर एक बहुत ही प्रैक्टिकल सुझाव देता है। हर स्कूल में एक आईकेएस कोऑर्डिनेटर होगा। ये वो इंसान होगा जो इस बदलाव को लीड करेगा, टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए मेन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा। ये सिर्फ हवा हवाई बातें नहीं है, इसके साथ जवाबदेही भी जोड़ी गई है। चार्टर ये भी बताता है कि प्रोग्रेस को नापा कैसे जाएगा। टीचर्स, स्टूडेंट्स और स्कूल तीनों लेवल पर देखा जाएगा कि बदलाव हो भी रहा है या नहीं। इससे ये पक्का होगा कि योजना सिर्फ कागजों पर न रह जाए बल्कि क्लासरूम में वाकई असर डाले। तो इन सब नियमों, सिद्धांतों और योजनाओं को मिलाकर देखें तो बड़ी तस्वीर क्या बनती है। इन सब के पीछे का असली मकसद, द एंड गेम, क्या है। चलिए सारे डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। आखिर में सारी बात एक ही लक्ष्य पर आकर टिक जाती है। एक ऐसा लर्निंग माहौल बनाना जो अपनी जड़ों से जुड़ा हो, एकेडमिक तौर पर मजबूत हो, सबके लिए हो और आने वाले कल की चुनौतियों के लिए तैयार हो। बस यही इस चार्टर का सपना है। और अंत में हम एक बार फिर श्री अरबिंदो के उन्हीं शब्दों पर लौटते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि ये सिर्फ सिलेबस बदलने की कवायद नहीं है, ये एक तरह से सांस्कृतिक पुनर्जागरण की कोशिश है। हमारे प्राचीन ज्ञान को फिर से पाना और उसे आज की दुनिया के लिए रेलेवेंट बनाना। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या प्राचीन ज्ञान और मॉडर्न एजुकेशन का ये मेल वाकई कल के इनोवेटर्स तैयार कर सकता है। ये इस पूरे चार्टर का सबसे बड़ा वादा भी है और सबसे बड़ी चुनौती भी। जवाब तो खैर वक्त ही देगा, लेकिन इतना जरूर है कि ये चार्टर उस भविष्य की तरफ एक बहुत ही साहसी और जरूरी कदम है।
At the heart of this charter, it's a simple but powerful idea. Education must shape the entire whole human being: body, mind, intellect, emotions, ethics, and consciousness. It urges us to move towards experiential learning, where children discover through observation, reflection, hands on exploration, and lived experience. The Charter invites schools to draw from India's rich scientific, mathematical, artistic, ecological, and philosophical heritage to nurture clarity of thought, curiosity, creativity, and compassion. The Charter calls for interdisciplinary bridges, bringing together art and science, ethics and technology, ecology and innovation to create a truly integrative curriculum. अगर हम इस कॉन्फ्रेंस के विजन की बात करें तो ये कॉन्फ्रेंस एक ग्लोबल शिफ्ट लेकर आएगा जहां पर हमें सिर्फ मार्क्स और मेमोरी तक ना रुककर बच्चों में इंक्वायरी, क्रिएटिविटी, रिफ्लेक्शन और इनर ग्रोथ पर ध्यान देना है. Together, we can envision classrooms that encourage deep questioning and immersive learning, strengthen conceptual clarity through ancient scientific and mathematical ideas, blend ethics and aesthetics with daily teaching, and build global collaborations for IKS based curriculum innovation. अगर मैं शॉर्ट में कहूं तो हमारा पर्पस है उन बच्चों को नर्चर करना जो रिस्पॉन्सिबल हो, एम्पैथेटिक हो, अवेयर हो, capable हो और deeply conscious हो. Now, moving ahead, I would like to welcome our esteemed experts who are here. And now it is my heartfelt pleasure to welcome the distinguished experts joining us today, educators and researchers whose work continues to enrich the field of IKS. I would announce the names of the first panelists, first speakers here. The first is Professor G. Suresh Babu, Professor, Department of EEE CBIT Hyderabad, Professor Shikha Srivastav, HOD Zoology, Indira Gandhi Government PG College, Bhilai, Dr. Siddharth R. Devine, Assistant Professor of History and Researcher in Ancient Indian Medicine, MIT University, Gwalior, Dr. Ram Kalyani Venkatraman, Honorary Research Associate, Kupuswamy Sastry Research Institute, Chennai, Professor Chandragupt Varnekar, Principal, Retired, Cummins College, Pune. We extend a warm and grateful welcome to each of you. Your presence today enriches this platform and brings depth, wisdom, and authenticity to our shared mission. We will now proceed with the session on teaching mathematics and science through IKS, patterns, logic, and indigenous problem solving. So this is for the panelist of speaker 1 that we shall be starting at 10:15. Some of us have joined the panel and some of us are yet to be joining. So the discussion for panel 1 will start at 10:15.
Good morning to all the esteemed dignitaries and fellow participants present here. It's my privilege to welcome you all for the first panel discussion of the conference. We still have a few panelists who will join us in a bit, so we will wait for them. We'll wait for 5 to 10 minutes and let everybody join, and then we can start the panel discussion. Good morning once again to all the esteemed dignitaries and fellow participants. Welcome to the first panel discussion of the conference. The topic for the first panel discussion is teaching science and mathematics through Indian knowledge system. Now, when we talk about Indian knowledge system, the richness, the diversity it provides, it ranges from different topics like architecture, medicines, cosmetics, patterns, geometry. We will explore how we can use that knowledge, how we can integrate that knowledge to enrich how science and mathematics have been taught in schools, in classrooms. To have a discussion on this topic, we have a esteemed panel. Let me introduce them to you once again. Professor G. Suresh Babu from Department of Electrical and Electronics Engineering, CBIT Hyderabad. Professor Shikha Srivastava, Head of Department of Zoology, Indira Gandhi Government PG College, Bhilai. Mr. Siddharth R. Davne, Assistant Professor of History and Researcher in Ancient Indian Medicine, Amity University, Gwalior. Ms. Ram Kalyani Venkataraman, Honorary Research Associate, Kupuswamy Shastri Research Institute, Chennai. Mr. Chandragupta Varnekar, former Principal, Cummins College, Pune. I welcome you. I welcome all of you once again, and I thank you for being with us here today. Let's begin the discussion with the first question. So whenever we talk about the Indian knowledge system and science or mathematics in one sentence, there is a common perception sometimes that they don't go well together. They don't go hand in hand with each other, right? So there is a perception that Indian system knowledge are unscientific or traditional. Despite India producing thinkers like Aryabhat, Sushrut, and Ramanujan. So I would come to Suresh sir. How do you view this? Is this an actual contradiction in your point of view, or do you think it is just a perceived misconception? It's just a perception thing.
Suresh sir? Sri Gurubhyo Namaha. Harihi Om. Indian knowledge systems. First of all, we should understand what is the concept of Indian knowledge systems. Bharatiya Jnana Parampara. It is a confluence of three eyes. We are bestowed with the two eyes by God. Third eye also is there. You should open third eye. So all the three eyes together, IKS. What is three eyes? First eye is inquire. Second eye, inform. Third eye, inspire. That means past, present, future. The person who is going to really give the content to the receiver, he should have these three eyes in mind. That means you should know thoroughly about what our ancestors has done. That is history. Second one, he should inform the current day Gen Z group. And third one, not only that, should blend with the current day AI technologies and say that he should inspire so that they should be able to do some innovation. I call it as air to air simply. What is air to air means? AIR to AIR. Ancient Indian roots. Ancient Indian roots, ROOTS roots to AIR, artificial intelligence roots, ROUTS. That's what I believe. Thank you. I can speak much more, but I want to give a chance for others also, please. Sure, sir. Thank you so much for your insights. Suresh sir, I'll build upon this question a little more. When we were talking about the perception thing, how do you think can we reframe this whole perception thing from shifting it to IKS being labeled as unscientific to IKS being something that can empower science or even make it more meaningful, both science and mathematics? So I said, no, for whatever the question you form, and IKS, I can say answer is three eyes only. The person who is practicing it should have a sound knowledge about what our ancestors has done. First point. Otherwise, he can't stand in front of the Gen Z. It's ruled out. Simply saying IKS is only namesake. So one should have a confidence. Yes, what our ancestors done, they have done, and you should be able to clearly tell to the gathering the difference between Indian culture and other cultures. That means, first of all, we start with the application, then theory, then proof. Whereas Western culture is first proof, then theory development, then application. That is a major difference. That's why people have some negative mind, negative concept on the IKS. So first of all, you should have a thorough knowledge of or what ancestors has done in the particular domain. Next, that you have to comprehend yourself and inform to the present day's class, to the present Gen Z group, in a way that they will be able to understand, they will be able to convince. It is not unscientific. You should be able to how you convince them. In order to convince the Gen Z group, the very prerequisite, once again, I'm telling you, you should have some thorough knowledge of what our ancestors has done. History. You should read the good books, main books. Otherwise, with only chat GPT. So you have to read the Moola Granthas. You should have thorough knowledge, make a notes, then correlate with the current technology, inform in the class. You give a correlation, give examples. For example, you want to teach I give some examples also, mathematics, physics, I was telling, For example, to teach mathematics, symmetry, you take the example of temple architecture, how they follow symmetry. So there you can teach it. Vedic mathematics, it is a competition algorithm. So there is, and especially if you want to music, you can say the Fibonacci series sequence, how ragas will be in the order. And for every domain, you have our ancient Indian roots are there. One thing is you have to be able to identify it, understand, comprehend, then bring to the Gen Z group. We should be able to convince them and inspire them to do further research. That's what I believe. If specifically, if any question is there, general question will, I think whatever I have posed, this is the answer I feel. Thank you. Over to you. Hari Om. Hari Om. Any other question, please? Hari Om. I have done.
Any other question? I'm really sorry. Due to some network connection, I got disconnected. So, building upon what Suresh sir was mentioning about the examples related to science and mathematics that have been there in richness in Indian knowledge system, my next question is to Ram Kalyani ma'am. Ram Kalyani ma'am, teachers are the most significant. They have the most significant role as they are the ones who are implementing this IKS on the ground. But they obviously will also need some sort of guidance or support or resources. Now, what kind of support or resources or guidance do you think teachers need to confidently integrate Indian knowledge system into their maths and science classroom specifically? Ram Kalyani ma'am? Yes. Pranams to everyone. Shri Gurubhyo Namaha. Actually, Indian knowledge system as we have, it is developed right from Shilpa Sutra period, 3000 years ago. So everybody cannot have complete knowledge of whatever is existing in the ancient Indian knowledge. So those who are experts, they have to combine and decide what all topics or whether it is maths or science, what all topics can be given to which class, and they decide and frame a curriculum. Then, depending upon the expertise needed, the school teachers, those who are going to convey it to the students, communicate to the students, the teachers have to be guided because all the teachers cannot be thorough with all the knowledge that is available. So what knowledge they have to impart to the students, in that they have to be very efficient and proficient. And for that, what exactly needed for the teachers, that whatever is framed, for that some guidance and this one is to be given to the teachers through the experts. And before that, in each class, what is going to be taught, that is to be decided, and that should be framed, and guidance and study material, teacher material, everything to be prepared. And for the teachers, then again workshops to be conducted on the particular subject, on the particular topics. Then only the teachers can carry over those ideas to the students. Yes, I think I have answered your question. Thank you Yes. so much, Ram Kalyani ma'am. Definitely, it has to be considered whenever we are talking about integrating IKS. And from the teacher's point of view, the curriculum, the framework, or the resource materials that they are going to use in their classrooms have to be modified as well. Building on the same question, Ram Kalyani ma'am, often we hear this concern from teachers of balancing multiple things at once. So how do you suggest, how can the teachers balance both Indian knowledge system whenever we are talking about integrating them in the science and mathematics classroom? So how can they balance this IKS content as well and their regular classes all together? As far as mathematics is concerned, whatever the ancients were doing, that only we are continuing now. Whether it is addition, subtraction, or arithmetic series, or combinatorics, all those which were existing in the ancient Indian knowledge system, that is continued in the school also now. Whatever, see, even if you take the geometric constructions, whatever constructions they were doing in the Shilpa Sutras, the same are continued in the school also. But in the Shilpa Sutras, they were using, Shilpa means a rope, they were using a peg and a rope and they were doing the constructions. But the same construction is done with a compass and a ruler now. It is just replaced by that, but there is no difficulty in integrating because whatever was there, that only is continued now as far as mathematics is concerned. And there are so many extra things. See, actually, there was a workshop for the teachers in one of the IITs, and there are a lot of workshops, and there is no particular
design of what is going to be conveyed to the students, what exact syllabus is to be framed to the students. But there were so many experts, they were giving lot of their own expertise to the what all they know in maths, astronomy, and everything. But the whole teachers, there were around 200, they were just confused. So much we have to learn and so much we have to study and that we have to convey to this is so much information. But that idea should not come to the teachers. There are so many things and which I have to learn and I have to convey it. What exactly is needed for the student, that only has to be framed and given to the teachers so that they should have the this one idea that it is very simple and we can convey it to the students. In fact, in mathematics, you need not separate this is Indian knowledge system and this is modern system. It is actually can be blended together because suppose you take a geometry, there are constructions in Silva Sutras, perpendicular bisectors, construction of squares, construction of rectangles, transforming one square into another square of that is two squares of equal area, or combining two squares which have equal area to one square with the same area. So many constructions which are very innovative and which can be given as a project or even in a homework for the students. So there are so many varieties, and you can do one or two in the classes, and the other you can give it as project or give us examples, and they will enjoy it. And as for the construction of the fire altars in the different forms, like a tortoise, like a falcon, like a square or hexagon, everything. In the Shilpa Sutras, they are given accurate measurements of what bricks have to be used, what shapes of the bricks to be used, what is their size, everything is given, and how they have to be arranged in the first layer, second layer, everything. But the thing is, the measurements are in the old, this one, angulas, and other things that we have to convert into our modern measurement units, like inches or centimeters. Then if you give it to the students, they will be very, very, very interested to do that. Because I have tried this in some schools in Chennai, in Vivekananda Vidyalaya. I have given the falcon construction is supposed to be the most difficult one. I have given the measurements and in our modern this one. And when they were doing some that is conference exhibition or something, I given them to the measurements, everything, and they constructed the falcon with so much interest, and they have developed interest in architecture. And two students from that group, they have taken BTech architecture itself because so much interesting it is. They said if these construction I put it as a building, it will be a different design and different structure. So the way the teacher gives, that is very important. If they themselves feel it is very difficult, then the students will find it more difficult. The teachers should first find it is very easy and it is easy to integrate with the regular syllabus. And nothing is different. As far as mathematics is concerned, everything that is existing, that is also continued in today also in the modern education, but with a different changes, some different changes, but that can be very nicely integrated with the school syllabus as far as mathematics is concerned in every class, right from first standard to 10th standard. Definitely we can include everything, and there are very, very interesting and appealing examples in old textbooks that if we bring it to the classroom, the students will not feel mathematics as an abstract subject. It is very interesting. For example, what we call as Pythagoras theorem now, it is stated in the Shilpa Sutras itself, at least 200 years earlier than Pythagoras. For the Pythagoras, that theorem, Shilpa theorem, they are giving beautiful examples. That is a peacock pouncing on a snake, and for two monkeys sitting on the tree, one coming right vertically down and like this to a pond, and another monkey jump a little and come through the hypotenuse and reach the same part. And you have to find out the length of the height of the jump that is made by the monkey. That will be very interesting examples. Not only this,
even for fractions, quadratic equations, they involve all the number of bees and birds, swans in the lake, everything. Everything connected to environment or our itihasas or with the things that the students see in front of their eyes. Yeah. And that gives them lot of interest. And the concept or the theorem is also very easily understood by the students. So examples in the mathematics text, very challenging examples are there, very simple examples also there. So if they are integrated into the mathematics curriculum, mathematics can be made very, very interesting in the classrooms. That's very beautifully explained, Ramkalyani ma'am. Not only the integration that you have explained, that it should not be seen as a separate additional task Yes, of yes. integrating, especially with the examples of mathematics that you gave. It doesn't only integrate so smoothly, it also makes the subject more interesting and relatable for the students. So very beautifully explained. Sure. My next question is for Siddharth sir. Siddharth sir, one of the key goals of education, especially when we talk about modern education, is to develop the students' ability to think critically and scientifically, as it is the need of the hour. The question is, how can Indian knowledge system be used to build scientific temper in students so that they learn to observe, question, and experiment and think critically rather than simply memorize facts? Good Siddharth morning. sir? Yeah, good morning. I'm Good Dr. morning. Siddharth from Amity University. Actually, when we discuss about the IKS knowledge, first we have to understand that the IKS, it is a very large section, okay? And in IKS, it is not only we talk about the medicines, science, and other things. IKS, it is also part of the architecture. And the other way we are talking about nowadays, mostly in IKS, the old manuscript, they are like to making the translated and they are want to preserve. So when we discuss about the scientific knowledge, okay, so basically my specialization in ancient Indian medicines, okay. So when we discuss about the medicine's history or at the kind of point of the medicine point of view, so in the scientific knowledge, also in history there is a scientific knowledge. It was very important, okay. So for the growing interest in student, basically we had to do for the scientific knowledge, like we had to give the textual education, okay, mostly focus on the primary sources and the other way, because you know that nowadays what happened in IKS, we just start to glorify our Indian history, but when we start to glorify our ancient Indian history, sometimes we giving the false information, okay. So I think it should be not happen in as as a student or as a faculty of history. I think that whatever the information we given to the things, it should be on the based on the primary and the primary sources. Okay, like nowadays what happened in IKS, you know, at my specialization medicine history. So student, they only know about the Sushruta, but who exactly Sushruta? They don't know about who exactly the Sushruta. They just know about the Sushruta did the plastic surgery and he did the rhinoplasty. Apart from that, student doesn't know what exactly the Sushruta did. So in my point of view, I think when we discuss about the medicine history, so we should be given that kind of education in either is a primary base or maybe in the college base. Like we give the exact education what it is written in our old text, okay, either it is a Veda or maybe it's the Shusha Samhita, Charak Samhita, Vagabhata Samhita, like Ashtanga Hridaya and the other way, and even the Ayurveda. Okay, so we had to give the what exactly the text is given, so maybe that kind we are interpreted the original history. And I think from primary basis, if we give the exact education, okay, because you know that in college level also student they don't know what exactly the contribution of Charakam, okay, even what exactly the contribution of the Shushruta. So I think in our primary schools or maybe in the secondary school, if we give the exact education, who is the Charika, who was the Charika, who was the Sushruta, even Charaka, Sushruta, this is the only two name we know, but we don't know Jivaka, we don't know Ashwini Kumar, we don't know Dhanvantari, we don't know other people. Like there is a Palyakalpa, there is a Shalihotra, even there is an Nagarjuna. Okay, so we don't know about that. So when we give the education, I think for the scientific knowledge, I think we should be focused on the mostly on primary sources and after primary sources. And I think someone asked the question, like one of the panelists. I think we should be start our IKS education in textbook from the primary level. Okay, in primary level we should be given the education to them what exactly Indian science, ancient science, what exactly the Indian architecture, ancient architecture,
engineering, and the other way, like the mathematics is there. Okay, so we should be start to focus on our education from the primary basis student, and after that, obviously, when we went to the higher education, so students should be get the knowledge in proper way. Okay? Thank you so much, Siddharth sir. That is a very significant part of IKS that you have highlighted. The awareness about the history and the contribution of different individuals that you have mentioned. I'll build on the same question that you have discussed, that you have mentioned, that in the primary grades, all this IKS information should be introduced to the students, so they are aware before even going to the higher grades. They already have the knowledge of the history and the contribution that we have made. How we Sure. can use that knowledge, how we can use that history to build that scientific temper, so that the students have that critical thinking skills as well when they go to the higher grades, rather than simply have the knowledge of the individuals or their contributions. I think from the primary basis, if primary level, if we started given the original primary sources, okay, like whatever the physical sources are there, and if you give the students the idea that is the space and that is the verse, and what exactly the meaning of that source, okay, so it should be become the scientific knowledge, okay, and when we start the critical things, obviously there are the different approaches are there in history, and different people they are different interpreted in different approach verses, okay, so it is based on the ideas how we analytic these verses and how the student they get the idea. Okay, so I think in primary basis we should be start like that, and obviously in our curriculum or our syllabus we should be introduce this kind of subject. Like maybe there is a history of science, there is architecture, history of architecture, engineering, and every type. Like there is a mathematics, we have also the good history. Okay, even the architecture, history, medicine history, and even the other sciences are there. So I think in primary education or in primary curriculum, we should be introduced that kind of syllabus. Like in university level, there is a in every university. I think nowadays, in as per the NEP 2020, we introduce one particular subject. It is based on the IKS. So I think this kind of initiative we should be taken from the early phase, and we should be give the proper knowledge to our students and exact knowledge what exactly we have in ancient history. So definitely when we start from the primary level from the students, definitely student will be aware about that what exactly our ancient glory is there and how our ancient glory is rich. Sometimes we are always compared to European history to the Indian history. But you know that we Indian student and Indian people they don't know about how the Indian history is a very rich compared to the European history. So if we started to given this kind of knowledge from the primary level, like from the school levels, definitely student will be get the idea about that how our knowledge is rich. Very true, sir. Very nicely explained. Now I'll ask the question to Shikha ma'am. Shikha ma'am, we have been talking about the impact of the probable or the possible impact that IKS can make in the science and mathematics classroom. So I'll build on the same thought. When it comes to adding value or making a difference, being a differentiator, if the schools integrate Indian knowledge system more regularly, how do you think it will change the way children learn math or science? I'm talking about the process of learning. How do you see the process of learning when it comes to mathematics and science changing if IKS is being integrated into the maths and science classrooms regularly? Shikha ma'am? A very good morning to everybody. My earlier speaker has said the most important things that it should be integrated. What I think is when you know a subject, the background of the subject, then you can understand it very nicely. So I'll be talking about zoology. Today, we study classification by lineage. And before that, we are introduced to the history of classification by Darwin and Aristotle, which as a zoologist, I found very absurd. But if you are teaching classification, animal classification, we should go to Rig. There we that those who fly, they are viable. And there are so many different classifications. So when you teach some subject, its history should be given first. Then you should proceed to the detailed subject. Then I think students should understand. They will understand it more appropriately. That's what I think. And this should be included in every subject. Thank you so much, Shikha ma'am. Just building on the same question,
would you like to share some examples that you have witnessed of how the children's behave or how the children's feel? What difference is there? Do they enjoy it more? Do they relate to it more when Indian knowledge system is integrated into maths and science classroom? What difference that you have observed, or what difference that you expect if this approach is taken in future? Yes, sir. I have introduced something in my class also, because when we were trained, we were told about many subjects, and I introduced about some biodiversity study. Like Acharya Somdev, he was a Jain Muni. He had written a very good book about biodiversity of India, that is Mrig Pakshi Shastra. And when I introduced that to my students, they were really astonished that how can you document such things? Similarly, in Mughal Empire, Jahangir has written a detail of his kills. Whenever he went to jungle and killed animals, he wrote a very detailed kills, and that gives a very good picture of biodiversity. So when we introduce these things to children, they are very much interested, and that's why I feel that a history of any subject should be given to students. Very nicely explained, ma'am. Thank you so much. I'll bring Chandragupta sir into the conversation here. Chandragupta sir, my question to you is, obviously to bring any meaningful change, it will not always be a smooth sail. There will always be some challenges. So based on your experience in this field, what do you see as the probable or the main challenges that one has to face in integrating meaningfully IKS into the mathematics and science classroom specifically? What challenges do you think as the probable challenges in doing this task? Chandragupta sir? Okay, I'll pass the same question. Yeah, Chandragupta sir, please. So may I repeat the question? Chandragupta sir, you are on mute. Can you please unmute yourself? महायोगी अरविंदम मातरम च नत्वा अत्र प्रत्यक्ष आभासी माध्यमेन समुपस्थितानां सर्वेभ्यः स्वागतं व्याहरामि। यतोहि मे विषयः न्यूमरिकल संस्कृत अल्गोरिदम इत्यस्मिन् विषये वर्तते, अतः प्रास्ताविकं किञ्चित् अनेनैव भाषामाध्यमेन कृत्वा अनन्तरं यत् चर्चा प्रवर्तते तद् आङ्ग्लमाध्यमेन अथवा हिन्दीमाध्यमेन हिन्दीभाषामाध्यमेन कर्तुम् अहम् उत्साहे। सम्प्रति विज्ञानयुगं वर्तते इति कथ्यते, अतः एतस्मिन् विज्ञानयुगे सङ्गणकस्य महत्त्वं सर्वे जानन्ति एव। पुरा विज्ञानोपकरणानां विषये यदा चर्चा सञ्जाता तदा भाषाविषये चर्चा न कदापि सञ्जाता। विद्युद्दीपस्य भाषा नास्ति अथवा व्यजनस्य भाषा नास्ति, परन्तु सङ्गणकविज्ञाने प्रथमतः एव वैज्ञानिकैः कंप्यूटर लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, टेक्स्ट प्रोसेसिंग, स्पीच प्रोसेसिंग, फोनेटिक इनपुट, मशीन ट्रांसलेशन इति एतादृशानां भाषाविज्ञानविषयाणां चर्चा प्रारब्धा। यत्र कुत्रापि तादृशं भाषाविषयकं शास्त्रीयं वैज्ञानिकं चिन्तनं वर्तते, तत्र अस्माकं भारतीयानां विज्ञानतन्त्रतः शुद्धायाः संस्कृतभाषायाः चिन्तनम् अनिवार्यम् इति कृत्वा पुनश्च सङ्गणकविज्ञाने अल्गोरिदम् इत्यस्मिन् विषये अपि चर्चा बहु चर्चा प्रवर्तते। तस्मिन् विषये वक्तुं कामोऽस्मि। प्रश्नः वर्तते एतस्य Chandragupta sir, sorry interrupt कर रहा हूँ इसका मैं। हाँ, how to implement this particular numerical संस्कृत सर algorithm क्योंकि question. most of us हाँ हम Your हिंदी ज्यादा question जानते हैं, was, तो अगर आप हाँ जी is that अगर हिंदी में question आप आंसर करेंगे तो ज्यादा लोग समझ पाएंगे सर, प्लीज। is the question clear that how to Yeah. implement the numerical Sanskrit algorithms into the school courses? In fact, my experience more is with university and college education, but I have also gone to a number of schools with this and with the PPTs of this particular numerical Sanskrit algorithms, and they're extremely well received. That is my experience. They are very well received. So I think the first step to implement this, which I had given when there was a DESM NCERT seminar
about the seamless integration of IKS with modern school subjects. It was held on 11th to 15th March in 2024, last year. Last year, during this seminar, I had given written suggestions that these algorithms are available. I have given all the sources. And what I have suggested is that whenever the school books are already ready, CBSE books are ready for 2-3 years, they are ready, lakhs of books are ready. So you cannot reprint them. You cannot incorporate IKS into that. But if you have the soft copy of the book, and wherever there is a mention, suppose there is a mention about algebraic equation, then we have an equivalent Sanskrit algorithm about samikaranam. Saralam cheka varnam va ghana vargatmake tatha aneka varnam yugapat samikarana jatayah. They should be taught this as a hyperlink. This should be hyperlinked with the text. The text is available in the software form, if the text is mostly available, and it should be told to them about the Indian IKS, Indian knowledge system link by hyperlinking with this. If it is Pythagoras theorem, then the Shulba Sutra, corresponding Shulba Sutra should be given in the linked form. So anybody who is interested, teacher, student, parents, whoever are interested, they go into details. They know about the Sanskrit Sutra, that should be known, and that should be learned by heart. That is unless that is done, nothing can proceed. So you have to go deeper into this about the Sanskrit algorithms. They are available in all the topics. I had given this in my, I don't know whether the talk has been already projected or not, but in the talk, in the video recording which we were asked to do, I didn't see here. Why it was not produced, I don't know. It should have been produced before, because I have to repeat those things. The moderator should note this, that it should be given, because whatever point I want to make has already been given there. So if that is being done, I didn't know that it has been done. It was supposed to open at 10:15. And I don't know whether that video clip which I have sent has been projected here. If that is not been done, I will stop here and I will ask you to repeat that video clip, so that I can talk with respect to that and with respect to your questions. You have asked the questions. I have experience with central school, with Hada school, with modern school, with many schools here. And that experience has worked very well. So I think you had asked for the video clip. Why have you kept it with yourself? Why have you not displayed it here? Please display it. Then I will start my talk. Thank you. Sorry for being angry, but I'm just very particular about this. Why you have asked for that clip? You said that the clip will be displayed before the talk. Where is the moderator? Please. Thank you so much, Chandragupta sir. Sir, just due to the time constraint issues, we are having a panel discussion here. So we are not taking presentation of videos because of the time constraint issue, sir. How they will understand what I want to talk? I want to talk about numerical Sanskrit algorithm. That subject was not displayed. I want to talk about my experience with that in different schools. That has not been displayed. So they are not aware of what has to be done and what questions to be asked. What is the panel discussion about? Is this the Aurobindo Society's discipline? Are you disciplined like that? You told one thing and you are doing another thing. What is this? This should not be done like this. I have given my suggestions in the video clip form. All this should be given. We completely understand, sir, and deepest apologies for that. But as I said again, it's just the time constraint that is a challenge, and to give everyone a chance to omit me from this panel. Omit me from the panel. I will get out of the panel. Thank you. Sir, actually, your experience is very valuable. So don't just leave the panel. It will be very beneficial for us if you can, share your experience and your pointers. You are giving 3 minutes for Sanskrit, numerical Sanskrit algorithms, which is a 12-year subject for a student. And you want me to say in 3 minutes without showing my whatever I have given already to you. This is not fair, unfair. It is not education.
It is only just a show, a video show for which you will be paid. So I think you should be particular about this one. I have given some points about that one, and I want to talk about that, and I will discuss based on that one whatever questions the members, honorable members here ask. If they ask some question based on that, then only I can give whatever questions you get out of your mind. That is not the way. That is not the way. So Sir, this is will not definitely. this is not mother discipline or Aurobindo discipline. This is a discipline of your own. So please follow your discipline. You had given us a written letter in which you said that this video will be displayed and the discussion will take place around that one. So if you are interested or you give me more time, I'm ready to share. I had already come to, in fact, the Delhi. I told you about in the year when the I think in the institution Aurobindo Society there was a seminar, and some time back I had come there 9 years back, and I had told about children's education for the topic of that was Bala Sanskrit Sahitya Vaidyanik Ayam. Vaidyanik Sanskrit Sahitya should be taught to the students. That was my point, which I had given 9 years back. It was held on the date, I'll tell you, September 2016. And it was in the Yogi Aurobindo Ashram there in Delhi only. In Delhi. That time I had given about this, and I think the talk is still available. There was some, I think one lady there who had recorded that one. So my point is that if it is discussion like this, 3 minutes talking everybody is not going to help. It's not going to be any. So you have to, if you are allotted time, or if you are made a panelist, or if you are already decided the panel, then it is different. But the point is that all the 84 here who are there, I see here, all the 84, if they are talking, then it's not going to take whole, it will not even be finished in whole day. So I think be specific about that one. It should be, and it's not focused. It is just going around randomly. We want to implement this from the next July session. That should be your aim. Thank you. Sure, sir. That is very much understandable, and we will definitely show the video that we've been talking about in next 4 to 5 minutes, sir. Since then, till then, we can have a few more questions. We will definitely show the video, sir. I'll bring Suresh sir into the same conversation. Suresh sir, Chandragupta sir also touched upon this question a little bit. We were talking about the challenges, the probable challenges that one might face different on different levels, on school level, teacher level, on curriculum designer level, or policy makers level. What could be those probable challenge? And if you can suggest some ways, some approaches, some solutions to how to encounter those challenges. Suresh sir? The question is, what are the challenges in implementing IKS in the classrooms? Am I correct? Yes, sir. Very good question. This must be addressed by giving correlation to the Gen Z group. I'll give you example. For example, directly if you multiplication, the people will think that it is a conventional mathematics. Ekadikena Puvena. This particular sutra, which is given by Swami Bharati Tirtha Vedic mathematics, so it is especially useful for, in many cases, particular finding square of a number in 5. 35 square you want, 5 square 25, and Eka Adhikena. So Pura Sankhya is 3, 3 into 1 plus 1 4, so 3 4s are 12. 1225 is the answer for 35 square. And another example I can give, if you want to find square of a number which is near to the base, Yavadunam Tavaduni Kurtya Vargancha Yodayet. So we should be able to explain them. That's very important. Because directly if you introduce IKS, they will not be able to study. But you should give a correlation, because the total mathematics is a pattern. Children will learn a pattern, correlate how they are together. So not only children, what, but
when you take from ancient thing, you should correlate how this is related to one and how it is easier than conventional one. If you are able to convince them, then automatically they will enjoy the IKS of basic mathematics or mathematics into the IKS current education. And I will give another example: columns and rangolis. So they are recursive fractals. And coming to Sulva Sutras, that is total symmetry and geometry diagonal rules. And if you come to Jantar Mantar in New Delhi, it's there. No, it is astronomy through architecture. Like that, you should be able to correlate what they are exactly seeing it. Last but not least, I was giving another example. If you people will fear to find square of a number which is near to base 97, 98, 99 square. So for them, you have to tell them Yavadunam, Tavaduni Kurte, Vargancha Yosiyet. So for example, I want 97 square. Very simple, dear student. Yeah, how much is less by 100? 97 square I want. How 97 is how much is less by 100? 3. Subtract 3 from 97. So 94. And 3 square, 9. So 9409 is the answer. Like that, if you say, then you will be able to find out for other numbers also. Finally, what I mean to say is pattern. Pattern is most important. Should be able to correlate with the ancient knowledge with the current conventional studies, and then automatically people will whatever problems faced by them will be given lead to a good avenue for a solution. That's what I believe. There are many examples I can give, but at the same time constraint. Over to you. Thank you. Thank you so much, Suresh sir. That is very interesting as well as very useful approach that you have talked about in integrating the shlokas from IKS to the mathematics, specifically the examples that you gave. Now, let us go through the videos. The Chandragupta sir, the video that he's been talking about, in which we have talked about, he has talked about different challenges or how to encounter that and what approaches can be taken in order to integrate IKS with the mathematics and science classroom. Let's see the video. शालायां पाठ्यक्रमे भारतीयानां ज्ञान विज्ञान प्रणालीम् अधिकृत्य श्री अरबिन्दो सोसायटी इत्यनया संस्थया समायोजिते एतस्मिन् सम्मेलने सर्वेभ्यः स्वागतं व्याहरामि। अत्र प्रायः मम विषयः भवति न्यूमरिकल संस्कृत अल्गोरिथम्स इति। यतोहि विषयोऽयं संस्कृत भाषा संबंधी वर्तते, अतः प्रास्ताविकं किंचित् अनेनैव भाषा माध्यमेन विधाय अनन्तरं भाष्यरूपेण आंग्ल भाषायां विचारान् अत्र प्रस्तौमि। सम्प्रति विज्ञानयुगं वर्तते इति कथ्यते। यतोहि विज्ञानतन्त्रैः विकसितानां विविधानां यन्त्रोपकरण साधनानां प्रयोगः अस्माकं जीवने पदे पदे भवति। विद्युद्दीपः, व्यजनानि, यानानि इति एतादृशानां यन्त्रोपकरण साधनानां सर्वत्र प्रयोगः वर्तते। तादृशानाम् उपकरणानां निर्माणं प्रायः 350 वर्षपूर्वात् प्राधान्येन पाश्चात्येषु देशेषु प्रारब्धम्। अद्य एव देश-विदेशेषु निर्माणं प्रचलति एव। अतः बालः आबाल्यात् एतादृशानाम् उपकरणानां विषये जिज्ञासु वर्तते। तादृशानाम् उपकरणानां मालिकायां विलसति एकम् अभिनवं वैशिष्ट्यपूर्णम् उपकरणं नाम संगणकयन्त्रम्। पुरा विज्ञानोपकरणानां विषये यदा चर्चा सञ्जाता, भाषा विषये चर्चा न कदाचित् सञ्जाता। विद्युद्दीपस्य का नाम भाषा अथवा व्यजनस्य भाषा न भवति, परन्तु संगणकविज्ञाने प्रथमतः एव संगणकवैज्ञानिकैः कंप्यूटर लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज
natural language processing, text processing, speech processing, phonetic input, machine translation एतादृशानां भाषाविज्ञानविषयाणां भाषाशास्त्रीयविषयाणां चर्चा प्रारब्धा। यत्र कुत्रापि तादृशं चिन्तनं प्रवर्तते, भाषाविषयकं चिन्तनं वा विशेषतः प्रवर्तते, तत्र अस्माकं भारतीयानां विज्ञानतन्त्रतः शुद्धायाः पाणिनी व्याकरण शुद्धायाः संस्कृतभाषायाः चिन्तनम् अनिवार्यम् इति कृत्वा सङ्गणकविज्ञाने प्रथमतः एव संस्कृतभाषायाः विचारः प्राधान्येन वैज्ञानिकैः प्रारब्धः। Earlier, the instrument was thought to be working as a digital equipment, and it needed a software support. The equipment that we are talking about is a digital computer. It has got what we see is a digital physical appearance of a digital computer, but this instrument works on an internal mechanism which is software based. So it is the software that needs the support of some kind of algorithms. Now the word algorithm is so common today that we need not probably define it. But when I heard this word for the first time in 1968, while I was doing my MTech at IIT Kanpur, the honorable professor gave us an assignment to write an algorithm to solve quadratic equation. Now the word algorithm just stuck because I had actually 368 was too early for the computer age in India. As we all know, digital computer arrived in India for the first time in 1962 at Indian Statistical Institute, Calcutta, and in 1965 at IIT Kanpur. In fact, it was new to us, and the word was new to us. So what I just wrote down the algorithm. I did not spell it also. I just wrote in my mother tongue. And after the assignment was given on one Friday, I thought it has to be submitted on Monday. So what is an algorithm? That first struck to me. And I went to the library as usual and looked for the word algorithm. The Oxford Dictionary, a algebra word was there, but algorithm word was not there. Now my confusion still increased because I have to write an assignment and we are not supposed to consult each other. Though we used to do it, but we are not supposed to consult each other. And so I just here and there heard. I thought the quadratic equation. My father used to be a professor of Sanskrit in Nagpur University. He was heading, and he had taught us some basic, the Leelavati, Bhaskaracharya, Aryabhatta. He had just taught us some methods. So I thought it is a Varga Samikaranam. And Varga Samikaranam, well, some senior fellows told that you have to write some methods. So I thought there was some method of solving a Varga Samikaranam, which is in Sanskrit known as Madhyama Haranam. It is literally translated in the present English translation. Madhyama, the middle term. Aharanam, dividing the middle term. That is splitting the middle term. Splitting the middle term is the method. The method was approximately available to me, and I just tried to make it computable, etc. And somehow submitted the assignment. Now the assignments used to carry good marks at that time, and it used to be very useful. But I thought this is my first assignment. I don't know how it is going to go. To my surprise, when I submitted on Monday, on Thursday, it worked. I got fairly good marks out of that one. So I thought, what is this? This must be some connection. And right there, actually, it was my first encounter with a numerical Sanskrit algorithm, I would say. The connection, because what I wrote, Madhyama Haranam, as a procedure, is something which was 900 years ago written in Sanskrit. But it was useful even today, even in IIT. So my curiosity increased. I started more on that one. But the next assignment which came, that was surprising. The next assignment was to write an algorithm for sum of first n natural numbers. So there I remember. Ekadinam navantanam sak sankalitani me tesham sankalitaikhyani prachaksha ganaka drutam
तेषामिव च वर्गैक्यं धनैक्यं च वदद्रुतं कृति संकलन marg. That is called as power series, some Margain algorithm. So I just realized that there are some kind of connection between some Sanskrit algorithms which are available. Where from this word algorithm has come, that was still a puzzle to me. And that was solved by one of my senior PhD, who was doing PhD, Mr. Rao. He told me that one visiting professor has come to our IIT Kanpur and he has written a book. He has got some copies and he has submitted it in the library. So you go and look at it. Don't look, the book is maybe complicated for you, but you just look at the preface. The book was Theoretical Computer Science, Prentice Hall print publication, and writer was Professor E.V. Krishnamurti. Actually, he was Indian, but he had migrated. He was working actually in Israel, and he had come as a visiting professor to IIT Kanpur. The book gave me the first clue, but now it is very easily available. Algorithm word is formed from the name of a person, Al-Khwarizmi. 800 or 800 AD, he was there in near Baghdad, and he and his friends, they used to face a problem. The only number system which they were exposed to was probably mainly was the Roman number system, and they used to face a problem that if he was trading horses. So if I have 19 horses and if I purchase 7 more horses, how many will be there? Well, it's a very childish question for us, for any Indian. But they could not do it because you try to write 19 in Roman number and you write 7 in Roman number and try to add. There is no procedure. So one of his friends told that we have a Baghdad University here. It is old at that time. Some Indian has come and he has taught a good method which works very well. So Al-Khwarizmi's curiosity increased. He went there and he found the positional number system of India. Ekam dve trini chatvari panchashat saptachashtacha navashunnyam dashankasyu sankhya lekhan hetave, given by our Vedas to the world, the 10 numbers, 10 digits to create any number. Tasmat sanyujyatanankan sthanamaanusarataha vamato gatirankanam jnatva sankhya cha likhyate. The position, the 10 power increase from right to left, and the sthanman also was given the Aryabhat. Ekam cha dasha cha shatam cha sahasram vayutani yute tatha prayutam kotyar budam cha vrundam sthanat sthanam dasha gunam syat. So ankanam vamato gati and sthanat sthanam dasha gunam syat. If these two principles are taught to our students, they will know the basis of the cyber world today. So it must be taught in the school, the numerical Sanskrit algorithm, beginning from our place value decimal number system. That is my point here. And the algorithms are many. They just go sanyoga shantaram bhago guno vargo ghanas tatha vemule cheti samanyam ashtangam gaditam. Samanyam. Only simple arithmetical, even that has got algorithm. That is also algorithm, because algorithmic methods, step by step, logical and mathematical procedure expressed in common natural language to solve a class of problems. That is the definition. I used to ask my students, you learn this by heart. Unless you know this definition, don't enter my class. That was my dictate at that time. So I realized that there is a connection, and I went for research for this. I studied about this on my own, with my father's help, with some Sanskrit scholars' help also. And at ISC Bangalore, I decided that I will take a problem related to this for a PhD. Of course, it was not directly related. It was about pattern recognition. And in pattern recognition, I told my guide that pattern recognition concepts are available in ZIIEI. Well, I'm sorry about being little angry with the panel. No problem, sir. As a senior person, I have a right to make you disciplined. That's my point. Okay, it should be disciplined. We are all interested, and the interesting group has grown, and therefore you have cut short the video. That I can understand that, but I wanted to talk around that one. So therefore, my talk would be. So now I would request you to ask the question about numerical Sanskrit algorithms, and if you are ready to, if you are ready to teach from July onwards.
If you are ready to teach from July onwards, I'll be glad, because we have already tried in some schools and it has worked very well. It is impressive. So you can call them as numerical Sanskrit algorithms or Nana Sanskrit Mala, as we call Bala Sanskrit Vijnanam or Nana Sanskrit, Nana Vijnan Mala, whatever it may be. So you can ask questions about this, about how to implement in school. So, sir, I'll ask the question that I was asking before. Now, obviously, very deep and valuable insights that you have shared in the video, very apt and accurate examples that you have taken. But when it comes to implementing this on every level, on teachers level or schools level or curriculum designers level or policy makers level, कौन कौन से ऐसे challenges हैं सर जो हम face कर सकते हैं उन अलग अलग levels पर, और उन challenges से हम कैसे उनको encounter कर पाएंगे? If you can share your views. First point is to have a teachers training workshop, 7-day workshop in coming March, so that you can implement in July. The teachers should be trained. Teachers should know about the algorithms which are existing, and teachers should learn them by heart. And also the second point which I have already given is that whatever the books are already ready. CBSE books are ready. CBSE had asked me. So I said, your books are ready. You have already printed for 2-3 years and you are not going to reprint them. So whatever is the soft copy of the book, which is also available to the students now, commonly available, most of the students, they use on the, so in that soft copy, you can make a hyperlink that if there is a mention about, say, pi, value of pi, then चतुरधिकम शतमष्टगुणम द्वाषष्टिस् तथा सहस्राणाम अयुतद्वय विष्कंभ स्यासन्नो वृत्त परिणामः इति पाई की वैल्यू आर्यभट्ट ने 475 एडी में दी थी, इतना हाइपरलिंक कर देना. दैट्स ऑल. जब पाई आता है, जब उनके पास इक्वेशन आते हैं तो सरलम चेक वर्णम वा घन वर्गात्मक तथा व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इक्वेशंस, हाउ इज दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व्ड, दैट इज मध्यम हरणम व्हिच आई हैड ऑलरेडी टोल्ड. These can be hyperlinked. So all this information is with the modern education which is already going on. We are not going to disturb that. We are going to keep it as it is. Only thing is, whenever there is a mention about Pythagoras theorem, he will go to the Bodhayana Shulva Sutra by hyperlink. And if he is interested, he will go into the Sanskrit details, the details about this thing, then how the words are, it can be decoded, etc. All he can go. So this is the way, and I request, I think most of the panel people are the teachers. If you are interested, we will all get together either in Delhi or anywhere, whichever place. And I am ready to take about 7-day workshop for the nearly 100 Sanskrit algorithms which are useful for school people, even school. Though I have been teaching in the colleges mostly, and I have some higher levels also. Chitescha Sankramanachaiva, Sankhya Vivasya Bhumite, Samikarana Ritinam Ganitam Vidyate Bruhat. Like that, there are algorithms. Ritischa Paddhati Pati Prakriya Ganitam Vidhi, Margo Vidhanam Sopanaha, Sarani Sutra Vivacha are all the words, Sanskrit words. Parikarma. Parikarma has become procedure. अपने बताया था. तो ये सब एक इकट्ठा कर सकते हैं. ये मेरा एक सजेशन है. इसके बाद में और कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क. दिस इज द वे ऑफ इम्प्लीमेंटिंग. देयर इज नो अदर वे ऑफ इम्प्लीमेंटिंग दैट. Very insightful suggestion, sir. Thank you so much. Without disturbing anything, we can blend the IKS through to the modern education of classroom education or books of science and mathematics. So that is a very valuable suggestion. Thank you so much. Now we can invite questions from the audience. If anyone from audience wants to ask question, please unmute yourself and ask the question. Good morning, everyone. I'm Paras Sani. And my question is to Suresh sir and Rama Kalyani ma'am. The examples that Suresh sir and Rama Kalyani ma'am has mentioned are majorly based on column symmetry and patterns. But there are many other mathematical concepts in the NCERT curriculum that are abstract in nature, that students often do not encounter in their immediate surroundings, and meaningful understanding usually develops only when they revisit their ideas in higher classes. In this context, my question is, how can teachers use elements of IKS to bridge this gap and make such abstract topics more relatable, concrete, and connected to students' real life experiences? Suresh sir, Ram Kalyani ma'am, anyone?
Yes, sir. Question is very pertinent question. In this context of the syllabus, conventional syllabus, how can we convince the student with the IKS subject matter? Is it, am I correct? Sir, let me repeat the question. Let me repeat the question. Arvo? So I was Because- saying, no. Actually, my question is that there are some abstract topics that students do not encounter in their real lives. In this context, how can teachers use elements of IKS to bridge this gap and make such abstract topics more relevant and concrete for the students' real life experience? Yes. Oh, good. Madam will talk. Okay. Yes, ma'am, please. Yeah, your question is very relevant because maths, as such, we say it is an abstract subject. But if you go through the ancient textbooks like Leelavati or Ganitha Sarasangaraha or Patiganitam, you need not bring the same Sanskrit verses or Sanskrit rules, everything to them because that will become too heavy for them. But what is said in that, that is the way the rules are given and the way the examples are given, that will make the children understand the abstract subject very easily. As example, see fractions, rational numbers for the young students, but the fifth, sixth students, it will be very difficult for them when they are introduced with the fractions and rational numbers. So for that, some rules are given like that. How you add two fractions, how you so that is combination of fractions. Even see, Patiganitam is a text of 750 CE. In that itself, you can see a fraction as an expression which is running two lines because they are given 6 varieties of fractions and how it is given with examples. See, some bees, there are total of so many bees are there, and from that 1/3 went to Kadamba tree, and to 1/3 of 2/3 of 5/5 of that is 5/6 of that went to some other tree like that. And while teaching the environment, how it goes to different trees, so varieties of trees present in those days, and varieties of bees and varieties of birds, everything come into that. And along with that, they learn the fractions, which does not give the idea of abstractness to them. So it comes easily to them. I have tried in the various schools because I go for lectures to various schools, everything. Even those, I've asked them which is very difficult for you. In that, if I give some examples of this kind, they understand very easily. The examples of the ancient textbooks are very crucial in making the abstract subjects understand easily. That's what I say. You can blend the examples. See, you need not change the syllabus at all. You need not have to say this is Indian knowledge system. This is from ancient India. You need not tell at all. The same chapters which you have for first standard or sixth standard, eighth standard, the same topics, chapters with the same title you can have. And along with it, you can, without knowing that you are bringing in Indian knowledge system, unless you give the Sanskrit quotation, they do not know that is taken from the ancient textbook. If anybody wants, you can give the reference. It is from Patiganitam, 4th chapter, 31st example. You can give in bracket. If they want it, they can go and verify. And without giving the actual Sanskrit verse, you can bring in all the facts that were existing in the ancient textbooks to them. And without knowing that it is from Sanskrit textbooks, you can give it to them. And the examples and the methods and different varieties, everything can be brought into this one. See, for example, in geometry, if you take Shulba Sutras, there are first start with the construction. They say east-west line or north-south line, nothing but perpendicular bisectors. So perpendicular bisectors, that can be given to 6th standard. And then they come to construction of squares. The squares construction will be given in different ways. They say using bamboo,
using from constructing the varieties of circles and arcs, they bring in squares. So these are all interesting to the students. Just to draw the perpendicular bisector, this one, just not just giving the prescriptions, but give the methodologies from the ancient textbooks. It will be very interesting. Maths can be made very interesting with the examples from the textbooks. That I am very sure about it. At least up to 10th so much, standard. ma'am, for thank you so much, ma'am, Shall for I the add? answer. Shall I add one more thing to Madam's statement? Yes, please, sir. Actually, Rama Kalyani Madam beautifully explained how can we bring the essence of IKS in mathematics to a student without Sanskrit background. I'll give an example only, then it complements. For example, all of we know in school education, quadratic equation, x square plus 8x plus 15 is equal to 0. We teach them how to find out roots. Differentiation will come in the school, college level, intermediate level, if I'm correct. But if you want to find out differentiation, first derivative of quadratic equation, x square plus 8x plus 15 equals 0. Very simple. Without knowing differentiation also, you can find out. How? Just ask them to find out the factors. X square plus 8x plus 15 is equal to 0. If you find the factors, x plus 3 into x plus 5 is equal to 0. You get factors. Just add two factors, it becomes first derivative of the given quadratic equation. X plus 3 plus x plus 5, that is 2x plus 8. There is nothing but x square plus 8x plus 15 is equal to 0 if it is y, divided by dx. First derivative, you got it. So it is already given in the ancient books. Example I have given without introducing the very big abstract word like a derivative, differentiation. In the school level itself, you can teach differentiation for them without knowing that it is differentiation. Instead of just keeping x plus 3 plus x plus 5 equals 0, you ask them to add those two factors, x plus 3 plus x plus 5, then it becomes 2x plus 8. So 2x plus 8 is nothing but first derivative of the quadratic equation given x square plus 8x plus 15 equals 0. This is one example I have given to just complement Madam's statement. धन्यवाद. टीचर्स ट्रेनिंग घ्यायला पाहिजे. Thank you so much, Suresh sir and Ram Kalyani ma'am. Any other question from the audience? Anybody else would like to ask a question? One more question. I think Rama Kalyani madam has explained very well. Okay. He has given a very good reason that there should be some kind of a link, with the Indian knowledge and the existing whatever modern course they are taking, whatever modern mathematics course they are taking. So only I suggested that it should be a hyperlink. That's the only point, because soft copies are available of most of the textbooks. That's all. Thank you. Thank you so much, sir. Yes, Paras, do you have any question? Any other question? Yes, I have one more question. And like Siddharth sir has mentioned and highlighted the importance of teaching ancient history and the contributions of our cultural heritage in the modern era. In this line, I would like to ask a question, like considering that NEP 2020 promotes a practical, experience-based approach to teaching mathematics and science, how can teachers integrate IKS in ways that move beyond theoretical references and become a meaningful, active part of students' learning? We should introduce the subject, okay, like whatever the syllabus are there. I just told you in my speech also that when like in every colleges they are nowadays introduced the like in NEP they are introduced this subject, okay. So in that subject there is a different part of the IKS, okay. So as per the things, I think we should be introduced a different conceptual things about the ancient Indian science, either it is a science, medical science, architecture, engineering, mathematics, okay. So we should be introduced that kind of curriculum in our syllabus nowadays. In I think every like not only in mainstream, like there is a arts and the other subject, but in other different subject also, like there is engineering and other also, they are also introduced the IKS subject. So I think we should be given that kind of focus on that subject, and definitely we when we introduce this kind of subject in maybe either in the school level or it is in college level, definitely ये enrichment हो जाएगा.
Thank you so much, Thank Siddharth you sir. so much, sir. Yes. So with this, we come to the end of panel 1 discussion. We can conclude from all the deep insights that our panelists have shared that the Indian knowledge systems are not just old knowledge, they offer lot more. They offer ways to make. Suresh, One sir, second, you want to say one something? second. Just I want to Sure. conclude this very lively session with Anushtup Sloka. शिक्षा क्षेत्रे नवनवोन्मेषे रूपान्तरं प्रवर्तते अरविन्द समाजस्य दिव्य लक्ष्यं विराजते अस्तु साधु 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 So धन्यवाद as I was saying, thank you so much, sir. Very beautifully said the shloka. As I was saying that the Indian knowledge system offers a lot more. It offers relatability. It offers making science and mathematics more interesting and meaningful. And as all of you have said in your insights that you have shared, that a lot of support and guidance has to be provided. Chandragupta sir has mentioned a very useful suggestion that hyperlink can be one of the approach that can be taken to integrate IKS with maths and science specifically. So I would like to take this moment to thank everyone, thank all the panel member, all the panelists for their valuable, significant insights. The certificate for this session will be shared to your mail IDs. And now I would like to invite the moderator for the second panel discussion, Chetna Mehra ma'am. The topic will be the Indian books rooted with IKS. I invite Chetna Mehra ma'am to continue the panel discussion. Thank you so much. Once again, a very good morning to all the esteemed panelists and the members who have joined this session on the Indian knowledge system in school education. And this is a virtual panel discussion for all the members to discuss that how we can implement IKS in school curriculums and make them visible and tangible in a form of a children's learning outcomes. So सभी को नमस्ते सबसे पहले आप सबको एंड आप सभी का स्वागत है इस पैनल डिस्कशन में और आज का जो टॉपिक है हमारे नेक्स्ट पैनल डिस्कशन का दैट इज चिल्ड्रंस बुक रूटेड इन आईकेएस स्टोरीज वैल्यूज एंड इमेजिनेशन बियॉन्ड द करिकुलम how non-curriculum books inspired by Indian stories, traditions, and lived knowledge can build imagination, cultural grounding, reading habits, and emotional intelligence in learners. I welcome my esteemed panelist, Anil P. Joshi, sir, founder of HESCO Environmentalist. I welcome you, sir, for this panel discussion. I also welcome Dr. Nageshwar Rao. He is an assistant professor, senior of Hindi department and faculty of Sanskrit and Indian culture, SCSVMV University. It is my honor to have you both on this panel discussion. Has Supriya ma'am joined the, is she here? Okay, so I welcome Supriya Sanju ma'am. She is a HOD, Indian Knowledge and Language, Gurugram University. And we are also one waiting for Venkateshwara Rai sir. He is a professor, Jawaharlal Nehru Technological University, Hyderabad. I welcome you on behalf of Sri Aurobindo Society. My name is Chetna Mehra, and I am representing the Sri Aurobindo Society for this panel. And I'll be the moderator for this session. I quote, storytelling is a mean of conveying experiences and spiritual realities in a tangible way. The mother. The word stories, when it comes, we go back to our childhood and we always wanted to listen more and more. We all know that textbooks provide us just only the frameworks, but life lessons, imagination, the spark of learning, curiosity, cultural grounding always comes from the stories, kahaniya.
कहानियां एक ऐसी आधार है हमारी जिंदगी का। जब हम बचपन में छोटे थे तो हमें कहानियां सुनने में बहुत मजा आता था, लेकिन जैसे ही हम बड़े होते चले गए हमारे एक्सपीरियंसेस ही हमारे लिए कहानियां बनते चले गए। सो आज हम इस कहानी के पंडोरा बॉक्स को खोलेंगे और देखेंगे कि हमारे ओल्ड ट्रेडिशन, जिसमें हम आईकेएस की बात कर रहे हैं, जो हमारा इतना हेरिटेज सिस्टम है, जहाँ पे हम एस्ट्रोनॉमी, योगा, मेटलर्जी, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और इन सब की बात करते हैं, उसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि आईकेएस एक वास्ट ओशन है। इट्स अ वास्ट ocean of stories, traditions, and lived experiences. IKS not only covers all these major disciplines, but also covers the nature, language, ethics, community wisdom, oral traditions, oral wisdoms, folk songs, folk dances, nature based learning. But when we think of, uh, time to integrate all these things into our present curriculum or the non curriculum books, the question comes in front of us is how. And for this how, we are going to discuss this panel. And I'm just going to open my question to Supriya ma'am first, that in today's world, children are consuming global content, which is available in abundance, but their cultural anchor is getting weak day by day. Will IKS based stories help them to build their identity, belongingness, and self expression in a transformative way? I repeat my question for you, ma'am. In today's world, children are consuming global content, which is making their cultural anchor weak. Will IKS based stories help them to build their identity, belongingness, and self expression in a transformative way? Supriya, ma'am, over to you. थैंक यू सो मच मैम। इस क्वेश्चन का बस इतना ही जवाब दूंगी कि आपने बिल्कुल स्टार्टिंग में कहा कि हम ना दादा दादी की कहानियां नानी से सुन के, दादी से सुन के बड़े हुए हैं, हमारी मदर्स ने भी हमें सुनाया। तो उन कहानियों से उन्होंने हमें क्या सिखाया? वैल्यू। सभी कहानियां एक ऐसे मोड़ पे खत्म होती थी जहां हमें वैल्यू सीखने को मिलते थे, जहां हमें मॉरल वैल्यू, नैतिक वैल्यू, इन सब सभी को सीखने के लिए मिलते थे। हमें अलग से ये सिखाना नहीं पड़ता था कि बच्चे बड़ों को प्रणाम करो, बड़ों से आशीर्वाद लेनी चाहिए, या किसी का भला करना चाहिए, किसी के साथ बहुत ही अच्छा करना चाहिए। हमारे वैल्यूज में बिल्कुल है ही नहीं कि हम किसी को मारे या किसी का नुकसान पहुंचाए या किसी से जलन की बात हो। ये कभी हमारी वैल्यूज, हमारी कहानियां हमें ये सिखाती थी कि हम गलत कर रहे हैं तो हमारे साथ गलत हो रहा है, हम सही कर रहे हैं तो हमारे साथ सही हो रहा है। चाहे वो हमारे जो महाकाव्य है, रामायण और महाभारत की बात करें, उनकी हम जब जब छोटी छोटी स्टोरियां हम अपने दादा दादी या नाना नानी के मुंह से सुनते थे, वो जब हमें सुनाते थे तो हमें पता चलता था कि रावण ने गलत किया तो उसके साथ गलत हुआ, दुर्योधन ने गलत किया, उन्होंने अहंकार अपने में लाया तो उनके साथ गलत हुआ। हम उस समय तो हम सुन लेते हैं, लेकिन आजकल ये हो गया है कि न्यूक्लियर फैमिली हो गई है। न्यूक्लियर फैमिली के कारण हम बच्चों को वो बेनिफिट नहीं दे पा रहे हैं। पेरेंट्स, माता पिता दोनों जॉब में होते हैं, वो भी थक के घर आते हैं, तो उसके बाद ऐसा नहीं होता है कि बच्चों को कुछ स्टोरी के माध्यम से या कहानियों के माध्यम से या ऐसा कुछ उनको कुछ सिखाया जाए। ये काम हमारे बुजुर्ग ही करते थे, लेकिन जब से ये न्यूक्लियर फैमिली वाला सिस्टम आया है तो ये खत्म हो रहा है, तो हमें कहीं ना कहीं तो उनको सिखाना होगा। तो आईकेएस के माध्यम से हम उनके सिलेबस में या उनके स्टोरी बुक में, जैसे मेरे भी बच्चे हैं तो मैंने उनके जैसे हिंदी की किताबें हैं, संस्कृत की किताबें हैं या इंग्लिश की ही किताबें हैं, उनमें ऐसी कोई स्टोरी नहीं देखी हमने जिससे हमारे मॉरल वैल्यू क्या कहते हैं ज्यादा बढ़ सके या उनके बारे में बताया जा सके। नॉर्मल कहानियां होती है जिसमें कोई वैल्यूज नहीं होते हैं। तो आईकेएस के माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि जैसे हम पंचतंत्र की कहानियां सिलेबस में लगा दें, हितोपदेश है वो कहानियां सिलेबस में लगा दें, रामायण महाभारत को स्कूल्स ने लगा रखा है, लेकिन वो बिल्कुल तो उनको हम अच्छे से, कई बार ऐसा होता है कि बस हम सिलेबस में लगा लेते हैं और उसकी पढ़ाई नहीं करा पाते हैं।
तो हमें उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करना होगा, क्योंकि हमारे बच्चों में वैल्यूज की कमी होती जा रही है। ये हम सब देख रहे हैं कि वैल्यूज की कमी होती जा रही है। वैल्यूज के साथ साथ वो डिप्रेशन, हम बचपन में डिप्रेशन नाम का कोई वर्ड ही नहीं जानते थे, क्योंकि हम सॉरी संयुक्त परिवार में रहते थे, फैमिली में रहते थे, तो वो हमें ये सब सीखने को एज इट इज मिल जाता था। तभी हमारे कोर्स में ऐसे कुछ लगाने की जरूरत नहीं होती थी। आज हम बात कर रहे हैं, आईकेएस की बात कर रहे हैं, मॉरल वैल्यू, ह्यूमन वैल्यूज की बात कर रहे हैं, तो ये सब पहले क्यों नहीं था? क्योंकि हमें सिखाने की जरूरत होती नहीं थी, वो इनबिल्ट हमारे घर में हमें सिखा दिया जाता था। लेकिन अब जरूरत है, तो अब हमें सिलेबस के माध्यम से या किसी किताब के माध्यम से, छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से हमें स्कूल में ही सिखाना पड़ेगा, क्योंकि हम स्कूल में ही, बच्चे ज्यादा टाइम रहते हैं, हम स्कूल में ही बच्चों को एक मिट्टी से उसको आकार देते हैं। तो मिट्टी से आकार देने के लिए हम स्कूल एजुकेशन में इन कहानियों को लगाना बहुत जरूरी है। कल्चर वैल्यू हम उसको भी प्रमोट करना बहुत जरूरी है, कि क्योंकि कला के माध्यम से ही हम भारत की संस्कृति को जानते हैं, और भारत की संस्कृति जब तक आगे नहीं बढ़ेगी, हमारा देश भी बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ेगा। हम अभी भी वैसे ही, हम अभी बीच में अटके हुए हैं कि क्या कहते हैं, पाश्चात्य संस्कृति को ले या भारतीय संस्कृति को ले, तो इस तरफ। बिल्कुल। Thank you so much, ma'am, for bringing our childhood memories to all the participants. I know that you are saying right, the value system is really going down, and we really need to build the resilience and the empathy among the learners, and they should learn the moral values on their own. It should be inculcated in them, not the develop तो हो ही नहीं सकती। बिल्कुल सही बिल्कुल। बोला है आपने। बट उससे ज्यादा जरूरी मैं अनिल सर से पूछना चाहूंगी एक क्वेश्चन कि सर 21st सेंचुरी स्किल की डिमांड है, 21st सेंचुरी स्किल की डिमांड है कि हम लोग क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करें, प्रॉब्लम सॉल्विंग डेवलप करें, बच्चों को एनालिटिकल थिंकर्स बनाएं, सेल्फ इंडिपेंडेंस बनाएं। लेकिन जब तक वैल्यू सिस्टम वीक रहने वाला है, वी आर नॉट गोइंग टू बिल्ड दैट ऑल दीज 21st सेंचुरी स्किल्स अमंग द लर्नर्स। तो आईकेएस हमको ये रिलेशन एस्टैब्लिश करेगा, वैल्यूज और 21st सेंचुरी स्किल्स में बैलेंस कर पाएंगे। अनिल सर। नमस्कार सर, आप म्यूट पे हैं सर। आई रिक्वेस्ट यू टू अनम्यूट। नमस्कार सर, आप म्यूट पे हैं सर। अब आ हाँ गया? जी सर, नमस्ते। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया, थैंक यू, नमस्कार। पहला तो आप सबको बड़ा धन्यवाद, और जरा सा लेट मी गिव यू अ लिटिल हिस्ट्री ऑफ दिस IKS. Since we are a group of people who are working scientific backup, technology backup. We are working for the villages in Himalayan ecosystems for the last 4 decades. So the history I would like to say about AKS, it was 2018 when we had a request to the ministry HRD that there has to be an Indian knowledge system, because it's an Indian knowledge system which can truly bring so-called sustainability, which unfortunately Westerns have been claiming 1972 onward, when Rio meeting was there, and it was said that economy and our plannings are biased against the ecosystem, and sustainability is something we are missing largely. तो हमने ये बात रखी 2018 में. It was agreed by the minister and all secretaries then. It was in Delhi meeting, and then IKS was launched. But the whole idea behind was, what are the Indian values, Indian knowledge system? Knowledge is a values also. We wanted everybody to realize that you cannot ignore and overlook no more the values of India and knowledge of the India, but the only thing is that you have to scientifically validate those values, because what is being claimed by America, Europe, and so on after scientific revolution, which came 1700 onward, they justify their approach based on science and technology and prove it through journals and internationally published material.
सो वी वांटेड टू से दैट कि आपको करना ये चाहिए कि हमारी जितनी वैल्यूज उनके साइंटिफिक कनेक्ट भी ढूंढो और वैलिडेट करो, ताकि ऑल्सो प्रेजेंट आवर सेल्फ वर्ल्ड में कि व्हाट आवर वैल्यूज आर। भी मुझसे पहले जो भी बोल रही थी, मैं उनके साथ पूरा एग्री करता हूँ एक बात को लेके कि देखिए हम बहुत खराब हो चुके हैं। आप और मैं जिस उम्र में पहुंच गए हैं, तो हमारी हालत इसलिए गंभीर हो गई है। हमारी जो भी ट्रेनिंग हुई है उसने हम सबको भी बिगाड़ दिया और हमने भी दुनिया को बिगाड़ दिया है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि आज अगर दुनिया को देखे, यू आर करंटली इन ए कंट्री वेयर 8.2 इज द ग्रोथ रेट। आपको जीडीपी का आपने सुना होगा, but at the same time we are the worst 40 cities in the country which are worst polluted in the world. What is it? How do you match these two? So how where is the development and this kind of is poisonous disaster taking us? ये बड़ा सवाल है। एंड अब बड़ा सवाल दुनिया में है कि while India is doing very well economically, are we at par with the ecosystem ecology? है क्या हम? नहीं। और एक जो बड़ी बात थी जो हमारे साथ, सिंस आई एम स्टूडेंट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, उसी पे काम करते हैं, उसी पे बोलते हैं, और इसलिए हमारा मानना था कि जहां इकोनॉमिक रेस है, जो कि वेस्टर्न रिफ्लेक्शन ज्यादा है, आप सब लोग जानते हैं, वेदर अवर लाइफ स्टाइल इज देयर, व्हाट टेक्नोलॉजी, द गैजेट्स एंड एनीथिंग दैट द स्टाइल ऑफ द लाइफ इज गोइंग टू किल अस, ऑफ कोर्स दिस लाइफ स्टाइल। तो हमारा मानना था कि हम दोनों चले, और दुनिया में अगर बेस्ट रिप्रेजेंट कर सकता है इकोलॉजी को, एनवायरनमेंट को, तो वो हमारा ही देश है। नेचर के बारे में जो हमारा नॉलेज है वो किसी का नहीं, हो ही नहीं सकता। तो उसमें हमको लगता था कि हमको लीड लेनी चाहिए, इसलिए हमने उस समय प्रपोज किया कि इंडियन नॉलेज सिस्टम कैन ओनली ब्रिंग सस्टेनेबिलिटी। व्हाट अल्टीमेटली वी आर लुकिंग फॉर वैल्यूज। किस बात के लिए चाहिए वैल्यूज? वैल्यूज इस बात के लिए चाहिए कि मेरा घर है, मेरा स्कूल है, मेरा कॉलेज है, मेरे जॉब है, मेरा सब कुछ है, मैं एक लिमिट को रियलाइज करूं, एंड दैट कम फ्रॉम द वैल्यूज। अब आप देखिए, विदेश में एक बच्चा पैदा होता है, हाउ वुड यू प्लेस इट? मैं जो बोल रहा हूं, एक विदेश में बच्चा पैदा होता है तो वो साफ सुंदर इन्वायरमेंट में पैदा होता है। हमारे देश में जो बच्चा पैदा होता है वो कूड़े के ढेर में पैदा होता है। वो दिल्ली का ढेर देखता है, हर शहर में गलियों में कचरा देखता है, तो आप लगाइए उसकी वैल्यूज क्या होंगी? क्या पढ़ाएंगे हम उसको? क्या बताएंगे उसको? तो इसलिए ये जो इश्यूज हैं, ये आज अगर आपको देखें, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली हमने सब बातें करते समय नेचर को किनारे कर दिया। वी आर ऑल प्रोडक्ट नेचर, ये बात बहुत ध्यान में रखनी चाहिए। और हमारी व्यवहार, हमारा तौर तरीका, सब कुछ कहीं नेचर से कनेक्ट है, और हमने ये नेचर कनेक्ट को जो है जो तोड़ दिया है, और ये मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की तरफ जो दौड़ भाग लगा दी है, उसने हमारी वैल्यूज को भी खत्म कर दिया। आज आप बताइए, आज से 20 साल में, मैं आपको बहुत मजेदार बात बताता हूँ कि कल मैं ट्रेवल कर रहा था, द टैक्सी ड्राइवर टोल्ड मी कि जब कभी भी उत्तराखंड में या केदारनाथ, बद्रीनाथ के लिए लोग यात्रा में आते थे, तो आपको आश्चर्य होगा, वो ड्राइवर को प्रणाम करते थे, पहले रास्ते में खाना उसी को खिलाते थे, क्योंकि वो उनको बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा कर रहा। अब कहाँ है वो वैल्यूज? अब कहाँ गई? और वो भी बड़ा अच्छा महसूस करता था, उसको रिस्पेक्ट मिलती थी, मेयरली नॉट एज ए ड्राइवर, वो रिस्पेक्ट भी फील करता था। तो अभी क्या है कि ये वैल्यूज हमारे देश की ही है, जहां पे ये था। लेकिन अभी जो हमारे ऊपर दूसरे नशे चढ़ने शुरू हो गए हैं, लाइफ स्टाइल वाले खास तौर से, तो उसने सब कुछ बर्बाद करना शुरू कर दिया। इसीलिए आज आप इसको ऐसे भी कनेक्ट करिए, इकोलॉजिकल क्राइसिस में के स्टेज में, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज इकोनॉमिक क्राइसिस इन द वर्ल्ड, एंड साइंटिफिक रिवोल्यूशन हैपेंड टू सॉल्व दैट, रिजॉल्व दैट, बट अल्टीमेटली अनफॉर्चुनेटली जो लॉसेस हमने नेचर के किए, उसने हमारी वैल्यूज को भी बड़ा खतरे में डाल दिया। पहले हर गांव के पानी की व्यवस्था होती थी, अब पाइपलाइन लगाते हैं जिसमें हवा आती है। मतलब आप देखिए वो शहर, आप उस शहरों को कैसे क्या कहेंगे जो प्रोड्यूसर ही नहीं है, वो कंज्यूमर है, हवा, मिट्टी, पानी सब कंज्यूम करते हैं पर कंट्रीब्यूट नहीं करते। तो अभी हम कहीं भटक हुए से समाज बन चुके हैं। इसलिए देखिए, हम एक एग्जांपल आपको बताते हैं। मेरे से पहले जो स्पीकर थी, दून स्कूल का आपने नाम सुना होगा, इट्स नंबर 1 कॉलेज स्कूल इन द कंट्री, जहाँ बड़े बड़े लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। व्हाट वी आर इंट्रोड्यूसिंग फ्रॉम February onward, there is a curriculum which will speak that guy 7th standard to 12th standard, उनको हम डिफरेंट 7th से 12th तक प्लेनेट अर्थ के बारे में, कल्चरल वैल्यूज के बारे में, और वो कनेक्ट करना है इकोनॉमी से भी। मतलब इकोनॉमी अलग बात नहीं करनी है और इकोलॉजी की अलग बात है, दे हैव टू बी कनेक्टेड। क्योंकि अगर कोई
पानी खत्म हो रहा है और वो कहीं इकोनॉमिक कन्वर्ट हो रहा है पानी की बोतलों में, प्यूरिफायर में, तो उसकी जो इकोलॉजिकल वैल्यूज है उसके बारे में बता रहे हैं। 7 to 12 हम और यहीं पे इंकलकेट, दिस इज द टाइम कि अब अगर आपको बदलाव लाना है, आप पर हम तो कहीं खोज के खत्म भी हो चुके हैं। अगर बच्चों में परिवर्तन लाएंगे तो हम कहेंगे ट्रू सस्टेनेबिलिटी इज डिफाइंड बाय व्हाट, so called sustainability. It is unless until you are not surplus, you cannot share, you cannot, सब आपको अपने लिए करना है, अपने लिए करिए, अपने करने के बाद आप सरप्लस करिए, सरप्लस के बाद शेयर करिए, तब आप सस्टेनेबिलिटी आएगी। तो अभी वी आर वर्किंग ऑन दैट एंड आई अप्रिशिएट दैट आईकेएस कैन ओनली सॉल्व द प्रॉब्लम। मैं साइंटिस्ट भी हूँ भाई, इकोलॉजिस्ट भी हूँ, इन्वायरमेंट भी हूँ, लेकिन हमने जो कुछ भी सीखा और देखा इन 4 डेकेड्स में, हमारी समझ में एक ही बात आई है, अब दुनिया दूसरे फेज में जा रही है। इकोनॉमी का फेज पूरा हो गया, सबकी भागदौड़ लगी हुई है, अब दूसरा फेज जो आ रहा है वो इकोलॉजिकल क्राइसिस का आ रहा है। और इसलिए हवा, मिट्टी, जंगल, पानी अगर दुनिया में कोई बता सकता है उनकी वैल्यूज और उनका हमसे लेना देना और उसका पूरी इकोनॉमी से लेना देना, कल्चरल वैल्यू से लेना देना, तो वो भैया भारत ही बता सकता है। इसलिए इंडियन नॉलेज सिस्टम कि हम इस रूप में पैरवी करना चाहते हैं कि आपका जो इकोनॉमिक वर्ल्ड है वो आपकी लाइफस्टाइल को बेहतर करेगा, वो आपके जहान को सुंदर बनाएगा, लेकिन इंडियन नॉलेज सिस्टम वो आपकी जान को बचाएगा। और जान बचाने का सवाल है। अब आप देखिए 50 लाख बच्चे प्रति वर्ष मर जाते हैं अगर पॉल्यूटेड एयर से, पानी से अलग मरते हैं, तो हम किस तरफ जा रहे हैं? क्योंकि वैल्यूज को हमने खत्म कर दिया। पानी को पूजते थे, पानी के प्रति आप हमारी क्या भावनाएं थी, जंगल के प्रति क्या भावनाएं थी, वो सब खत्म हो गया। अब बद्रीनाथ केदारनाथ में भी आते हैं तो युवा लड़के आते हैं बैंड बाजा लेके बजा रहे हैं, वो भगवान के पास थोड़ी ना आते हैं, और वो अपना थार और फार जो भी गाड़ियां होंगी कई तरह की उसमें घूमने आते हैं। ये सब वैल्यूज में अंतर आ गया है और इसलिए शायद अब एक नई शुरुआत की आवश्यकता है। और हमने तब भी यही बात कही थी। अब वो फिर जैसे कि सभी यूनिवर्सिटीज को, आईआईटीज को चला गया इंडियन नॉलेज सिस्टम में, और मैं कभी कभी उसमें भटकाव भी देखता हूं, तो मुझे दुख होता है कि मैंने ही ये बात एचआरडी में रखी थी कि देयर हैज टू बी इंडियन नॉलेज सिस्टम, और उसको आप नई दृष्टि से करिए। तो मैं आपसे भी कह रहा हूं कि अब बदलाव तो ऊपर वाले नहीं ला पाएंगे, लेकिन बच्चों को अगर जोड़ देंगे तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा अंतर आ सकता है और आपके पास अब कोई विकल्प नहीं बचा, क्योंकि अब आपका भविष्य इकोलॉजिकल क्राइसिस माने पानी की कमी, प्राणवायु की कमी और पेट के तीनों सवाल सीधे खतरे में जा चुके हैं। और आने वाले समय में ये और गंभीर होते जाएंगे, क्योंकि हम जीडीपी की चिंता करते हैं, इसीलिए हमने ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट, एक जीपी का काम शुरू किया। उत्तराखंड इज द फर्स्ट स्टेट इन द वर्ल्ड जो अभी ये बताता है कि अगर आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ ये है तो आपका कितना आपने पानी जोड़ा, कितना जंगल बेहतर किया, उसको क्वांटिफाई करके बताइए एंड ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट एक पैरेलल ग्रोथ मेजर दीजिए। दे आर डूइंग इट। तो आई विल फिनिश विद इट। आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट आई एम इनवाइटेड हियर। और मुझे लगता थैंक है यू कि अगर सर। नेक्स्ट चरण में काम करना है तो बात करिएगा, वी विल सर एडवाइस। बिल्कुल, मैं आपकी बात को कंक्लूड करना चाहूंगी कि नेचर एक सब्जेक्ट नहीं है, नेचर एक रिलेशन है, और उस रिलेशन को मेंटेन करना हम ह्यूमन बीइंग्स की एक मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जहां हम इकोलॉजिकल सेंसिटिविटी की बात करते हैं, हम आईकेएस की स्टोरीज के माध्यम से ही बच्चों को शायद ये अवेयर कर सकते हैं कि हमें फ्यूचर अर्थ को बचाने की क्यों जरूरत है, और अगर वो रहेगा तो हम रहेंगे, और हमारी उसकी जो वैल्यूज है वो उसी से बिल्ड की जा सकती है। तो थैंक यू सर। बट एक लास्ट क्वेश्चन है सर, मैं एक चीज जरूर पूछना चाहूंगी, मैं एक्साइटेड हो गई आपकी बात सुनकर कि दून स्कूल में आपने बोला कि हमने 7 to 12 प्लैनेट करिकुलम पर बात करी है। आप कोई एग्जाम्पल शेयर कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंस से कि बच्चों का कैसा रहा जब उन्होंने, या अभी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो अभी उसका अभी किस तरह का करिकुलम डिजाइन कर रहे हैं आप? देखिए, तो मजेदार बात यह है कि हमने इस कैरिकुलम को बड़ा इनोवेटिव तरीके से किया है। इट हैज टू बी इन द पार्टनरशिप विद द स्टूडेंट्स। तो अभी क्या है, उनके 8 बच्चे डिफरेंट स्टैंडर्ड के एक साथ हमारे साथ बैठते हैं, और अभी हमने उसको फरवरी में वो लॉन्च करने जा रहे हैं। लेकिन पूरा कैरिकुलम बन गया है, लेकिन वो इंटरैक्टिव हो रहा है। अभी वो ही पढ़ाएंगे, हमसे सीखेंगे, वो क्लासों में पढ़ाएंगे, क्योंकि कनेक्ट जो होता है टीचर टू स्टूडेंट कनेक्ट की केमिस्ट्री अलग होती है, स्टूडेंट और दोस्त के दोस्त की कनेक्टिविटी। इसलिए वी डोंट वांट टू कॉल इट इज ए सिलेबस, वी वांट टू डू इट ए कैरिकुलम, ताकि उसको एक मेंटल कनेक्ट बेहतर तरीके से अपनी तरह से हो।
और इसमें तमाम चीजें हैं, इसमें 3 4 5 बैठकें हो चुकी हैं और आजकल वो फाइनल स्टेप में एक छोटी बुक भी निकल रही है, व्हाट शुड बी द करिकुलम लाइक, और उसको बच्चों की पार्टनरशिप में हम करने जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि सब टाइम अप्रैल मई जून में दोनों स्कूल ही एक बड़ी बैठक कर रहा है बाकी स्कूल को बुला करके, और इस बारे में बात करेगा, उनके एक्सपीरियंस सब आएंगे, और ये एक ठीक ठाक तरह का एक इनिशिएटिव है। एंड देन आफ्टर अभी अभी एक और कोशिश कर दी है हमने कि सिंस वी हैव एमओयू विद मेनी आईआईटीज, आईआईटी बनारस, आईआईटी रुड़की, आईआईटी कानपुर, आईआईटी रायपुर, ये सब के साथ भी हमारा काम चल रहा है। तो हम चाह रहे हैं कि उस लेवल पे भी हम इसको ले जाएं कि उस बच्चे को जो बीटेक कर रहा है या फर्स्ट ईयर में है, उसको क्या दिया जाना चाहिए, समझाना चाहिए कि भाई तुम जो कर रहे हो वो कंज्यूमरिज्म सिखा रहा है और हम जो बोल रहे हैं वो कंजर्वेशन सिखाएगा, और उससे तुम्हारी जान को साथ चलाओगे। तो वी आर डूइंग इट। Thank you so much, sir, for giving such a nice information to everyone and telling us that what is the importance of, ecological sensitivity along with the IKS, bringing with, and how can we bring this through IKS. Thank you so much. Now I would like to talk to Dr. Nageshwar Rao. Sir, are you there? Yes, ma'am. Yes, ma'am. I am here itself. Okay, sir. Welcome, sir, for this panel discussion. My question to you, okay, do you think that traditional stories can compete with the modern digital entertainment? Because the entertainment is left only for 1 minute reels these days for the learners. So, will it be able to compete? And how we can make these stories engaging using, you can say, AR or virtual realities, or maybe the interactive apps for the learners? Sure, ma'am. First of all, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने मुझे बुलाया यहाँ पर और इतने लोगों के सामने बिठाया। मेरा नाम नागेश्वर है, डॉक्टर नागेश्वर राव, कमिंग फ्रॉम कांचीपुरम यूनिवर्सिटी, श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती मानित विश्वविद्यालय। मैं हिंदी और भारतीय संस्कृति 2 विषय पढ़ाता हूँ और IKS इंडियन नॉलेज सिस्टम्स एक डिवीजन है, जो एक विभाग है जो भारतीय सरकार के माध्यम से शिक्षा में भारतीय ज्ञान प्रणाली को, भारतीय ज्ञान परंपरा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया था। तो आपका जो प्रश्न है उसके मूल में मुझे IKS का जो मूल सिद्धांत है उसको लेकर के मैं बात करना चाहूंगा मैं, बिकॉज IKS डिवीजन हैज 3 aims. The first aim is दृष्टि, second one is परंपरा, third one is लौकिक प्रयोजनम. So दृष्टि मतलब विजन. What is your vision? आप किस दृष्टि से किसी विषय का अध्ययन करते हैं, उसी दृष्टि से आप उस विषय को समझ पाते हैं. सेकंड परंपरा, क्या आपके पास कोई विशिष्ट परंपरा है जो सिर्फ आपके लिए, आपके समूह के लिए, आपके प्रदेश के लिए सीमित है और जो सबके लिए आदर्श हो सकता है. तीसरी बात, लौकिक प्रयोजन. ओके, ठीक है, आपके पास ये सारी चीजें हैं, आपके पास दृष्टि है, आपके पास परंपरा है, आपके पास एक विरासत है, लेकिन उससे प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में उसका क्या संबंध है? आपने जो कहा इसका मुझे एक ही उत्तर है, भारतीय कथा साहित्य अथवा भारतीय विरासत की जो प्राचीन कथाएं हैं वे न केवल कथाएं हैं बल्कि ये मनोरंजन, उपदेश और व्यावहारिकता को मिलाते हुए एक अद्भुत मिश्रण है. एंड देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन द मॉडर्न एंटरटेनमेंट एंड द भारतीय प्राचीन कथा as far as the values are concerned. क्योंकि हमारी बात वैल्यूज पर चल रही है. प्रोफेसर जोशी सर ने भी यही बात कही है और उसके पहले सुप्रिया मैडम ने भी यही कही है. आपको उपनिषदों में एक कहानी मिलती है जिसका नाम है उपमन्यु. उपमन्यु की कथा है. उसमें गुरु का आदेश है कि तुम इस प्रकार से आचरण करो, और वह गुरु का आदेश पालन इस कदर करता है कि अंततोगत्वा वह उस गुरुकुल में सबसे पहले
ऐसा छात्र बन जाता है जिसे देवता का दर्शन हुआ। इट्स ए सिंबॉलिक स्टोरी। मतलब उपमन्यु की कहानी हमें सुनाती है कि आपके पास कोई साधन हो या ना हो, आप गुरु की आज्ञा का पालन करो और अपना कर्तव्य निभाओ, इससे आपको सबसे उच्चतम पद प्राप्त होगा। Nowadays we complain about the tools. Nowadays we complain about the madhyam. Nowadays we complain about the resources. But without resources, Upamanyu has to go to jungle and he has to go for the samidha dhanam. मतलब हवन के लिए जो लकड़ी वगैरह होता है उसको कलेक्ट करने के लिए गुरु का आदेश था, वो जाता है और उसकी आंखें खराब हो जाती हैं और वो एक गड्ढे में गिर जाता है। एंड द टाइम हैज कम फॉर हिम टू परफॉर्म द हवन एट द राइट मोमेंट। वह गुरु की आज्ञा का पालन करने वाला लड़का है, इसलिए वह उसी गड्ढे में बैठ करके भावना मात्र, मतलब सिर्फ अपनी संकल्पना को लेकर के वो सोचता है कि यह गड्ढा ही मेरा यज्ञ वेदिका है और ये जो हवन की सामग्री है ये घास है और ये फूस है और ये जितना भी उसके पास जो रद्दी और पत्ते ये सब इकट्ठे हुए हैं उन सबको लेते हुए वह रिसोर्सेस की चिंता नहीं करता, सिर्फ कार्य की चिंता करता है। और अंततोगत्वा उसकी संकल्पना से सिद्ध होकर के देवता लोग आते हैं, आशीर्वाद देते हैं। दिस इज द स्टोरी यू रीड फ्रॉम समवेयर अराउंड 1500 BC या उससे भी अधिक समय की कहानी है ये। यू डोंट कंप्लेन अबाउट द रिसोर्सेस। एंड एक और रामायण से संबंधित एक श्लोक है जिसको राम जी की कथा से मिला हुआ है, चाटु श्लोक है, शायद गुप्ता के पीरियड से संबंधित श्लोक है। विजेतव्या लंका चरण तरणियो जलनिधि विपक्षः पौलस्त्यो रणभूमौ सहायाश्च कपयः पदातिर्मर्त्योऽसौ सकलमवधीद् राक्षसकुलं क्रियासिद्धिः सत्त्वे भवति महतां नोपकरणे। द पंचिंग लाइन इज क्रियासिद्धिः सत्त्वे भवति महतां न उपकरणे। देयर इज नो importance for tools. What is kept in your tools? Nothing is there. Everything lies in your sankalpa. Everything is within yourself. The energy should rise from your bottom of the heart. That is what made Sri Rama into Sri Rama, the God. He is also like the normal being. In Valmiki Ramayana, he never said that I am the Bhagavan. He is actually the human being. Vijetavya Lanka, he has to win, he has to be victorious over Lanka, which was the highest cadre of kingdom at those times. And Charanataranyo Jalanidhi, उसे समुद्र पार करना है और उसके पास जीपीएस कोई भी व्यवस्था नहीं है, उसको पैदल जाना है, वो भी समुद्र पार करके। और किसको हराना है? वह दशानन है, लंकेश है। विपक्षः पौलस्त्यो, वह ब्रह्म का मानस पुत्र का वंशज है और सबसे बड़ा शक्तिशाली राजा था। और उसके पास इतनी भयानक सेना थी कि उसने इंद्र को हरा दिया, यक्ष को हरा दिया, सारे मतलब 14 लोगों को हरा दिया उसने। और तुम्हारे पास क्या है? तुमको मदद करने वाली सेना क्या है? बंदर। विपक्षः पौलस्त्यो, और तुम कौन हो? खुद पदाति ही मर्त्योसो, तुम पैदल चलने वाले आदमी हो, नर हो। लेकिन क्रिया सिद्धि ही सत्वे भवती। लेकिन इस आदमी ने कुछ नहीं सोचा, उसने संकल्प किया है, सिर्फ और सिर्फ संकल्प के मात्र से उन्होंने इतनी बड़ी जीत दर्ज की थी। ये हमारी रामायण की कथा है। तो ऐसी कथाएं प्रेरक कहानियां बनती हैं। ऐसी कहानियां आपको मतलब छात्र के लिए प्रोत्साहक बनती है। इसके साथ साथ मनोरंजनात्मक दृष्टि से भी बहुत सारी कहानियां हैं, क्योंकि समय की कमी है हमारे पास। एक और बात मैं आपको कहना चाहूंगा, वेद जो सबसे पुराना साहित्य है ऑन द प्लैनेट ऑफ द अर्थ, इट इज सेड टू बी द फर्स्ट स्क्रिप्चर्स ऑन द प्लैनेट। वेदास से दैट चरैवेति कष्टम सह, मतलब आपने जन्म लिया, इसका मतलब है आप संघर्ष के लिए पैदा हुए हो। एंड डोंट फियर, भयम मास्तु, न पराजयम न पलायनम। शायद हिंदी के कोई छात्र बैठे हुए हैं तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला नामक एक हिंदी के कवि हैं, उन्होंने इसी को पंचलाइन बनाया अपने सारे साहित्य का। कभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, वे लिखते हैं।
इसका टैगलाइन वही, मतलब कभी भी पराजय को स्वीकार मत करो। ये हमारे आर्ष साहित्य का, सबसे प्राचीन साहित्य का सारांश है। चरैवेति चरैवेति, कहीं पर भी आप पीछे मत हटो। हमारा साहित्य ये कभी नहीं कहता कि पीछे मुड़ जाओ, नो, आगे बढ़ो। मातृतुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोचलो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। अमर्त्य वीर पुत्र हो तुम, ये याद दिलाने वाली हमारी कहानियां हैं। और हमारे पास इतनी प्रेरणात्मक कथा साहित्य की क्या कहें वीथिका है या वीचिका है, बहुत बड़ी निधि है, बहुत बड़ा एक अमानत है हमारे पास, जो कि अनंत है। और आप इस दृष्टि से यदि आप कथा साहित्य को टटोले तो बहुत सारे रत्न मिले। आप भाषा से अथवा क्या कहें उसकी कठिनता से या उसे प्राचीन समझ करके, ये पुराना है कौन पढ़ेगा ऐसा समझ करके आप दूर रह जाते हैं, then the loss is ours. Now this is the what shall I say, this is the need of the hour to get into that ocean and take those ratnas of katha sahitya which are very useful for the present generation. You can see the management in Ramayana. You can see how to manage the time, how to manage the words, how to manage the relations. There are so many things to be taught as far as our literature is concerned. आपको कहा जाता है कि हनुमान जी जब मिले थे सबसे पहले, तो उनको देख करके कैसे बात करना है ये हम सीख सकते हैं, और श्री राम जी को देख करके हम सीख सकते हैं कि किस प्रकार से कठिन परिस्थितियों में भी किस प्रकार से आगे बढ़ना है। ऐसे एक एक पात्र। और महाभारत के बारे में क्या कहें, जब आप दृष्टि को बदलते हैं, सिर्फ इसे एक इतिहास ग्रंथ के रूप में या किसी कहते हैं कि किसी क्या कहें जस्ट इट्स ए काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट, उस दृष्टि से नहीं, उसका एक प्रयोजन है। उस प्रयोजन की दृष्टि से यदि आप पढ़ते हैं तो मेरे ख्याल से देयर इज नो सेकंड थॉट दैट वी आर something lacking in our katha sahitya, which is something second to the world literature, which inspire the present kids, and actually kids के साथ साथ youth को भी। रामचरितमानस में ऐसे कई प्रसंग है जो युवा को अत्यंत आवश्यक है। इन सबको एक्चुअली इस दृष्टि से पढ़ाया जाना चाहिए। रामचरितमानस सिर्फ भक्ति का ग्रंथ नहीं है, यह कर्म का ग्रंथ है। किस प्रकार से हमें जीवन में किस प्रकार से आचरण करना चाहिए, कठिन परिस्थितियों में कैसे जूझना चाहिए, बहुत सारी बातें हैं इसमें। इस दृष्टि से यदि हम पढ़ेंगे तो यह सिर्फ कथा साहित्य नहीं रह जाएगा, बल्कि एक अनमोल निधि रह जाएगा हमारे बच्चों के लिए, सिखाने के लिए, विशेष करके स्कूल के लिए एवं कॉलेज के लिए भी हम कर रहे हैं ऐसा। See, ours is a deemed university pattern and we run the course called Indian culture. Indian culture में हम सिंधु सरस्वती घाटी सभ्यता से लेकर के आज के इतिहास तक उन सारे मोड़ों को हम परिचय कराते हैं बच्चों को, जो कि भारतीय इतिहास में बहुत बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। ना सिर्फ पराजय की गाथाएं हम पढ़ाते हैं, हिस्ट्री में हमने कहां कहां विजय प्राप्त की है, हमारे संस्कृत साहित्य में या अथवा अपने प्राचीन साहित्य में क्या ऐसी निधि है जो आज के लिए भी बहुत रिलेवेंट है। इस दृष्टि से यदि आप पढ़ाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि हमारा प्राचीन वाङ्मय कहीं छोटा पड़ जाएगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। मैं आपकी बात से बहुत इंस्पायर्ड हुई हूँ, और डेफिनेटली आपने बिल्कुल सही कहा है, जहाँ संकल्प होता है वहां पर आपको प्रोसेस के अपने आप रास्ते खुल जाते हैं, और रिसोर्सेज की चिंता नहीं करनी चाहिए हमें। आई थिंक रिसोर्सेज अपने आप बनते चले जाएंगे जब हमारा संकल्प इतना स्ट्रांग होगा आईकेएस को करिकुलम में लाने का, बच्चों को उस प्राचीन ग्रंथ से वजूद कराने का। बिल्कुल बहुत जरूरी है वो। मैं आपकी बिल्कुल बात से एग्री करती हूँ कि रामायण और महाभारत की जो टीचिंग्स है वो हमें ना केवल ये बताती हैं कि हम अभी इस कंटेम्प्रेरी देश वर्ल्ड में कैसे जिए,
बल्कि अपनी मर्यादा में कैसे रहें, अपने आप को कैसा रखा जाए, संघर्ष में कैसे अपने आप को काम रखा जाए, ये सारी बातें की जाती हैं। सॉरी टू डिस्टर्ब यू, एक और बात मैं कहना भूल गया था। yesterday was December 11th. December 11th को हम भारतीय भाषा दिवस के रूप में मनाते हैं। क्यों भारतीय भाषा दिवस के रूप में मनाते हैं, इसको एक स्टोरी के रूप में आप प्रेजेंट जनरेशन को पास कर सकते हैं। दिस इज द बर्थडे ऑफ राष्ट्र कवि सुब्रमण्य भारतीयार. Subramanya Bharatiyar was the first person from South to go and learn Hindi in North India. काशी में जाकर के उन्होंने बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी में उन्होंने संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की थी, बाद में हिंदी की एमए की थी उस समय पर। 1920s की बात मैं कर रहा हूँ, 1907-8 की बात मैं कर रहा हूँ, जब जहां वे बात कर रहे थे उत्तर और दक्षिण को भाषा के माध्यम से, संस्कृति के माध्यम से जोड़ने के लिए। एंड अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, yesterday was December 11th, क्यों इनको भारतीय भाषा दिवस के रूप में, इनके जन्मदिन को क्यों चुना गया है? क्योंकि he was the first man who fought against the British government with the very phrase called vernacular languages usage. हमने कभी सोचा है, हम हमेशा अंग्रेजी बोलते समय, अंग्रेजी धड़ल्ले से बोलते समय कभी भी हम ध्यान नहीं देते कि वर्नाक्युलर लैंग्वेज का क्या अर्थ है। वर्नाक्युलर लैंग्वेज, मैं सबसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना चाहूंगा इस मंच पर, इस पवित्र वेदी पर, कि कभी भी जीवन में वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस की संज्ञा मत दीजिए भारतीय भाषाओं के लिए। जहां जहां हमें भारतीय भाषाओं की बात आती है वहां पर हमें भारतीय भाषा ही बोलनी चाहिए। वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस नामक शब्द को लेकर के सुब्रमण्य भारती जी ने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी ब्रिटिश राज के खिलाफ 1920s-30s में, क्योंकि वर्नाक्युलर नामक शब्द आया है लैटिन के शब्द वर्नास से। वर्नास का अर्थ है गुलाम, गुलाम की भाषा, वह भी ऐसा गुलाम जो हमारे घर में पैदा हुआ हो और उसकी सारी संपत्ति हमारी है, उसका सारा जीवन हमारा है, ऐसा अर्थ है वर्नास का, और उसकी भाषा है वर्नाक्युलर भाषा। इस शब्द को लेकर के सुब्रमण्य भारती जी ने लड़ा है, इस चेतना को लेकर के उन्होंने लड़ा है, जिस चेतना का कहीं नामो निशान नहीं था 1920-30s में। भारत की संकल्पना अभी अभी आ रही थी, भारतीय भाषा के रूप में किसी ने नहीं सोचा। भारतीय भाषा, सारी भाषाओं को लेकर के उन्होंने सिर्फ तमिल की बात नहीं की थी, हिंदी की बात कही थी, संस्कृत की बात कही थी, तेलुगु की बात कही थी, और सारी भारतीय भाषाओं को उन्होंने केस दर्ज किया था मद्रास के हाईकोर्ट में। इसलिए हमें दिसंबर 11 को भारतीय भाषा दिवस के रूप में, सुब्रमण्य भारतीयार जी के जन्म दिवस के रूप में हम मनाते हैं, क्योंकि यह भारतीय भाषा दिवस के गौरव का चिन्ह है। इस कहानी को यदि हम पढ़ाएंगे तो इससे आपको ये भी एहसास होगा बच्चों को कि अच्छा ये बात है क्या, हम जिस भाषा को बहुत मामूली ढंग से बोलते हैं उसमें इतना इतिहास छुपा हुआ है क्या, और इतना बेदर्द मतलब क्या बोलते हैं हो गए क्या हम, जिसे हमें मतलब बोलते हैं ना कि डिसेंसिटाइज्ड हो गए क्या हम। ये सारी बातें हमें जैसा कि मैंने पहले बताया IKS डिवीजन के जो 3 लक्ष्य हैं, दृष्टि, लौकिक प्रयोजनम और परंपरा, इन तीनों को जो उजागर करे ऐसी पढ़ाई करिकुलम में हमें रखनी चाहिए। और इस संदर्भ में फिर से धन्यवाद दें, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, क्योंकि ये बात मैं सर बिल्कुल बहुत जरूरी है। मैं बिल्कुल समझ रही हूँ सर, आप बिल्कुल एक रास्ता हमें दिखा रहे हैं कि हमें अगर रेलिवेंट मटेरियल बुक्स के लिए ढूंढना है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन सा वो मटेरियल है जो दृष्टि, परंपरा और अलौकिक सभ्यता को साथ में लेकर आए, बच्चों तक पहुंचाने का जरिया बने और बच्चों को उसकी वैल्यू पता लगे। अभी मैं वेंकटेश्वरा राय सर हैं क्या, अभी हमारे साथ जुड़े हैं क्या वो? ओके, सुप्रिया मैम, आई वुड लाइक टू आस्क यू वंस अगेन कि एक जनरेशन है जो IKS से समझती भी है और IKS को पहचानती भी है और प्रैक्टिशनर भी है, और एक जनरेशन है जिसका IKS से अभी तक कोई नाता जुड़ा नहीं है। अब ये 2 जनरेशन हैं। जब 2005 में NCF आया था और जब 2023 में NCF आया है तो IKS को बहुत जोर दिया जा रहा है कि IKS को लाया जाए करिकुलम्स में और करा जाए। हम ये कैसे इंश्योर करें, मतलब क्या रोड मैप आप सजेस्ट करते हैं हमें कि व्हाट शुड बी द रोड मैप, कि जो वो एक जनरेशन IKS से परिचित है और एक जनरेशन जो IKS से बिल्कुल परिचित नहीं है, उन दोनों के बीच में ब्रिज का काम कर सके।
मैम इसमें मैं आपने जो सर से पूछा था ये क्वेश्चन कि अभी रील्स आने लगे हैं, शॉर्ट्स आने लगे हैं, तो हम उसको किस तरह से आईकेएस से जोड़े। तो ये जो आपने कहा ब्रिज का काम, अभी हमारे जनरेशन क्या है, उनके हाथ में फोन आ गया है, उनके पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है। वो जितना टाइम हम अपनी किताबों के साथ बिताते थे, वो हमारे जो नए जनरेशन है वो इन गैजेट्स के साथ बिताते हैं, ठीक है। लेकिन हम उनको क्या कहते हैं कि आप वही चीज लो जो आपको फायदा हो, जो आपका आपके लिए एजुकेशन में भी फायदा हो या आपके लिए कहीं और भी फायदा हो। तो हम इन कहानियों के माध्यम से, इन कहानियों को क्यों ना ऐसे रूप में दिया जाए जिससे हमें हमारे बच्चे 2 मिनट का या 1 मिनट का रील देख के या शॉर्ट्स देख के या छोटी छोटी स्टोरी देख के उनको ये लगे कि अच्छा ये भी होता है, ये हमारे वैल्यूज थे क्या, ये हमारी हिस्ट्री में है क्या। बहुत लोग अपनाना चाहते हैं लेकिन उनको नहीं मिलता। हमारा अ, जो ये कहे कि हम हमारी जो है ना टाइम बाउंड वाली ना वो खत्म हो चुकी है। हम खुद भी ये बड़ी बड़ी कहानियां या बड़ी बड़ी जो स्टोरीज है उसको पढ़ नहीं पाते हैं। क्यों खत्म हो रही है? क्योंकि ये रील्स का टाइम आ गया है। बच्चे वही देख के खुश हो जाते हैं, वही देख के बहुत कुछ अपनाने लगते हैं। तो हम क्यों ना अपने करिकुलम में या छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से, या क्योंकि स्टोरी ना एक बहुत, जैसा सर ने कहा, स्टोरी बहुत अच्छा माध्यम होता है, बहुत बड़ा माध्यम है कि हमारे दिमाग में कुछ बैठ सके। हम किसी भी चीज को यदि ऐसे करिकुलम की तरह पढ़ते हैं या कुछ हमें सुनाया जाता है, तो आप देखिएगा कि वो दोनों का बहुत फर्क होता है। जो हम कुछ पढ़ के सीख पाते हैं या जो हमें कुछ अच्छे से उसको कहानी के माध्यम से वो हमें सुनाया जाता है, तो उसमें बहुत फर्क हो जाता है। तो हमारे बच्चे अभी देखने पे ज्यादा अपने जोर दे रहे हैं, मतलब कि किताबें वो अपनी क्या कहते हैं, कोर्स के सिलेबस भी चाहते हैं कि ऑनलाइन मिल जाए तो हम उस किताब को वहीं से पढ़ लें। तो ये भी हो रहा है। तो हम वहीं पे क्यों ना छोटी छोटी कहानियां, छोटी छोटी, चाहे हमें जो हमारे ऐसे जनरेशन हो जिसकी आपने बात की, जिन जो आईकेएस जानते हैं, जो हमारे वैल्यूज को जानते हैं, उनमें और हमारे क्या कहते हैं जो अभी युवा वर्ग है उनमें ये ब्रिज का काम करे, वो हमें दे और हमारे युवा वर्ग जो है उनको लेने के लिए तैयार हो। लेकिन हमें आज के उनको उसी तरह से देना होगा जिस तरह से वो लेना चाहते हैं। हम किसी भी चीज को उसको जबरदस्ती नहीं थोप सकते। आज आप देखेंगे कि नए जनरेशन में हमारी वैल्यूज, जब हमारा टाइम था हम ये देखते थे कि हाँ, माता पिता ठीक है बहुत फ्रैंक होते थे हम, लेकिन माता पिता की एक अलग उनका एक अलग स्थान होता था, हमारे बड़ों का एक अलग स्थान होता था। लेकिन आजकल जो है माता पिता भी सोचते हैं कि एक मित्रवत व्यवहार किया जाए, फ्रेंडली इन्वायरमेंट रखा जाए घर में। तो जब हम फ्रेंडली इन्वायरमेंट रखते हैं वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम फिर उस वैल्यू को उस पे थोप नहीं सकते हैं। हम यदि बोलेंगे बेटा सुबह उठ के बड़ों को प्रणाम करना चाहिए, या हमारे जनरेशन में ये है कि हम नहा धो के हम भगवान को प्रणाम करना चाहिए, तो वो कहेंगे क्या यार मम्मा आप भी, वो ठीक है हम जब समय आएगा हम कर लेंगे। उसके बाद हम उनको जबरदस्ती थोप नहीं सकते कि नहीं तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। लेकिन एक्सक्यूज मी, लेकिन हम उस उनको यदि इन वैल्यूज को छोटे छोटे घटना के माध्यम से या छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से कि हाँ इन्होंने क्या कहते हैं भगवान को पूजा करके घर से बाहर निकले, तो इनका बहुत अच्छा हुआ। ये यदि माता पिता के प्रति सम्मान रखते हैं तो इनका बहुत अच्छा हुआ। तो इस तरह से हम यदि उनको वो देंगे, चीज परोसेंगे जिस तरह से वो लेना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि ये जो हमारे बीच का जो ये जनरेशन गैप की बात हम करते हैं ना, वो जनरेशन गैप खत्म होगा। समय हमें देना पड़ेगा बच्चों को, और समय हमें खुद निकालना पड़ेगा उनके लिए। तो तभी हमारा ये जनरेशन गैप, और तभी हमारे बच्चे उन वैल्यूज को सीख पाएंगे। सर रामायण की बात कर रहे थे कि संकल्प शक्ति, हम बस ये जानते हैं, खैर हमें तो उतना ज्यादा बताने की जरूरत नहीं पड़ी कि हनुमान जी जो है वो समुद्र पार करके चले गए। क्यों चले गए?
क्योंकि जामवंत जी ने उनको उनके संकल्प को और उनकी शक्ति को उन्हें याद दिलाया। तो हम यदि ये स्टोरी बच्चों को कहेंगे कि बच्चे तुम्हारे में बहुत शक्ति है, तुम अपने जो संकल्प, आपने जो गोल रखा है अपने लाइफ में, अपने जीवन में, वो उसको आप उस तक पहुंच सकते हो और उसको बहुत आसानी से पार भी कर सकते हो। जैसे हनुमान जी ने पूरे समुद्र को पार करके लंका पहुंच गए क्योंकि उन्होंने संकल्प रखा और उन्होंने ये गोल रखा कि हाँ, मुझे माता सीता के बारे में पता करके आना ही आना है, तभी हम श्री राम के सामने आएंगे, तभी हम कुछ वहां पे खाएंगे पिएंगे, उनसे बात करेंगे। तो ये उन्होंने संकल्प रखा। इनकी इन्हीं को, इसी स्टोरी को हम यदि बहुत अच्छे ढंग से, बहुत प्यार से, या बहुत ऐसे छोटे छोटे रील्स के माध्यम से, रामायण महाभारत वेद की बातें, सर ने कही कि वेद में भी बहुत सारी बातें, वेद में हमें कहा जाता है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, मतलब सबको देवता की तरह समझो। लेकिन हम आज यदि कहेंगे, हमारे बच्चे कई बार सुनने को मिलता है कि हम अपने टीचर्स के बारे में कुछ भला बुरा कह रहे हैं। हम यदि हम अपने बच्चों को कुछ सिखाते हैं, जैसे म्यूजिक ही, संगीत ही, तो वहां जो गुरु होते हैं, हमें ये सिखाया गया था गुरु जो है वो भगवान से भी ऊपर है। अ, तो ये हमें सिखाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि जो वही है, गैप है। हमारे गुरु हमें यही क्या कहते हैं, टीचर्स, जब हम ये सिखाने लगेंगे टीचर्स की हाँ, गुरु को एक ईश्वर के रूप में देखो, तो और वो एक स्टोरी के माध्यम से, क्योंकि कहानियां सबको पसंद आती है बचपन से लेके अभी तक। अभी भी हमें कोई स्टोरी, जैसे सर अभी 2-3 स्टोरी सर ने सुनाया, बहुत अच्छा लगा सुन के। और ये लगा कि अच्छा हाँ, हमारे क्या कहते हैं, हमारे ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में इतना कुछ है जो हमें बहुत कुछ नहीं भी पता है, हमें भी अभी नहीं पता है। तो हमें उन सभी चीजों को, उन घटनाओं को, उन जो हमारे ग्रंथों में इतनी, कहते हैं, बहुत बहुत कुछ है, बहुत धनी है हम इस मामले में, वैल्यूज सिखाने के लिए, नैतिकता के मामले में शास्त्रों में बहुत कुछ है। तो उस चीज को, उस धन को हमें बच्चों तक उसी तरह परोसना होगा जिस तरह से वो ले रहे हैं, बिल्कुल लेना मैम, चाहते हैं। जी जी। बिल्कुल। तो आई एग्री विद यू कि हम बिल्कुल एक साइलोज में काम नहीं कर सकते हैं। हमें टेक्नोलॉजी को भी माध्यम यूज करना पड़ेगा, हमें वर्चुअल रियलिटीज को भी माध्यम यूज करना पड़ेगा, हमें स्टोरी बुक्स भी माध्यम यूज करना पड़ेगा, हमें बहुत तरह की बातें भी बच्चों से करनी पड़ेंगी, जिससे बच्चे ना केवल उस स्टोरी के महत्व को समझे, बल्कि जैसे अनिल सर बोल रहे थे कि वैल्यूज का साइंटिफिक रीजन भी ढूंढे कि इसके पीछे क्यों ऐसा बोला जाता था कि झुककर माँ बाप को सवेरे प्रणाम करने से आपके क्या फायदा होता है। उसका बच्चे को जब रीजन दिया जाएगा, और आई थिंक वो प्रीच नहीं किया जाएगा, इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ऐसी चीजें प्रीच करने से कभी भी नहीं आएंगी हम सबको, लेकिन हमें हाँ इम्प्लीमेंट करने बिल्कुल, पर इस वक्त साइंटिफिक ध्यान रीजन भी देना आप पड़ेगा। उनको बताएं कि हमारे बिल्कुल। हर वैल्यूज के पीछे एक साइंटिफिक रीजन भी है। हमारे जितने भी क्या कहते हैं, पूजा पाठ रिचुअल्स होते हैं, उनके भी हर रिचुअल्स के साइंटिफिक रीजन है। जैसे बिल्कुल। सर बात कर रहे थे प्रकृति की, तो हम प्रकृति की पूजा क्यों करते हैं, उसके भी साइंटिफिक रीजन है। तो हमको इन इन सारी बातों को बच्चों के पास लेके जाना पड़ेगा, और उसी माध्यम से, जैसे मैंने पहले कहा, कि जो बच्चे लेना चाहे जिस माध्यम से। जी अगर एक बस आप लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जी एज अ पेरेंट, मैं भी एक पेरेंट हूँ, मैं स्कूल पे सिर्फ निर्भर नहीं रह सकती कि वो मेरे बच्चों को भारतीयता के बारे में जानकारी देगा या उन्हीं की जिम्मेवारी है। अगर एज अ जी पेरेंट मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहती हूँ, तो मैं अपने बच्चे को किस तरह के आईकेएस मटेरियल से इंट्रोड्यूस कर सकती हूँ? पहले हाँ। महाभारता या रामायणा, या नहीं नहीं, कितना पीछे जा ये सकती हूँ, वेदास, उपनिषद, मुझे मैम कितना आप पीछे बहुत जाना है? पीछे जा सकती हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि हमारा बच्चा, आप किस एज के बच्चे के पेरेंट्स हैं। हम्म। हमारे पास ये भी बहुत कुछ है। हम जब बहुत छोटे बच्चों को सिखाते हैं, तो हमारे पास पंचतंत्र है, पंचतंत्र की कहानियां है, हमारे पास हितोपदेश की कहानियां है। तो हम इन सब से शुरू करते हैं, क्योंकि अभी जो है, कार्टून्स भी क्यों बने, कि हमारे जो छोटे बच्चे हैं वो क्या कहते हैं, पशु पक्षी की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो पशु पक्षी की कहानियों के माध्यम से हमारे पंचतंत्र में बहुत कुछ कहा गया है, बहुत हम्म। कुछ।
हितोपदेश में बहुत सारी बातें, सिर्फ वैल्यूज ही सिखाए गए हैं इन सब कहानियों के माध्यम से। तो हम छोटे बच्चों को वो सिखा सकते हैं। उससे बड़े हुए तो हम रामायण पे जा सकते हैं। उससे बड़े हुए तो हम थोड़ा महाभारत की कहानियां, रामायण की कहानियां, जो कहानियां उनके छोटे छोटे अंश को लेके उनको सिखा सकते हैं। फिर हम थोड़े से बड़े हुए, जब हमारे बच्चे उनके समझ में आने लगे, वो समझने लायक हो जाए, तो हम वेद, उपनिषद, इन सब की कहानियों पे जाते हैं। जैसे नचिकेता की कहानियां हुई, इन सब के माध्यम से हम उनको और भी ज्यादा वैल्यू सिखा सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम कर सकते हैं कि हम किस एज के माता पिता हैं। और हम, मुझे लगता है कि आपने बिल्कुल सही कहा कि हम पूरी तरह स्कूल पे डिपेंड नहीं कर सकते हैं, डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं पूरी तरह कि सारे वैल्यूज भी सिखाए, सारे ज्ञान भी हमें स्कूल से ही मिले। हमें भी थोड़ा सा काम करना पड़ेगा उस तरफ। हाँ, कि हाँ, हम उस मटेरियल को ले कहीं से, या हम भी थोड़ा पढ़ें, हम भी थोड़ा जाने कि हमारे जो बुजुर्ग हैं वो किस तरह की बातें हमें सिखाया करते थे, उसको ही हम इकट्ठा करें और वही सब बातें हम उनको, अपने बच्चों के तक ट्रांसफर करें। हम भी एक ब्रिज का काम कर सकते हैं कि जो हमारे जनरेशन है और जो हमारे बच्चे हैं, उनके बीच में हम एक अलग जनरेशन है, तो हम भी उनके लिए ना एक ब्रिज का काम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम। और मैं ये समझ रही हूँ कि जैसे हम जनरेशन टू जनरेशन वेल्थ देते हैं, ये ऐसी बिल्कुल। वेल्थ है जो उनको जीना भी सिखाएगी। उनको जीने से जैसे अनिल सर बोल रहे थे कि अर्थ के लिए, प्लैनेट के लिए अवेयर होना भी सिखाएगी, अपनी बिल्कुल। जिंदगी के हर एक एक्शन के लिए अवेयर होना सिखाएगी। साथ ही उनके वैल्यू सिस्टम को इतना स्ट्रांग करेगी कि आई थिंक आगे आने वाले लाइफ के जो चैलेंजेस हैं, बच्चे उनको बहुत अच्छी, बेहतरीन ढंग से IKS के माध्यम। And any audience questions, anyone who would like to ask the question, because we are just going to close Ma'am, the just session in 10 minutes. Yes, ma'am. Yeah, ma'am, Rima. Yes, ma'am. can speak for 1 Yes. minute so that I can Yes, sir. conclude. Yes, sir. Yeah. Please, sir. Okay, Please. आपका ये क्वेश्चन मुझे बड़ा मोहक लगा जब आपने पूछा कि किस प्रकार का हम मटेरियल दे सकते हैं बच्चों को। मैडम ने उत्तर दे दिया है। मैं उसका एडिशन एक और मैं बढ़ाना चाहूंगा। इफ द स्टूडेंट्स आर इन द हायर एजुकेशन, kindly introduce them to the IKS topics like Rasa Shastra, Indian chemistry, like Bhubhautiki, geochemistry, like physics, Indian physics करके केरला स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। मैं अपने इंजीनियरिंग के छात्रों को ये हमेशा पूछता हूँ क्लास में जाकर के, हमारे इंडियन कल्चर की क्लास में, कि आप अपना सेलफोन उठाओ, आप अपना कैलकुलेटर उठाओ, मुझे बताओ पाई वैल्यू क्या है। So everybody will say pi value कितना है, something like they will say up to something like 7 or 8 numbers, right? दशमलव के पश्चात लगभग 10 या 11 अंक बोलते हैं। I will give you a Sanskrita text which was written in 12th century in South India, particularly in Kerala by Ramavarman. He is talking about the pi value in a form of Sanskrita shloka. How fascinating it would be. How fascinating it would be for a kind of engineering student, or for a kind of there is no question of degree here. Anyone who wants to learn something from Indian thing, ancient Indian thing, mathematics is the first thing to learn. क्योंकि हमारे पास जो गणित है वह दुनिया को रास्ता दिखाने वाला गणित है। ऐसा वैसा गणित नहीं है हमारे पास। हमारा गणित जाकर के अलजबर हुआ था, और अलजबर से जाकर के यूनान में अलजिब्रा बना, और वही बाद में यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम के रूप में आज हम 9th या 10th स्टैंडर्ड में जो पढ़ते हैं, वह पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास शुल्ब सूत्र था जो संस्कृत में बना हुआ था। और ये जो मैं केरल का जो गणित बोल रहा हूं, यह एक कोडिंग सिस्टम है। आप नंबर के माध्यम से, अंकों के माध्यम से मैथमेटिक्स सीख सकते हैं, वेद गणित सीख सकते हैं। अंकानाम वामतो गति ही, बहुत सारे नियम हैं उसके। 10 मिनट में या 15 मिनट में ये क्लास खत्म नहीं हो पाएगा। इट इज ए रियल फूड फॉर द ब्रेन। So it's Sanskrit. First of all, we have to buzz the idea of Sanskrit is a religious language. No, Sanskrit is the most scientific language on the earth. उसकी संतान होने के नाते सारी भारतीय भाषाएं इतनी ही वैज्ञानिक है। हमारी वर्णमाला में हमारे फेफड़ों को एक्सरसाइज देने का सिस्टम छिपा हुआ है। ये बच्चों को बचपन में पता नहीं होगा।
जब उच्चारण करते करते आप हिंदी की बात ही करिए, आप 13 ओवेल्स को 36 कॉन्सोनेंट्स को क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि इसका एक सिस्टम है, क ख ग घ इंग ज छ ज झ ञ, इसके पीछे एक वैज्ञानिकता है। इस वैज्ञानिकता को यदि हम बच्चों को सिखाएंगे तो बच्चों को कुछ झूठी मूठी कहानियां बोलने की कोई जरूरत नहीं है, वो अपने आप सीखेंगे। दिस इज माय ओपिनियन। सर, मेरे को आपकी बात सुन के ये समझ जरूर आ रहा है कि ये क्रियोसिटी ड्रिवन करने की हमें जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि वो मटेरियल अपने आप में इतना एंगेजिंग है और इतना इनोवेटिव है जो बच्चे को खुद ही आई थिंक क्यूरियस बनाएगा आईकेएस की तरफ। बस हमें सिर्फ उनको रास्ता दिखाने की जरूरत है, और वो रास्ता दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं श्री अरबिंदो सोसाइटी के माध्यम से इस पैनल डिस्कशन से। सो एनीवन हु वुड लाइक टू, विल टेक जस्ट वन क्वेश्चन बिकॉज बाय 12:15 वी विल क्लोज दिस पैनल। सो रिमिता मैम। Yes, ma'am. Thank you so much for giving me this opportunity. Very good afternoon. This is Rimita Deborah. My question would be to any of the panelists could answer this. So we take great pride in the ancient textbooks, classics, literature, and we draw richly from those texts and the traditions. Now, how are we preparing the soil today to create such books which are going to be new but rooted in Indian knowledge system? Now, are we only looking backward, or are we also enabling the next generation to produce such kind of classics for the future? Nageshwar I sir think also Nageshwar Rao sir wants to give the answer. Yes. See, there was a very ancient poet called Kalidasa. His name was Kalidas, and he was said to be born at Ujjain, which is the present Madhya Pradesh area, central provinces of India. He said one line. I don't want to quote all the full shloka. Purana mityeva na sadhu sarvam. He spoke this in somewhere around 5th or 6th AD. पुराण मित्येव न साधु सर्वम. अगर पुरानी चीज है सब कुछ भला है ऐसा मत सोचिए, बोल रहा है कालिदास, जो कि सबसे प्राचीन कवि है हमारे पास संस्कृत साहित्य के. सो एंशियंट करके सब कुछ लेने की कोई आवश्यकता नहीं है. If it is ancient, it is not necessarily to be, contextual, meaningful for us in the present area, in the present generation. As I told before, हमें उस समय के उन चीजों को, मतलब उन ग्रंथों को लेना चाहिए. Those books or those texts have to be taken, which are today also very much useful. For example, you take the Rasa Shastra, there are some chemical combinations which make the iron rustless, which make the iron, the steel, the best steel was produced in India. Now IKS division itself is trying to give projects on this particular area. हम आज के आधुनिक केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स को हम ये सिखाएं, अरे भाई हमारे पास भी रस शास्त्र है. You see that material, how it was produced. This is not something related to dharma, or not this thing. This is pure science. How can we attract those things? Have to be sit together. एक आधुनिक मतलब ज्ञानी भी बैठना है इसमें, और एक प्राचीन संस्कृत को भी बैठना. And it is the necessity of the art. This is the need of the art. दोनों को बैठ करके ये पाठ प्रणाली तैयार करनी होगी. Yes, texts are available. There are texts. There is only need to inculcate the jigyasa. If the interest is there, then everything will come in the right place. Thank you so much, sir. I think Ramita ma'am, आपके क्वेश्चन का आंसर दिया सर ने. So just to conclude this panel discussion, which was very fruitful, very insightful and very effective also, I would say कि मेरी जो समझ बनी है वो ये है कि IKS एक नॉलेज नहीं है, IKS एक एक्सपीरियंस है. उस एक्सपीरियंस को बच्चे इमेजिन भी कर सकते हैं, फील भी कर सकते हैं, अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं और बिलोंग भी कर सकते हैं.
हमारे लिए एज एन एजुकेशनिस्ट ये एक मुश्किल जर्नी नहीं रहने वाली है डेफिनेटली, पर आसान भी नहीं रहने वाली है। इन चीजों को मेन स्ट्रीम में लाना, मेन स्ट्रीम के साथ जोड़ना, ये एक स्ट्रगल जरूर हो सकता है, लेकिन वो हमारी संकल्प को नहीं रोकने वाला है। हम उस संकल्प के साथ डेफिनेटली आईकेएस को एक मंच देंगे और देते रहेंगे, ताकि बच्चे अपनी रूट्स से ग्राउंडेड हो सके, बच्चे अपने एनवायरनमेंट से कनेक्ट हो सके, बच्चे अपने इमोशंस की को समझने की मेच्योरिटी गेन कर सकें और दुनिया को देखने का एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव गेन कर सकें। So I close this session with lot of gratefulness and lot of thankfulness to our esteemed panelists and for their insightful contribution to make this IKS happen uh, in India right now, I can say, or in the education or in the curriculum. Thank you so much. And now we will be starting with our third panel. Thank you. And the topic of the third panel is IKS in art, aesthetics, and design creativity, rooted in India's culture. Okay, so it is a lunch break right now. We are having a lunch break for 1 hour, and we will be, meeting our next panelist at 1:30. The topic of the next panel would be IKS in art, aesthetics, and design, creativity rooted in India's cultural wisdom. So I take this pleasure to, say a goodbye, not a goodbye, I will say, but a very, very gratefulness. Thank you to all the panelists for connecting with us and giving us the enlightenance with the roadmap, how we can go through IKS. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you Thank for you, the sir. opportunity. Thank you. Thank you, sir.
Recording in progress.
The screen is visible? No. Hello. Yes, I'm trying to share the screen.
नमस्कार सभी को। तो आप सभी का पुनः स्वागत है और जो हमारे साथ में नए मेहमान हमारे जुड़े हैं उन सभी का भी स्वागत है। तो इस पैनल के लिए जो हमारे साथ में पैनलिस्ट जुड़े हैं एक बार देखते हैं कौन कौन आ गए हैं हमारे साथ में। डॉक्टर नूरिमा जी हैं हमारे साथ। जी सर। जी जी, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर नूरिमा जी। यास्मीन जी हैं असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत साहित्य KBV संस्कृत एंड AS यूनिवर्सिटी से हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी थैंक यू सर। जी, डॉक्टर रामनाथ झा जी हैं हमारे साथ। डॉक्टर रामनाथ झा जी। चलिए सर जब जुड़ते हैं तो एक बार परिचय करेंगे। डॉक्टर शिखा जी हैं असिस्टेंट प्रोफेसर श्रीदेव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी। डॉक्टर शिखा जी। और हमारे साथ में आज इस पैनल में डॉक्टर लक्ष्मी नारायण जोशी जी हैं। तो अभी हमारे साथ सभी पैनलिस्ट नहीं जुड़ पाए हैं, कुछ और मिनट इंतजार करते हैं और उसके बाद में हम आज भी ये जो भी पैनल है इसको आगे बढ़ाते हैं। जी तो जब तक अन्य मेहमान हमारे साथ जुड़ते हैं तब तक जो पैनल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं उन्हीं के साथ चर्चा शुरू कर देते हैं। तो मैम जो हमारा आज का जो टॉपिक है जिस पे अभी हम चर्चा करने वाले हैं वो टॉपिक जैसा आपको पता होगा IKS इन आर्ट एस्थेटिक्स एंड डिजाइन क्रिएटिविटी रूटेड इन इंडियाज कल्चरल विजडम। तो सबसे पहले इस विषय पे जब हम बात कर रहे हैं कि कला सौंदर्य शास्त्र और डिजाइन में भारतीय ज्ञान परंपरा और भारत की सांस्कृतिक ज्ञान ज्ञान धरोहर में निहित सृजनात्मकता। तो सबसे पहले इस पे चर्चा शुरू करने से पहले मैं जानना चाहूंगा कि इस विषय पर जो भी आप हमें बताना चाहें, जो भी आपके विचार हैं, तो मैम। नूरिमा यास्मीन जी हैं हमारे साथ। डॉक्टर नूरिमा जी। मैम क्या आप सुन पा रहे हैं? जी सर। जी सुन पा रहे हैं सर? जी जी, नमस्कार मैम। जी सर, एक्चुअली थोड़ा शादी का माहौल है तो थोड़ा यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है सर। IKS तो हमारा मतलब जो IKS आजकल बहुत ज़रूरी हो चुका है। IKS में जो मतलब इंडियन नॉलेज सिस्टम का जो ज्ञान परंपरा है उसमें अगर हम लोग ये करते हैं तो उससे आज जो NEP सिस्टम हुआ है उस NEP सिस्टम हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, नई जनरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि
ऐसे इससे प्रैक्टिकली कुछ सीख सकते हैं, जो थियोरिटिकली नहीं, प्रैक्टिकली बच्चे लोग या नए स्टूडेंट्स, स्कॉलर्स, ये सब जब प्रैक्टिकली किसी में इन्वॉल्व होगा तो उनका ज्ञान से साथ कुछ स्किल भी डेवलप होगा उन लोगों का। तो इससे हमारा जो वर्तमान में जो समाज का स्थिति है, इसमें भी IKS बहुत IKS का प्रभाव बहुत ज़रूरी है, क्योंकि IKS से जुड़े बिना हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। इंडियन नॉलेज सिस्टम या भारतीय ज्ञान परंपरा में जो निहित है, उससे ही हमें आगे चलने में, आगे अपना अच्छी तरह से ये अच्छी तरह से आगे बढ़ सकते हैं बच्चे लोग। जो हमारा संस्कृति है, जो कला है, ये सब इंडियन नॉलेज सिस्टम में ही इन्वॉल्व है। अगर इंडियन नॉलेज सिस्टम को हम अच्छी तरह से समझेंगे तो हम अपने संस्कृति को, अपने कला को, अपने देश के जो ट्रेडिशन है, ये सब अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो बच्चे लोगों का जो स्टूडेंट्स है, वो लोग बेसिकली आजकल मोबाइल, टीवी ये सब में बिजी रहते हैं। लेकिन जो हमारा NEP सिस्टम हुआ है जब से, तो NEP सिस्टम बहुत अच्छा है। NEP सिस्टम से बच्चे लोगों का जो प्रैक्टिकली भी वो लोग डेवलप हो रहे हैं, उनका स्किल डेवलप हो रहा है। तो मैं कहूँगी जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है, इंडियन नॉलेज सिस्टम से जो नया NEP सिस्टम हुआ है, NEP सिस्टम बहुत ज़रूरी है। और NEP सिस्टम में बच्चे जब आगे बढ़ेंगे तो उन लोगों को अपने ट्रेडिशन के बारे में, भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में बहुत नॉलेज होगा। तो ये सब विकास के लिए बहुत ज़रूरी है बच्चों के। और सर, मतलब अभी थोड़ा सर मेरा ये करने में दिक्कत हो रहा है। जी जी। तो ठीक है मैम, मैं समझ रहा हूँ। अगर भारतीय ज्ञान परंपरा के आधार पे बात करें तो कला के क्षेत्र की बात करें, या जो हमारे सौंदर्य शास्त्र के आधार पे हम बात करते हैं, या जो सृजनात्मकता के आधार पे बात करते हैं, तो भारतीय ज्ञान परंपरा को किस तरीके से हम इन चीजों में देखते हैं, या मैं कहूँ कि इस सवाल तक आने के लिए कि हम कला में, सौंदर्य शास्त्र में या डिजाइन में किस तरीके से भारतीय ज्ञान परंपरा को देखते हैं, इसे देखने से पूर्व हम ये देखें कि भारतीय ज्ञान परंपरा में इनका अपना एक महत्व है, अपना एक स्थान है। तो उस इन चीजों को हम भारतीय ज्ञान परंपरा में किस तरीके से देखते हैं, तो एक एक करके अगर बिंदुओं पे बात करें, तो कला के क्षेत्र में या कला के रूप में हम भारतीय ज्ञान परंपरा में कौन सी विशेषताएं देखते हैं, या आपके विचार क्या है कि भारतीय ज्ञान परंपरा में कला क्या है, क्या उसकी विशेषताएं हैं, किस तरीके से आप देखते हैं उसे? सर, कला का हमारा कला का जो मेन उद्देश्य है, वो है भाव, संवेदना आदि को जागृत करना। और अर्थात मतलब तो विस्तार और सूक्ष्मता, ये सब जैसे अजंता की रेखाओं से लेकर बिल्कुल। सोल युगीन नटराज की मूर्ति तक हर कृति एक दार्शनिक संदेश देती है। बिल्कुल। इसीलिए सौंदर्य वो है जो भीतर से ऊर्जा जगाते हैं। सौंदर्य सिर्फ देखने का ठीक है। चीज नहीं है सर। ठीक है। सौंदर्य जिसमें कहानी और संवेदना ये सब होते हैं। और ये सब हम नूरिमा जी, आपकी आवाज बीच ये बीच सिस्टम से में। हाँ जी सर, यहाँ नेटवर्क का इशू है बहुत। हाँ जी, मैं गांव समझ गांव पा रहा हूँ एरिया जी। है सर। हम्म। हाँ, तो जैसे अभी अभी आपने उदाहरण दिया कि अजंता एलोरा की गुफाओं में जो चित्र देखने को मिलते हैं, या वो नमूने हमें देखने को मिलते हैं, वो कला के रूप में जो हमें मिलते हैं,
तो जी बिल्कुल सर। सही कि हाँ, बिल्कुल। तो भारतीय ज्ञान परंपरा में अगर हम देखें तो ऐसा नहीं है कि अब हमारे देखते में कुछ कला में कुछ ऐसे बदलाव हुए हैं जो मॉडर्न एज में आके हमारे सामने आए हैं, अपितु पुरातन काल से ही हमारे यहाँ जो ये कला है, अगर भित्ति चित्रों की जिनकी आप बात कर रहे हैं, तो इस संदर्भ में अगर हम देखें तो हमारे यहाँ ये ज्ञान परंपरा में ये कला देखने को शुरू से मिलती है। और इसके अलावा भी सैकड़ों और हमारे पास में उदाहरण हैं। अजंता एलोरा की 12, 13 या 17 गुफाएं जितनी भी अभी तक आइडेंटिफाई हुई हैं चीजें, उनके अतिरिक्त भी और अगर देखते हैं तो बहुत सारी और जो एग्जाम्पल आपने दिया, चाहे वो नटराज जी की मूर्ति की बात की है या अन्य मूर्तियों की। तो जब हम मूर्तियों की बात करते हैं और कला की बात करते हैं, तो हेलो, भारतीय ज्ञान परंपरा में हेलो गुड आफ्टरनून। आप सुन पा रहे हैं? ओके, यस। जी, नूरिमा जी, आप सुन पा रहे हैं? न- जी सर। जी, आप सुन पा रहे हैं? जी जी, अभी सुन पा रहे हैं सर। हाँ। तो अगर जैसे आपने अपनी बात के बिल्कुल अंत में बताया कि कैसे हम भित्ति चित्रों से हम मूर्ति कालीन युग तक या मूर्ति जब तक बनने लगी तब तक हम अपनी पूरी ज्ञान परंपरा को उसमें देख पाते हैं। तो मूर्तियों के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो भित्ति चित्रों में तो सीधे तौर पे चित्र बना दिए जाते हैं या उस तरीके से अपनी कला को प्रदर्शित कर दिया जाता है। तो और क्या जो मूर्ति कला है उसको हम किसी और संदर्भ में देख पाते हैं? क्या उसको हम भित्ति चित्रों से अलग किसी रूप में देख पाते हैं? सर, भारत की जो शास्त्रीय कला है वो वैज्ञानिक अनुपात और सौंदर्य सिद्धांतों पर आधारित है। जैसे शास्त्रीय कला इस रूप में देख सकते हैं, जो अजंता इलोरा भित्ति चित्र है और सोलकालीन जो कांस्य मूर्ति चित्र आदि ये सब शामिल है। और शास्त्रीय कला में अजंता का इलोरा और कालीन कांस्य मूर्तियां और मिनिएचर पेंटिंग्स और दक्षिण भारतीय मंदिर वास्तु ये सब शास्त्रीय कला में शामिल है। ओके। सर, नेटवर्क का कुछ ये हो रहा है प्रॉब्लम। नहीं नहीं जी जी, मैं सुन पाया आपको। तो चलिए इनके ठीक है, थैंक यू मैम। अभी फिर आगे बढ़ते हैं चर्चा में। सो रमा कल्याणी मैम। यस, जी नमस्कार। सो वी आर नमस्कार। डिस्कसिंग ऑन IKS in art, aesthetic and design, creativity rooted in India's cultural wisdom. ओके, Yes ma'am, so please share your thoughts. और मे आई लीव? No ma'am, please. सर, सर एक्चुअली घर में ये शादी का ये I है, know. बहन का Okay. बाराती लोग आ रहे हैं। ठीक है मैम। ये अच्छा होगा कि आप हमारे साथ इस पैनल में जुड़े रहें, लेकिन फिर भी अगर कोई अ, ऐसी परिस्थिति है कि आपको जाना होगा तो हम चाहेंगे कि आप जुड़े रहें, चाहे आप सुन सर, लें या जी जब भी सर। आपके लिए संभव हो आप दोबारा इसमें जुड़ जाएं। जी सर जी, जी थैंक यू सर। pronouns to everyone. Good afternoon. जी Actually, in India, in Bharat, the art and culture is right from the beginning. As and when the man has come to this earth, art and culture also has come along with him.
And in Bharat, in the very ancient period, like 5th century AD itself, Bharat Muni has written the Bharatanaट्य Shastra. You can see in that, not just like anything, everything, how the rasa, that is the aesthetic sense, should be there. How it is mingled with Natya, and how the hero should be, how the heroine should be, how the subordinate artist should be. For every single thing, there is a definition. What are the qualities of a Nayaka? What is the quality of a Nayika? What is the quality of a friend? And everything it is there. Even the quality of a Vidushaka in a drama. Every quality, there are 4 varieties of Nayaka, there are 4 varieties of Nayika, and 4 varieties of Upanayika. Everything is there. And if you go through the details, that will be suitable even today. If for a Nayaka, if he is a Dhirodhata, if he is a Dhira all that is available. You can find each and every hero or heroine even today, not for the cinema, but for the traditional Nataka and Bharatanatyam, etc. Even if you can see how a dancer should be, if you go make a one-to-one correlation of today's Bharatanatyam dancer and those days what he has defined, everything will be suitable even today. So you can easily, when if you are teaching a fine art student a music or dance, you can very well quote from Bharatanatyam Shastra. And also when you teach music, there is a book called Sangeeta Ratanakara, written a few centuries earlier. But in the Sangeeta Ratnakara, you can see the Tala Prastara, Kana Prastara, everything, how many the full combinatrix come into that. How a swara can be displayed into how many tanas, how many talas, all that is described. That will be helpful for the Kalpana swaras, everything. If the Sangeeta Ratnakara, the particular chapters are included for the music student, or similarly the Natya Shastram, some certain chapters like the 6th chapter, which is based on rasa, the sentiment, and also how the qualities of all the particular characters. These chapters are included for them, the fine students. It will be very useful for them also, how they should conduct themselves. All this will be included for them. So in that way, the earliest Indian knowledge system, that is the very first book on Bharatanatyam, written by Bharatamuni, Bharatanatyam Shastra, and the Sangeeta Ratnakara, all these are even suitable in today's context, in today's student. And this, even for mathematics student, this Sangeeta Ratnakara is useful because it all talks about combinatrix, how combinatrix is involved in music. That is useful for the mathematics students also. So our music and dance, everything is imbibed in us right from the Vedic age, right from the very early stage, and all that is suitable even today. Anything else you want to ask particularly? No, ma'am, no. Thank you so much. Okay. हाँ, एक बार हम देखते हैं हमारे साथ बाकी पैनलिस्ट और जुड़े हैं। Yeah. क्या डॉक्टर रामनाथ झा जी हमारे साथ जुड़े हैं? रामनाथ झा जी, डॉक्टर शिखा हमारे साथ जुड़ पाए? डॉक्टर लक्ष्मी नारायण जोशी जी,
चलिए ठीक है. So Rama Kalyani ma'am, I have a question or a topic for this panel also. So when we are talking about Natya Shastra, yeah, when we talking about any other text from our ancient time, we can see the art and many other creative things that are inculcated in that particular time. So is that also relevant for this time, for when we are talking about the NEP, or when we talking about the new curriculum or the students as per today's era? So is this relevant Yes, for yes. today's students also? Yeah, sure. But the thing is, actually, if you see the primary or secondary education, with some schools, they have fine arts also. They have not just maths, physics, chemistry, and all. Some they have for the that is they say group 3, group 4, and all. They have fine arts. For them, it is useful. See, probably the Western dance, everything would have changed. But basically, the Bharatanatyam or the Carnatic music or North Indian music, the basic are not changed. So, in whatever books you find in the olden days, that is followed even today. And by knowing the actual original writings, today's performing artists also, they can refine themselves. Oh, this should be in a particular form, not just learning. They just learn from a particular guru, particular style, etc. But when they see the original text and what are all the qualities or this one given there, if they know that from the original, that will be helpful for them to refine their performance. That is always there. And there are not only these are the earliest works, and later on, there are few more works which are written on each and every art. And I forgot the name, but there are books on Chitrakala also. And there are books on Chitra Bandha, which is called, the verses are written in the form of the verses can be reframed in the form of a chitra, like a Ashtadala Padma, Padma Bandha, they call it. Ashtadala Padma Bandha means there will be 8 petals, and the verses can be arranged in the form of a lotus, and they will give the directions through which it will have a meaning. The verse will have maybe a prayer verse, or maybe it will be conveying something, but it can be arranged in the form of a chitra. They call it Chitra Bandha. And there are quite a Churika Bandha, means it is like a sword, and it is like a Hara Bandha, it will be like a Hara. A verse which can be rearranged in the form of a chitra. So, and there are a lot of books on actual painting, the color combinations. Even the old Tamil books are there. Based on that only, you have in the Kutralam, there is one cave where they have the original colors, how they can, from the flower, from the seeds, how they can create the original colors, like all, not only the basic colors like green, red and all, but even purple and different colors. With using that, they can paint the this one. For that, there are books. How to prepare colors with the different flowers, different seeds, etc. So there are lot of ancient books like that, that will stay permanently. In the olden days, whether if you have seen in the South Indian temples, on the roof, there will be a lot of paintings, and which were drawn around some 500, 800 years before, even they are fresh today. Now, when they do the Kumbhabhishekam again, they repaint it. But the repainted ones will fade away. But the original ones, which were done with the flower colors and seed colors and all, so after 5-6 centuries also, they are finely looking on the top of the ceiling. On the top of the ceiling, there are paintings are there. A lot of beautiful paintings, and you can see all the
the Shilpam also, that is all the fine figures, how to carve with Shilpa, etc. Shilpa Sastra also, a lot of books, architecture, Shilpa Sastra, all this. And even that, whatever is written some centuries ago, those are even suitable today. Seeing that the what we call as Tapati, the one who carves the deities in the temples, they're called Tapatis, they still follow the old tradition, old textbooks. Through that only, seeing that they carve even today's deities. It is happening even today. Especially in art form, whatever was existing some 10 centuries, 12 centuries, still it continues. They have not deviated much from that. ओके, Yes. थैंक यू सो मच मैम। Thank you. तो हमारे साथ में लक्ष्मी नारायण जी जुड़ चुके हैं। हाँ, डॉक्टर लक्ष्मी नमस्कार। नारायण जोशी। हाँ, नमस्कार। मैं एक दो बातें कहना चाहता हूँ यहाँ पर। जी जो हमारे शास्त्र की बातें हैं, वो हमेशा ही विज्ञान उनको अब सिद्ध कर रहा है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा वैज्ञानिक हैं। कुछ उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। अगर हम अपने शास्त्रों को देखें, योग के शास्त्रों को ही देखें, वहां बड़े विस्तार से चिकित्सा की बात हम बच्चों को पढ़ाते हैं। घैरण्य संहिता हो, हठ प्रदीपिका हो, किस प्रकार से हमारे षटकर्म हमारे शरीर में स्थित वात पित्त कफ को संतुलित करते हैं, इसकी पूरी चर्चा हम लोग अपने शास्त्रों में अध्ययन करते हैं। और नाड़ी शुद्धि जो सबसे महत्वपूर्ण अंग योग का है, उसको अगर हम देखें, आप देखिए कि हमारे हमारे शास्त्र प्यूरिफिकेशन की बात करते हैं, शुद्धिकरण की बात करते हैं, और आहार की बहुत बड़ी चर्चा हमारे वहां पर हुई है। और आप देखेंगे कि आज कैंसर को, अगर हम कैंसर के ऊपर अगर देखें, तो उपवास के महत्व पर नोबेल पुरस्कार तक मिले हुए हैं। यानी जो हमारे शास्त्र का नियम है फास्टिंग का, आज वो इतना वैज्ञानिक हो गया है कि वो हमारे कैंसर सेल को खत्म करने में मदद करता है। तो शास्त्र की चर्चा को वैज्ञानिक आधार देते हुए हम ये कह सकते हैं कि व्यवहारिकता में जब कभी भी हम इनका वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करें या समाज के पक्ष में इसको अवलोकित करें, तो सब चीजें पूरी की पूरी 100% अद्भुत है। अभी हम लोग इम्यूनिटी की बात कर रहे थे कोविड-19 में, तो गट हेल्थ की बात करें, और हमारे वहां तो सारा नाभि को कंदियोनी स्थान को बड़ा महत्व दिया गया है। और हमेशा कहा गया है कि अगर आपका विचार अपवित्र है तो आप स्वस्थ नहीं हो सकते। आज ये सारा साइंस थ्रू द नेगेटिव थॉट्स वेगस नर्व के थ्रू गट हेल्थ को प्रभावित करता है, कि पूरे साइंटिफिक पेपर्स आज हमारे पास हैं। If we are suffering with the negativity, तो ऑटोमेटिकली the level of cortisol is increasing right away. तो वो इतना नेगेटिव हो जाएंगे, ये सारे नेगेटिव इफेक्ट ऑफ कॉर्टिसोल के हैं, और इसकी वजह से अब आर्टरीज श्रिंक होने लगी हैं। तो कैन यू इमेजिन, भोजन मंत्र की जहां बात की है कि भोजन की पवित्रता को देखते हुए ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु, जहां हम गुरु शिष्य परंपरा की भी बात करते हैं, बिना प्रार्थना के हम स्वीकार ही नहीं करते। ये परंपरा हमारी वैदिक परंपरा है, एशियन परंपरा है, जिसकी वैज्ञानिकता को आज हम महसूस कर पा रहे हैं। तो एक एक अंग को अगर आप देखें, तो आप देखेंगे कि वो सारी बातें जो शास्त्र कहता है, आज उन्हें विज्ञान अपनी कसौटी पर रख रहा है। शादी की हल्दी की रस्म हो, या हम कच्ची हल्दी के सेवन की बात करें, गुड बैक्टीरिया को इंप्रूव करने के लिए, आज सारी चीजें आप देख रहे हैं कि हमारी करक्यूमिन की बात ना हमें ना मिलती हो, परंतु हल्दी का सेवन जरूर मिलेगा, उसके लाभ जरूर मिलेंगे। तो ये हमारी परंपरा है, और आज जो पूरे विश्व इसको अपना रहा है, यही हमारे शास्त्र की विजय है, सनातन की विजय है। और ये प्राच्य विद्याएं आज भी बहुत अधिक वैज्ञानिकता का इंतजार कर रही हैं कि इनको हम विज्ञान की कसौटी में कसे और उसका लाभ सबको मिले, ऐसा मेरा मानना है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, आपके पधारने से पहले जो मैम ने कुछ चीजें बताई,
तो जो हमारा आज का विषय है, जैसे आपने भी कुछ कुछ चीजें जोड़ी कि कला, सौंदर्य शास्त्र और डिजाइन में भारतीय ज्ञान परंपरा किस तरीके से हम देख पाते हैं। तो मैम ने कुछ उदाहरण दिए, चाहे वो भित्ति चित्रों के नूरिमा जी ने दिए हों या रमा कल्याणी मैम ने बताया नाट्य शास्त्र को लेकर पूरा एक चीजें, या जो दक्षिण भारत के मंदिर हैं उनमें किस तरीके से वो कलर कॉम्बिनेशंस और कलर क्रिएशंस को लेके उन्होंने चीजें बताई, और बताया कि किस तरीके से आज की जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं फीकी पड़ जाती हैं प्राचीन काल में जो हमारे वैदिक परंपरा की चीजें हैं। वहीं पे जब आपने बात करी तो चाहे आपने वात पित्त कफ के विषय में बात करते हुए बात की, या हमारी शल्य चिकित्सा तक की भी कोई भी अगर हम बात उठा लें, तो चाहे सुश्रुत संहिता की बात हो, चाहे चरक संहिता की बात हो, चाहे इसी तरह के अन्य जो ग्रंथ हैं, तो जाहिर है मॉडर्न एज में बहुत सारे हमारे ऐसे आज कहने को साइकोलॉजी से संबंधित बहुत सारी बातें हैं। जैसे आपने बोला विचारों की, जब आपने बात करी तो साइकोलॉजी का भी जो आधार है, जितना मैं जान पाया कि साइकोलॉजी की में भी शुरू में किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विषय में बात करते हुए सबसे पहले यही आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये वात रोगी हैं, पित्त रोगी हैं या कफ रोगी हैं। तो इसी के आधार पे अगर हम आयुर्वेद के हिसाब से भी बात करें तो उनके अपने पूरे औषधीय तरीकों से या औषधियों से उनका अपना एक पूरा इलाज किया जाता है या उनको सहायता प्रदान की जाती है। इसके साथ साथ जो हमारा सवाल चल रहा है कि कला, सौंदर्य शास्त्र और डिजाइन या भारतीय ज्ञान परंपरा में हम सृजनात्मकता को किस तरीके से देखते हैं, या वर्तमान संदर्भ में हम भारतीय ज्ञान परंपरा की इन चीजों को कैसे आज की चीजों से जोड़ सकते हैं। मैं अपने बच्चे को, अपने वर्तमान समाज को या वर्तमान परिदृश्य में इन्हें किस तरीके से देखता हूँ। मेरी कला के रूप में मेरा साहित्य भी हो सकता है, मेरा नृत्य भी हो सकता है, मेरी अन्य चीजें भी, जो भी चीजें हैं वो सभी शामिल हैं। तो मैं एक बात एड ऑन भी करना चाहूंगा। एक्चुअली आज मेरी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ भी चल रही है और अभी 250 बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं। अभी इतना हल्ला हो रहा था, तो मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैं 2-3 बातें इसमें जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं योग का विद्यार्थी हूँ और मेरा मूल विषय नाड़ी विज्ञान है। मैं 2 बातें आज कला संस्कृति के विषय में जरूर कहना चाहूंगा। हमारी जो योग में हमारे मुद्रा विज्ञान है, अगर आप मुद्राओं को देखें जो नाट्य शास्त्र में भी उपयोग होती हैं, हमारे वहां भी मुद्रा विज्ञान उपयोग में होती हैं। और ये हमारी हस्त मुद्राएं अगर आप देखें, गायत्री की 24 हस्त मुद्राएं हैं, और हमारे वहां तो अभी जैसे आज के परिप्रेक्ष्य में बात करूं, हमारी पांचों उंगलियां पंच महाभूत को प्रदर्शित करती हैं: अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। या अगर मेरी अंगूठा मेरा अग्नि तत्व है, वायु मेरी ये इंडेक्स फिंगर है, फिर मिडल फिंगर है आकाश, फिर ये पांचों जो उंगलियां हैं पंच महाभूत के घोतक हैं। और जब हम इनका समायोजन करते हैं, यानी इनसे एक मुद्रा बना लेते हैं, आप यकीन करेंगे कि वो शरीर में कितने दिव्य इफेक्ट करती है, उनके लाभ। एक छोटा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। लिंग मुद्रा का एक उदाहरण है। ये लिंग मुद्रा एक सामान्य से लिंग मुद्रा है। लेफ्ट हैंड के अंगूठे को ऊपर रख लेते हैं, बाकी उंगलियों से इसे पकड़ के नाभि के पास रख लेते हैं। तो ये आपके शरीर में उष्णता को प्रदान करती है। और आपको मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मैंने कभी गर्म कपड़े नहीं पहने, मैंने कभी गर्म अभी भी नहीं पहने। एक बनियान, एक कुर्ता मेरा है और अभी तक नहीं पहने। इतनी सकारात्मक ये मुद्राएं हैं, प्राण मुद्राएं, हृदय मुद्राएं। अगर आप इसे देखें तो हाथ की विशेष स्थितियां जिनको आप बना के अपने अंदर अपने प्राणों को अंतर्मुखी कर सकते हैं, ये हमारे वहां पूरे मुद्रा विज्ञान में वर्णित है। और दूसरा, हमारे वहां पर अगर आप देखें, हर एक रंग को चिकित्सा के साथ भी जोड़ा गया है। सतोगुण प्रधान, रजोगुण प्रधान और तमोगुण प्रधान, 3 प्रकार के हम कहते हैं कि गुण हैं जो हमारे रंगों को भी थोड़ा सा मतलब अव्यवस्थित करने में समर्थ होते हैं। तो इसलिए सात्विक प्रवृत्ति में सफेद रंग होता है जो साधना का प्रतीक है, सतोगुण का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है और हमें शीतलता प्रदान करने वाला होता है। तमस प्रकृति हमारे जो डार्क रंग है, काला है, तमस का प्रतीक है। तो आप देखेंगे कि तमस में आप जैसे अभी हम दिसंबर है तो आप देखेंगे थोड़ा सा तामसिक प्रवृत्तियां बढ़ जाती हैं। और हम ऐसा भी मानते हैं योग के विद्यार्थी होने कारण कि थोड़े एक्सीडेंट बढ़ जाएंगे। ये धुंध के कारण नहीं, थोड़ी सी नकारात्मकता के कारण, अंधकार के कारण, जो शारीरिक हो सकता है, मानसिक हो सकता है। तो योग के माध्यम से, मुद्रा विज्ञान के माध्यम से, और जो हमारा, मैं तो उत्तराखंड में हूं, अगर केदारनाथ के मंदिरों को अगर आप देखें, इतनी बड़ी 2013 की आपदा आपके सामने है, ये तो प्रत्यक्ष है।
तो क्या उस शैली के मंदिर को 1 इंच भी परेशानी नहीं हुई है? आप अभी गूगल कर लीजिए, पुराने स्लाइड देख लीजिए, पूरे केदारनाथ में तबाही हुई, उत्तराखंड में तबाही हुई, ऋषिकेश तक परेशान लोग हुए, लेकिन भगवान का मंदिर क्योंकि प्राच्य वास्तुकला का मंदिर है, उसे कुछ नहीं हुआ। तो वास्तुकला जो हमारी है, ये प्राचीन वास्तुकला अगर आप देखें पहाड़ों में, आप केदारनाथ का मंदिर लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर सब कुछ नीचे तक तहस नहस हो रहा है, और वो मंदिर जो प्राचीन है उसको किस प्रकार से बनाया गया है बिना सीमेंट के कि वो आज तक चल रहा है। और हमारे वहां तो दाल से भी जो सीमेंट की जगह दाल भरी जाती है, बिल्कुल बिल्कुल दाल बिल्कुल। कूट के ना, तो हमारे प्राचीन मंदिर उस तरह से बने, पुरानी कुछ हवेलियां उस तरह की बनी हाँ है। तो अगर आप इसका प्रत्यक्ष देखना चाहें तो उत्तराखंड में आपका स्वागत है। और इतनी अच्छा सुकून बहुत है, मनो शांति के लिए भी ये बहुत अच्छे हैं। अगर आप यहाँ पर आएंगे तो ये सकारात्मक ऊर्जा और वास्तुकला का ही नमूना है, जिसको अगर आप देखें, चाहे योग के माध्यम से देखें, चाहे प्राच्य विद्याओं में देखें, तो सनातन संस्कृति में हमेशा ही प्राच्य विद्याओं में अद्भुत संयोग करने की शक्ति है। इसके प्रत्यक्ष उदाहरण आज हमारे सामने है। जी। तो इसी के साथ एक छोटी सी बात जो इस पूरे डिस्कशन से अभी तक निकल के आई है सर, कि अगर हम भारतीय ज्ञान परंपरा के आधार पे बात करें तो भारतीय ज्ञान परंपरा में अगर हम देखें कला को, हम देखें सौंदर्य को, या हम बात कर रहे हैं सृजनात्मकता की, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें भारतीय ज्ञान परंपरा में उस आनंद की प्राप्ति के लिए है जो ब्रह्म स्वरूप माना गया है। यानी वस्तुगत यहाँ पे आनंद की बात नहीं हुई है, यहाँ पे आत्मिक रूप से जो आनंद है उसके क्षणिक आनंद विषय की में बात यहाँ पे नहीं, बात की गई। हमेशा रहने वाले आनंद की बात हुई है ना, सनातन, वो हाँ सदा हाँ रहना, सत्य चित्त आनंद की बात हुई है, सदा रहने वाला ईश्वर की बात ना, उसके मूल प्रकृति वो है। क्षणिक आनंद इंद्रिय सुख की बात नहीं हुई है, थोड़ी देर के लिए खुश हो गया, ताली बजा ली, थोड़ी देर नाच लिया, फिर जो भोजन अच्छा लग रहा है जरूरत से ज्यादा उल्टी कर दे रहा है, ऐसे आनंद की बात नहीं, वो तो परमानंद की बात हुई है जो आप कहना चाह रहे हैं। बहुत सुंदर। जी जी जी। तो भारतीय ज्ञान परंपरा में अगर हम मूल रूप से देखते हैं तो इसी के लिए सभी चीजों का होता है। तो जैसे शुरू में नूरानी मैम आपके आने से पहले बता रहे थे हमें कि किस तरीके से हमारे भित्ति चित्रों से मूर्ति तक का हमने सफर देखा है, और आज हम उसमें और देखते हैं। या जो भोजन जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ रोटी को बिल्कुल गोल बनाने की जो परंपरा है वो कहीं ना कहीं उस भोजन में सुंदरता देखने की हम बात करते हैं। तो ये भारतीय ज्ञान परंपरा का ही एक मैं कहूंगा कि एक अनूठा उदाहरण है। हम यहाँ पे इस बात को देखना चाहते हैं कि मैं इस पूरे ज्ञान को, जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, उसको वर्तमान संदर्भ में अपने बच्चे के साथ, जो मेरे साथ में जो बच्चा है, जो आज भले ही स्टूडेंट है, बच्चा है, लेकिन भविष्य में वो राष्ट्र निर्माण में पूरा सहयोगी होगा, तो कैसे मैं भारतीय ज्ञान परंपरा की इन चीजों को विद्यार्थियों में समन्वित कर सकता हूँ कि कल के दिन वो राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे पाए। डॉक्टर साहब, मैं एक दो बात कह के अपनी बात को विराम दूंगा, क्योंकि मुझे 37 वर्ष हो गए हैं योग में, और योग में हमने वो नाड़ी विज्ञान का इंस्टीट्यूट ला दो बनाने वाला, वो जल्दी ला। तो उसमें मैं युवा विद्यार्थियों के साथ ही काम करता हूँ। विदेशों में भी हम यही प्रयास करते हैं, यूथ किसी तरह से जुड़ जाए। और आप विश्वास नहीं करेंगे, हमने क्या काम किया है, हर चीज को प्रयास किया है विज्ञान के साथ जोड़कर उनको देते हैं, चाहे वो जितना भी हम प्रयास करते हैं। तो उसके अंतर्गत हम उन्हें निवेदन करते हैं कि आप यदि जीवन में ये अपनाते हैं, क्योंकि आजकल तो बिना लाभ के व्यक्ति नहीं जुड़ता है, बच्चे को चीज ही मुझे तुरंत चाहिए, तुरंत तुरंत, तो उसको ये विश्वास दिलाना होता है कि प्राच्य जो विद्याएं हैं ये भी तुरंत लाभ दे सकती हैं यदि आप समर्पित होकर इसके प्रति आस्था रखें। आज आप देखिए, भोजन की हम बात हो रही थी, सारा भोजन जो हमारा भोजन है, उस भोजन ने सारी इलनेस को दे दिया है। क्या आज से 15 साल पहले, आप दिल्ली में बैठे हैं, चाहे मैं ऋषिकेश में बैठा हूं, क्या ऋषिकेश का हर बड़ा घर, हर मोहल्ले के 2-3 घर आईवीएफ सेंटर में कन्वर्ट हो गए? मैं छोटा सा उदाहरण एक भारतीय ज्ञान परंपरा की देना चाह रहा हूं, छोटे से, बहुत छोटा, प्रैक्टिकल। और भाई ऐसी क्या कौन सी आफत आ गई है कि 15 साल में इतने आईवीएफ सेंटर? दूसरा, सरकार के ऊपर इतना बड़ा दबाव है कि हमें डायलिसिस करवाना है हर किसी का विद इन लेस देन 15 ईयर्स। हमारे हर मोहल्ले के बीच में डायलिसिस सेंटर है, उसके अंदर बहुत बड़ी लाइन है, उसके अंदर बहुत बड़ी लाइन है। तो भाई ये क्या हुआ? तो हम एक छोटा सा उदाहरण में दे रहा था
कि इम्पोर्टेंसी की बात करूं या प्रेगनेंसी की बात करूं, क्योंकि हमारा विषय इसी से जुड़ा हुआ है, एक छोटे से परिधान में, ये कॉटन छोड़ने से, जीन्स को पहनने से, टाइट पहनने से, बच्चियों की जीन्स मेल फीमेल की टाइट पहनने से आज स्पर्म क्वालिटी गिर गई है। ये साइंटिफिक बात आपको निवेदन कर रहा हूं। और हमारे वहां घाघरा चोली ये ऐसे विषय नहीं है जिससे आप मतलब कोई संकीर्ण मानसिकता की बात नहीं कर रहा हूं। मैं तो व्यवहारिक वैज्ञानिकता, क्योंकि इसमें आप ब्रीथ कर पाएंगे, सर्कुलेशन हो पाएगा और ये स्वेट को एब्जॉर्ब कर पाएंगे। इन कपड़ों के न पहनने से, इन्हें टाइट रखने से, आप लैप में टॉप रखने से, लैपटॉप में रखने से उसके रेडिएशन के इफेक्ट को तो अभी हम देखेंगे। मोबाइल के इफेक्ट को हम 2028 में देखेंगे। 2008 में आया था, 2008 में कॉमन हो गया था आम आदमी के लिए। तो हम ये मानते हैं कि कम से कम इसके साइड इफेक्ट, जो न्यूरॉन्स डैमेजिंग इफेक्ट है, ये सारा जो हमारे इफेक्ट है, इनको हम किस तरह से देखेंगे, ये आएगा। यानी साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर की पराकाष्ठा भी आएगी। ये तो छोटा उदाहरण है, हर जगह हमारे आईवीएफ सेंटर के उदाहरण, और हमने तो बहुत प्रयास किया प्रैक्टिकल करने के। तो एक प्रैक्टिकल मन के विषय में भी है। अगर सबकॉन्शियस माइंड को आप क्लीन नहीं करेंगे यूथ के, उसको मन हमारे वहां जड़ है तो बच्चा नहीं समझ पाता। तो हम कहते हैं अगर आपके 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 मन तो जड़ है, ये एम्प्टी है, ये कुछ नहीं करता। ये क्या करता है? प्रोसेसिंग करता है। लेकिन इसके अंदर अगर कोई विचार डालते हैं तो वो बीज रूप में होता है, वो एक नहीं होता। उदाहरण के लिए मैं इसके अंदर एक विचार डालूंगा, एक, ये कितनी देर तक मंथन करेगा आप सुनिएगा। एक विचार चल रहा है, 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 चल ही रहा है, अभी तक चल रहा है, अभी तक चल रहा है, अभी तक चल रहा है, अब जाके शांत हुआ। अब आप समझेंगे आपका मन शांत है, नहीं। ये देखिए विचार वही है, आप देखिए कितना बलवान होगा ये अभी आपको बहुत तेजी से दुआ पे सुनाई देगा, सुनते रहिएगा, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। देखिए आ गई आवाज, अब देखिए आ गई। यानी कि सबकॉन्शियस के अंदर यदि कुछ भी चीज नेगेटिव है, ये तो जड़ है, ये कुछ नहीं करता। आप जो डालोगे वृत्ति के थ्रू, उसे प्रोसेसिंग करता रहेगा, चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो। तो हम बच्चों को ये समझाते हैं जड़ है, इसके अंदर पॉजिटिव ही डालना है, अच्छाई डालनी है, देश सेवा डालना है, राष्ट्र प्रेम डालना है, राष्ट्रभक्ति डालनी है, सनातन संस्कृति का संरक्षण डालना है, और अपने आहार विहार और विचार को शुद्ध करना है। अगर आप ये डाल देंगे, हमारे यूथ हमेशा जीतेगी। तो हम उनको करके दिखाते हैं कि आप अपने मन को बहुत शक्तिशाली बना सकते हैं। प्रैक्टिकल उदाहरण हमारे पास है, अपने आप को बहुत मजबूत बनाने के लिए अनंत उदाहरण हमारे पास है, योग में, हमारी प्राच्य विद्याओं में। तो उनके माध्यम से आप कर सकते हैं। और आपने सुना होगा, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। ये हमारी सनातन संस्कृति है कि आपका आहार भी तीनों विशेष तत्वों से, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, तीनों से मिलकर बना है। आप जिस प्रकार का आहार लेंगे उसी प्रकार की आपकी मति हो जाती है। तो इसीलिए बहुत सारे उदाहरण हैं, फिर इन पे लूंगा। मुझे लगता है कि फिर आपसे फिर चर्चा होगी। बहुत 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 धन्यवाद सर आपका। इसी के साथ जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे पैनल में, ऑडियंस में जो हमारे साथ हैं, कोई सवाल जो हमारा आज का विषय है इससे संबंधित कोई सवाल पूछना चाहते हैं? मेरा एक सवाल है कि जब भी अभी हम लोग बात कर रहे हैं योग की, आयुर्वेद की, अभी नाट्यशास्त्र की भी बात हुई, तो इन सभी में हम देखते हैं कि मुख्य रूप से इसी तरह की जो अन्य और भी भारत की पारंपरिक कलाएं इत्यादि हैं, वहाँ प्राकृतिक और स्थायित्व का बहुत महत्व होता है। लेकिन आज का जो माहौल है, इसमें आईकेएस का क्या कुछ इस प्रकार से हम किया जा सकता है, या उसके कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जो आज के माहौल के जो फास्ट फैशन तरह का है, यूज एंड थ्रो टाइप का जो कल्चर है, इसको एक स्थायित्व दे सके? या जी, इससे सवाल मैं, जी 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 बिल्कुल और सर। कोई पैनलिस्ट है? मैं प्रोसीड। देखिए, मेरा दो निवेदन आपसे, मैंने आपको एक निवेदन किया था। हमारी ये जो प्राच्य विद्याएं हैं, इनके लाभ अब अनगिनत हो गए हैं। और ये जितना भी हम देख रहे हैं कि जो हमारे विदेश के लोग हैं, ये ज्यादा इस पर विश्वास कर रहे हैं। आपको मैं दो छोटे उदाहरण देकर मतलब बताना चाहता हूँ।
कि हमारे वहां पर कभी भी फर्टिलाइजर से खेती नहीं हुई, ना ही किसी यूरिया की बात हमारे वहां पर आई है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जितने आर्टिफिशियल हम फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं नेचुरल की जगह, आज उनके साइड इफेक्ट आ रहे हैं। ऑर्गेनिक खेती के लिए विदेशी लोग भारत का प्रयोग कर रहे हैं कि हमें ऑर्गेनिक सेब चाहिए, ऑर्गेनिक सब्जियां चाहिए। तो ये सनातन में कहा गया है कि भाई गोबर की खाद बनाइए या ऐसे भोजन से खाद बनाइए जो आपके आसपास उपलब्ध होता है। तो आज हमारे वहां, मैं उत्तराखंड का एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ, हिमाचल का भी, जो भी हमारे वहां पर बेस्ट फ्रूट्स हैं जिनके अंदर फर्टिलाइजर नहीं डले हैं, वो उसी समय बिक जा रहे हैं जिस दिन वो लगा रहे हैं। यानी खेत से आकर ही कंपनी उस चीज को सीधे ले ले रही है, वो मार्केट में आ ही नहीं रहा है। अगर हमारे वहां के मोटे अनाज की भी बात, छोटी सी उदाहरण देना चाहता हूँ। मोटा अनाज मडवा हमारे वहां खाया जाता है, रागी जिसे कहते हैं। आज रागी के लिए बहुत बड़ा एक, आप यकीन नहीं करेंगे, हम बचपन में इसे गाय को खिलाते थे कि भाई इतना ज्यादा होता था, गाय खाती थी और हम भी खा लेते थे, लेकिन वो इतना महत्वपूर्ण नहीं माना जाता था। आज इसे एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मोटा चावल पहाड़ का, बासमती की जगह जो हम ये मॉडिफाइड किस्म के हैं, आज सारा बाहर जा रहा है। उसके बेनिफिट इतने हैं। तो ये चीजें मैं कहना चाहता हूं कि ये चीजें एज इट इज हैं, लेकिन यूथ को जो दिखाया जा रहा है वो उस पर विश्वास करता है। हमारे आइकॉन्स क्या काम कर रहे हैं, वो क्या दिखा रहे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी कंपनी का, एक पर्टिकुलर चीज का ऐड कर रहे हैं और लिख भी रहे हैं कि ये बहुत, मतलब नीचे छोटी सी चेतावनी लिखी हुई है कि बहुत डेंजरस है, परंतु उसका ऐड इतना हो रहा है कि उनको लग रहा है कि रोजमर्रा की चीज है, इसे मैं ले लूं। तो हमें कहीं ना कहीं प्राच्य विद्याओं के इसी प्रकार के विज्ञापन करने होंगे, और वो तो साक्षात लाभ वाली हैं, उनके लिए तो बहुत कम कहना पड़ेगा। तो जैसे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने हमारे वहां मोटे अनाज को बढ़ाया है, आप यकीन कीजिए हमारे वहां खेती बढ़ गई है, माल्टा का खेती बढ़ गई, सेब, हर चीज हमारे वहां मोटे अनाज का खूब खेती हो रही है और किसानों को लाभ भी हो रहा है। तो ये हमारे यूथ आइकन जो हैं, जो भी हमारे जो भी प्रमोटर्स हैं, उनका भी एक दायित्व बनता है कि हमारी युवाओं को अपनी प्राच्य संस्कृति के बारे में, है ना, उसके विषय में थोड़ा थोड़ा उनको दें। जैसे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने एक बहुत अच्छी पहल करते हैं, जहां जाते हैं वहीं का वस्त्र पहनते हैं, वहां के अनाज की बात करते हैं, वहां के हमारे वहां तीर्थ आसन की बात करते हैं। तो यही चीजें अगर हमारे आइकॉन कहेंगे तो ये लगातार सब जगह ये फैल जाएगा, और ये तो इतना लाभकारी है, कोई साइड इफेक्ट है ही नहीं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा से प्रचार की और जरूरत है। ये हमारी कॉन्फ्रेंस जो है, ये बहुत बड़ा मील का पत्थर उसमें होगी। हमारे यूथ उससे जुड़ेंगे, हमारी प्राच्य क्लास से जुड़ेंगे, हमारे आयुर्वेद से जुड़ेंगे, योग से जुड़ेंगे, तो ये सब संभव हो पाएगा। थोड़ा से प्रचार की और आवश्यकता। थैंक यू सो मच जी। आकाश जी, नागेंद्र जी, आपके जी 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 नागेंद्र जी, मैं भी एक सवाल पूछना चाह रही थी। जी जैसे जब हम IKS की बात करते हैं तो उसमें इंटरकनेक्टेडनेस को भी बहुत एम्फेसाइज करा गया है। मतलब आर्ट को हम स्टैंड अलोन या सिंगल ना लेकर बाकी सब्जेक्ट के साथ इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं। तो आज के समय में एजुकेटर्स वो लिंक कैसे स्टैब्लिश कर सकते हैं आर्ट का बाकी सब्जेक्ट में? जैसे मैं रंगोली की बात करूं तो उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ डिजाइन्स होती हैं, आर्ट फॉर्म होती है। तो एजुकेटर उस लिंक को, आर्ट को बाकी सब्जेक्ट से कैसे लिंक कर सकते हैं, इस पे हम चर्चा कर सकते हैं। जी। तो पलक जी, मेरी रिक्वेस्ट है कि क्योंकि नारायण सर ने बहुत सारे अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, तो ये जी। बहुत अच्छा होगा अगर आप अपना प्रश्न दोबारा रमा कल्याणी जी से पूछें, लेकिन उसके लिए आपको ये प्रश्न जी जो है वो अंग्रेजी में इंग्लिश पूछना मैं होगा। जी। ओके ओके मतलब एक और लाइन वैसे कहना इससे चाहता मिलता हूँ जुलता मैडम। मेरा एक प्रश्न और है, लेकिन पहले मैं चाहूंगा कि आप अपना प्रश्न दोबारा रमा कल्याणी नहीं, मैम से एक पूछ छोटा सा सकते मैं हैं। एक उदाहरण, जी हमारे जी वहां जी जी पर जी जी एक रंगोली की, गुड कुमाऊं आफ्टरनून। और गढ़वाल में एक रंगोली का एक नियम है, अल्पना बनाना, एपण। एपण अगर आप देखेंगे, नेट करिए, हमारे वहां एपण बनाए जाते हैं, और ये एपण कला इतनी महत्वपूर्ण है, अभी हमारे उत्तराखंड में हर जगह पे एपण बनाए जा रहे हैं सुंदरता के लिए। तो ये दिवाली में बनाए जाते थे, स्पेशली छोटे से चावल के आटे को पीस के धीरे धीरे बनाए जाते थे, और ये बहुत ही अच्छा, उसमें हल्का सा प्राकृतिक रंग डाल के चावल के आटे से हम लोग एपण बनाते थे अपनी देहली पे। तो लक्ष्मी के पैर बनाना, ये एपण कला हमारे कुमाऊं और गढ़वाल में, कुमाऊं की बहुत ही ज्यादा प्रचलित कला है, और बहुत ही शानदार एपण इसमें बनाए जाते हैं। कई प्रकार की चौकियां इसमें है,
को भी देखेंगे, इसका बहुत प्रचार उत्तराखंड में तो हो रहा है। बाकी मुझे लगता है एक्सपर्ट ज्यादा बताएंगे, लेकिन हमारे उत्तराखंड की बहुत महत्वपूर्ण है और कई प्रकार की एपण कला है, कई प्रकार की चौकियां उस पर सारा ओके, बहुत बहुत धन्यवाद जी। Good afternoon, Rama Kalyani ma'am. I would like to ask this question to you as well. As I just discussed, IKS emphasizes on the interconnectedness with different subjects also. Yeah, I understood your question. I Yeah. answered it in English. Yeah. Okay. So you Okay, said okay. if Rangoli and all is to be included Yeah. in regular curriculum, how, see, Rangoli and mathematics, you can say it's patterns, no? It's a connection of patterns, Rangoli. So if the Rangolis are brought in, we have experimented in that. The patterns, they can be identified, how many patterns are there, and what connection between mathematics and the patterns. There may be hexagons, there may be squares, there may be rhombus, parallelogram. So all this can be connected along with mathematics. You can ask them to draw Rangoli, and from that Rangoli, what all mathematical patterns or mathematical ideas you can evolve from that, they can ask. So mathematics and Rangoli can be connected like that. And similarly, if you want to connect music there, see, so you take the Leelavati verses and all. The Bhaskara, the author, is not only a mathematician, he is a poet as well. In his verses, you can find they can be sung as a song. It can be put into music, and in some conferences, the students used to sing them. And many ragas can be very well fit into that verses. And he brings in poetical aspects like aesthetics, like the Alankara Shastra, and all can be included. In just for a simple example, I say, when he says about the surface area of a sphere, to say what is the surface area, he says Kandukasyeva Jalam. See, if a net is worn around a kanduka, that is a ball, how that covers the area. The same way, a surface area can be identified. Kanduka say jalam, a net is covered. So, and you can see the apples these days. It comes covered with a net, right? Similarly, if a ball is covered with a net, how it occupies, same way, he divides the surface area into square units. So square units, how the square units can be finally integrated into the surface area, and also each square is taken as one base, and from that he say make a cone to the center, and that gives so many cones, and that together make the volume of the sphere. So each cone, you can find the volume area, and then so how many squares are there in the surface area, that is the number of cones. So you multiply that, you get the volume. So everywhere they brings in the upama, that is the simile, metaphor, and also the anupraras. All these are because all the mathematical texts were written in poetry, that is poems, shlokas. So automatically shlokas means they have to follow the meter. And when they follow the meter, they take the as the alankaras and also anaprasa, all these also come in. So along with the mathematics, they learn the poetics also. So it comes along with that. So as you said, and one of my student used to be very good in painting, and this one. One day he brought a Ganesha picture and brought it to me. I said, can you find the area of this? I asked him. How can we find the area of this Ganesha picture? He said, oh, you can make circles, squares. You divide them into so many pictures. That is, so many, you can draw circles and make this one and divide it into so many mathematical figures. If you convert into all the mathematical figures that you know,
then you can find the area. Then he did it. He made it into small pieces of this one, cardboard, and some triangles, some circles, some trapezium, some horizontal. Finally, he brought the area of the Vinayaka, that is whatever Ganesha picture he written. For that, he found out the area. So here, mathematics and the art, they fall together. It is only up to the teacher who brings in. It is the teacher should have the interest and capacity and bring out from the children. Thank you so much, ma'am. If Palak ji? the teacher decided we have to somehow imbibe it, they can do it. जी, तो बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का। और रमा कल्याणी मैम, मेरा सवाल भी इससे मिलता-जुलता था, ऑल्दो हम इस डिस्कशन को हमें आगे बढ़ाना है, तो हम ज़रूर इस पे बात करेंगे। और बाकी सभी के लिए कि आज जो अभी डिस्कस हमने किया कि आईकेएस को किस तरीके से हम आर्ट में, एस्थेटिक में या डिज़ाइन में हम देख पाते हैं, या जो क्रिएटिविटी है हमारे जो भारतीय ज्ञान परंपरा में, हम उसके विषय पे अभी चर्चा कर रहे थे। तो असल में जो सवाल मेरे मन में था, उसके साथ मैं विराम दूँगा इस सत्र को, कि हम इन सभी चीज़ों को किस तरीके से हम अपने जो करिकुलम है, उसमें शामिल कर सकते हैं। स्पेशली चाहे वो ग्रेड 1 टू 5 हो या 1 टू 12 हो, उस तरह के बच्चों के क्या कहानियों को चुनते समय मुझे किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए? या एक शिक्षक के रूप में जब मैं क्लास में किसी पेडागोजी के हिसाब से या कोई मेथोडोलॉजी चुनता हूँ, तो मेरे दिमाग में कौन-सा भारतीय ज्ञान परंपरा का बिंदु होना चाहिए? या क्या मुझे कक्षाओं को जो इंटीग्रेटेड अप्रोच जिसकी हम बहुत बार बात करते हैं, क्या उसके आधार पे मुझे कुछ सोचना चाहिए? या भारतीय ज्ञान परंपरा मुझे किस तरीके से हेल्प करती है, इन सारी चीज़ों को अचीव करने के लिए, चाहे वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से हो या जो हमारी वर्तमान में जो हमारी नीड है? तो ऐसे और सवाल भी हैं, जो हमारे डिस्कशन के दौरान कुछ-कुछ क्लियर हुए हैं, कुछ नए विचार हमें सोचने का या नई दिशा में सोचने का अवसर ज़रूर देंगे। तो सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। तो अभी हमारे साथ में जो अगला सत्र शुरू कर रहे हैं, वो डॉक्टर सिम्मी मैम हैं, सिम्मी महाजन जी हैं, और जो टॉपिक है इंक्लूसिव एजुकेशन थ्रू आईकेएस, कल्चरली रिस्पॉन्सिव पेडागोजी एंड यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग। तो मैं स्वागत करता हूँ सिम्मी मैम का। नमस्कार मैम। नमस्कार। आज के इस सत्र में फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन आई वेलकम ऑल द पार्टिसिपेंट्स एंड गेस्ट हियर, and I just wanted to confirm the panelists for this session. I would be very happy if they can switch on their camera and they can indicate that they are present here in this session. Mr. Atal Bihari Tripathi ji, Mr. Assistant Professor, Sri Dev Suban Uttarakhand University. Sir, are you here? Yes, madam, I am here. Namaskar. So welcome, namaste, and welcome to the session. And Dr. Tanu Rastogi Bali, Assistant Professor, Department of English, the Government of Degree College, Pauki Devi Tehri Garhwal, Uttarakhand. Are you here? I'm here, ma'am. Yeah, ma'am. Okay. So welcome, madam. So Dr. Beshali Mukherjee, Senior Faculty Research Associate, Chennai, School of Music Therapy. Madam, are you here? Yeah, I am here. So welcome to the session. And Dr. Likita DN, Associate Professor, Department of Samhita, Siddhanta and Samskrita, SDM CAHRC, Udupi. Namaste, madam. I'm here. Namaste and welcome. Thank you. And Mr. Sayantam Roy, Deputy DPI, WBES, OSD CS Branch, Bikash Bhavan, Education Directorate, Government of West Bengal. Yes, ma'am. Sir, are you?
So, Namaskar. So we are happy that all the panelists have. Can you hear me? So great. So welcome, sir, and so welcome to all the panelists again, and happy that we have all the people who are present here. And when we talk about Samaveshi Shiksha, inclusive education, then because this is now a very important part of the education, and it is in नई शिक्षा नीति में भी समावेशी शिक्षा के बारे में इस बारी ज्यादा बात करी गई है कि if we have to take the education, we have to ensure that all the learners are there in the system, and the environment we have to create for all children, that every learner can learn and nurture in the education system. So I will be having. So first, I want to ask Dr. Atal Bihari Tripathi ji only that how do you see there is a correlation between Indian knowledge system and the inclusive education? Okay, thank you, madam. Thank you for giving me this opportunity to be here, and I will be associated with you for a time, and that is 1 hour. The topic which will be discussed today in this panel series, that is inclusive education through Indian knowledge system, and the question is how to integrate inclusive education through the Indian knowledge system with reference to the integrating culturally responsive pedagogy and universal design for learning. Am I correct? Yes, sir. Before discussing about other things in this panel, let me clear about what inclusiveness or inclusive education mean. Inclusiveness means ensuring that every person, regardless of their backgrounds, abilities, identity, or circumstances, he is welcomed, he is valued, and he can be able to participate fully in a group environment or system. So this what I mean in the education system also. So providing equal learning opportunities for all the students within the four walls of the classroom, irrespective of all sorts of differences. It means we cannot highlight the differences which is there in between the students who are coming from diverse cultural backgrounds. Rather, we will accept all these divergences. क्योंकि क्लासरूम की जब हम कल्चर की बात करेंगे, दैट इज एक डाइवर्सिफाइड कल्चर ही है. सो डाइवर्सिफाइड कल्चर को हमने क्या करेंगे, हैंडल करेंगे एक क्लासरूम में. So the integration of Indian knowledge system in school education, it offers a transformative pathways for inclusive pedagogical practice. क्योंकि ये जो इंडियन नॉलेज सिस्टम दैट इज रूटेड इन इंडियन सिविलाइजेशनल हेरिटेज, इन लोकल नॉलेज में भी मिलेगा, ट्रेडिशनल आर्ट्स में भी मिलेगा, इवन इन इकोलॉजिकल विजडम्स, इवन इंडिजिनस languages and community practices. So Indian knowledge system will enable the learners to connect meaningfully with curriculum content. So this is about the integration of Indian knowledge system in the mainstreaming classroom. What I feel, madam. सर मैं थोड़ा सा अपने क्वेश्चन को दोबारा रीफ्रेज करूंगी कि वी अंडरस्टैंड दैट, लेकिन हाउ वी एस्टैब्लिश अ कोरिलेशन, अगर हमारे यहाँ पे जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो जानना भी चाहते हैं कि जो क्या कोरिलेशन कैसे एस्टैब्लिश करते हैं, व्हाट इज देयर इन इंक्लूसिव इंडियन नॉलेज सिस्टम वेयर वी सी दैट इट इज वेरी मच aligned with what we are talking about inclusive education. Okay. You see, Indian knowledge system refers to the traditional, indigenous, and long developed bodies of knowledge that originated in India. हम लोग वो फिलोसॉफीज को ले सकते हैं, साइंस को ले सकते हैं, अदर प्रैक्टिसेस को ले सकते हैं, इवन कल्चर को भी ले सकते हैं या कल्चरल विजडम को ले सकते हैं. जब क्लासरूम में हम क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्नर्स है, वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्नर्स, वी विल कंसिडर देयर नीड्स, देयर बैकग्राउंड्स, देयर कल्चर. हमको पहले समझना पड़ेगा. समझ के हम क्या करेंगे कि जो इंडिजिनस नॉलेज की हम लोग बात करते हैं या ट्रेडिशनल नॉलेज की बात करते हैं, उसको करिकुलम कंटेंट के साथ हमको रिलेट करके क्या करना पड़ेगा विथ डिफरेंट एग्जांपल्स. चाहे वो क्लासिकल नॉलेज ट्रेडिशंस हो
या ट्राइबल नॉलेज सिस्टम हो या कोई भी फिलोसॉफिकल फ्रेमवर्क्स हो या एस्थेटिक या एम्बोडाइड ट्रेडिशंस, चाहे वो योगा, क्लासिकल म्यूजिक, फोक क्यों ना हो, फोक डांस हो गया, थिएटर हो गया, विजुअल आर्ट्स है, हैंडीक्राफ्ट्स है, ऑल दिस थिंग्स विल बी incorporated in the curriculum and we will present the knowledge. As for that, we will make a plan and we will deliver the content in the classroom. Thank you so much, Dr. Tripathi, because you said very rightly that जब हम बात कर रहे हैं इंडियन नॉलेज सिस्टम की, जहाँ पे शुरू से जो लर्निंग रही है वो इट वाज ऑलवेज अ चाइल्ड सेंट्रिक, वेयर वी ऑलवेज फोकस्ड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ चिल्ड्रन रादर देन द what are the limitations, and every child's strength has been nurtured. If you see the concept of gurukul, and Yes. if we see old in our mythology, when we in Mahabharata, when we were discussing about that, Arjun has a focus on, like Arjun is like he has a knack for dhanush kriya mein. So then he has been trained, he has been the guru has identified the potential in a child and then nurtured, and the beam was nurtured for the other strength. So this is what we are talking about in inclusive education, that the diversity is not a Yes, yes, challenge, yes. it is more of Madam, a we have to is a create a strength of the transformative country. paradigm actually. हमको एक तो So paradigm तैयार करना पड़ेगा जो है transformative actually. very well said. So that it has to be the child focused, child centric Yes, yes, yes. education, where every child strength needs to be nurtured. Madam, the Very well pedagogy said. which we are following in the classroom, that should be child-centric pedagogy. Child It is not that child the teacher centric, will dominate in the class. It should be and you child-centric. second Child will be center. very Yes. well, yeah, and you secondly said that we should have a multi-sensory approach, यहाँ पे हम बात आर्ट की भी कर रहे हैं, आर्ट इंटीग्रेशन की भी बात Yes, yes. कर रहे हैं. We have to have the indigenous cultural practices what we are bringing here. So very well said. So that very much aligned with the philosophy of inclusive education. Thank you so much, Dr. Tripathi. We'll come back again. So Yes, now sir. I would like to ask Dr. Tanu Rastogi. She's from the higher education. So I want to ask, because since we have been majorly working in school education, and now the school education में बहुत चर्चा हो रही है inclusive education की. So Dr. Rastogi, what is the state of inclusive education in higher education? What transformative changes have been taken place in past few years that we can say that yes, our inclusive education system is strengthened in higher education also? Yeah, ma'am. In higher education, as per this NEP, when this NEP has been implemented in 2020, and again it has been, again it has been given a new form in 2023. So basically, they are focusing on a multidisciplinary approach. Earlier, the student of any stream was just studying the things of their stream, but now they are making it all inclusive. Even the student of science stream is studying this Indian knowledge system. The student of commerce is studying this Indian knowledge system. So students are getting an opportunity to study their indigenous culture, about which they were not very much aware in the past years. So when it comes to this Indian knowledge system, as we know, it had been giving as Sri Aurobindo has also mentioned in his book, The Renaissance of India, Part 1. He had mentioned that this is a very rich culture, and it had been giving things again and again to the people of India, and not only India, it has been globally recognized. So, as per the NEP, in higher education institutions, they have made an effort to make an effort of making this curriculum including all the things. So in our university, where I am teaching, in our university, they have actually made a paper, Indian knowledge system, in which students are studying Bhagavad Gita, they are studying Ramayana, they are studying those important aspects of Indian knowledge system which they were not aware of in the previous years. So in higher education, they are really doing great job, and I think that this will really help students in understanding their indigenous culture, about which they were not very much aware in the previous years.
So great. So it's very well said that, and the children who are in higher education, they are very soon they are going to be somebody will be the entrepreneur, somebody will be will be working at a certain place. So this is the time that when they understand what kind of how rich we are as culturally as an organization, the same they own the responsibility that the next generation and the people who are working with them, they will be also of the same. We are imbibing those practices, and ultimately we are making the responsible citizen of the country. So Indian knowledge system talks about compassion, and knowledge system talk about the ethics, responsibility, which is also important for our youth. They have that they need to be a part of. They need to imbibe those practices, and so thank you so much. It's good to know that with NEP 2020, our focus is that we are definitely involving our youth to understand how rich we are as a country. We are in the resources in terms of Yeah, knowledge. and sorry to interrupt you in between. One of the papers in our university is management paradigm through Bhagavad Gita, and the management paradigm through Bhagavad Gita. They have implemented this with the help of which they are able to understand the concept of releasing their stress, which they have to face during their corporate journey. So this is, I think, one of a very important step which has been taken by the university when it comes to the stress relief, which is a very burning question in this today's globalized world. So I think they are doing like great job, Great. but certain things should also be included in the things such as Panchatantra. Tales of Panchatantra are like Niti Shastra. So these tales should be included at every stage of either school curriculum or college curriculum, because those tales are not only tales, they are ethically sound, they are morally sound, and when students listen to tales, कहानियां तो बचपन से ही everybody wants to listen, और जब हम उन कहानियों को सुनते हैं और फिर एनिमल्स आर द कैरेक्टर्स इन दोस टेल्स, और जब हम उन्हें सुनते हैं तो हमें लगता है कि अच्छा दिस वाज हैपनिंग विद मी आल्सो। जैसे वो मंकी और क्रोकोडाइल वाली कहानी है जिसमें मंकी वाज वेरी काम विद हिज कंपोजर, विद हिज intelligence. He took a very strong decision and he could get rid of his enemy. तो ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जो चार ब्राह्मणों वाली कहानियां हैं कि हेस्टी डिसीजंस नहीं लेने चाहिए, यू शुड बी वेरी मच अवेयर व्हेन यू आर टेकिंग डिसीजंस। तो इस तरह की कहानियां जो हैं डिसेबल बच्चों के लिए भी, हर तरह के बच्चों के लिए, किसी भी कल्चर में वो हो, ये इंक्लूड होना चाहिए। क्योंकि जो पंचतंत्र है वो तो 50 लैंग्वेजेस में, इंडिया में ही 50 लैंग्वेजेस में वो ट्रांसलेट हुआ है। And across the world, when we talk about Persian, it has been translated in Arabic, it has been translated in English. English mein to hai hi. French version is there, then German version is there, Latin version is there. तो जब global level पर ही लोगों ने पंचतंत्र को इतना adopt किया है, उसको इतना important माना है, तो बिल्कुल वो टेल्स हमारे स्कूल करिकुलम में और कॉलेज करिकुलम में तो इनकलकेट होनी ही चाहिए। और साथ ही फोक टेल्स का, फोक टेल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मैम। जैसे हमारे गढ़वाल रीजन में, आई एम कमिंग फ्रॉम उत्तराखंड, तो यहाँ पर इतनी सारी टेल्स हैं। एक पत्ता होता है यहाँ पर, मालू का पत्ता। तो एक कहानी है राजूला मालू शाही की, एक कहानी है कि राजूला वाज इन लव विद मालू शाही। मालू शाही एक प्रिंस था और बचपन में ही उनकी शादी हो गई थी। तो मालू शाही के फादर की जब डेथ हुई तो मालू शाही की जो मदर थी, शी डिड नॉट वांट राजूला टू बी हिज ब्राइड। तो उसने कुछ ऐसे ही कुछ कॉन्स्पिरेसी करके वो नहीं हो पाया। व्हेन राजूला वाज लाइक वेरी मच डिटरमाइंड, तो शी did all the journey, she crossed all the rivers, like she went through all the hardships to meet her husband, who was Malu Shahi. And when Malu Shahi came to know about this, Malu Shahi also did a lot on his path to meet Rajula, but ending was though tragic. But the story teaches
how with her perseverance, how with her courage, she crossed all the barriers in order to maintain her relationship. तो इस तरह की बहुत सारी कहानियां हैं यहाँ पे, और बहुत सारी ऐसी कहावतें हैं हमारे इस कल्चर में जो बताती हैं, जैसे अगर बारिश हो रही है तो वो ये कहते हैं कि इफ स्पाइडर इज मेकिंग अ वेब, अगर स्पाइडर ने ओपन में वेब बनाया तो इसका मतलब मानसून जा रहा है, मानसून नहीं आएगा। और अगर मिर्च जो होती है, अगर उसमें थोड़ा सा मॉइस्चराइजेशन हो गया है तो इसका मतलब अब बारिश आने वाली है। तो ये बहुत सारे जो उनके अपने लोकल जो ओरल ट्रेडिशंस हैं, इनसे लोगों को बहुत पता चलता है। फिर उनका एक उनका मतलब एक लाइन है, चुनी खाई बार बार, उपाड़ी खाई एक बार, कि देयर आर सर्टेन लीफी वेजिटेबल्स, और उन लीफी वेजिटेबल्स का ये रहता है कि अगर आपने उसको स्टेम से तोड़ा है तो यू विल हैव इट बार बार, आप उसको बार बार खाएंगे, वो फिर ग्रो होता है। उपाड़ी, अगर आपने उसको अप्रूव कर दिया तो यू विल ओनली हैव इट वंस, आप बाद में उसको ऐसे यूज नहीं कर पाएंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे ये जो ओरल टेल्स हैं, जो ये हमारी फोक टेल्स हैं, ये हमें बताती हैं कि कैसे हमें चीजों को मैनेज करना है, प्रैक्टिकली हमें चीजों को कैसे जानना है, और those things which are not like everything is not there in the book. तो ये जो ओरल कल्चर है हमारा, जो ये ओरल ट्रेडिशन है, ये जो हमारा इंडियन नॉलेज सिस्टम है, इसमें ये फोक टेल्स भी इंक्लूड होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसी सेंचुरीज गुजर चुकी हैं कि बहुत सारी टेल्स तो ऐसी हैं कि वो अब खत्म ही हो गई हैं, लोगों के साथ चली गई हैं। तो इस पर काम होना बहुत जरूरी है, बच्चों को इनके बारे में जरूर पता होना चाहिए। आई कंप्लीटली अग्री। अगर हम स्टोरी टेलिंग की बात करें, टेल्स की बात करें, दैट एनी एज इट ऑलवेज बी इज वेलकम, चाहे छोटा बच्चा हो या आज हम बैठे हों, यू कैन मेक डिफिकल्ट topic easy when you engage through the storytelling or something which is on real life example. Very well said. And you said very rightly that like India has so much of a diversity, चाहे वो बायोडाइवर्सिटी की बात करें या कल्चर की बात करें, लैंग्वेज की बात करें, एंड every region has something very beautiful stories. And there are many things which gives a thought for research also, as you said ki uh, they may not have a scientific reason for that, but they know that ki this is going to happen through the observation. That observation can lead to lot, open doors for so many research to be done, because unless हम वो share ही नहीं करेंगे अपने youth और बच्चों के साथ, तो they Right. will not have that inquiry also. Is it so? So I have to find out why it is happening. ऐसा क्यों होता है? So you and this is the way. Like we have to preserve those stories and tales, so that, and it needs to be shared at every level. It should be the indigenous part of the education. Very well said. Thank you so much, Dr. Vishali, speaking about that. So I will be now coming to Dr. Likhita, and so Dr. Likhita ji. So just I wanted to understand that in a society में, if we have to have inclusive education across, अगर हमें level of education बात करें, चाहे the school level to ये है, so can you just highlight on universal design learning? So how universal design learning is needs to be established to strengthen inclusive education, and what is the role of universal design learning? Namaste, madam. You mentioned about universal design learning. I just wanted to know what you are meaning by that. Is it like a general way of educating, common way of educating everyone? Is that in that way you are asking me? So when we talk about universal design learning, when we say that universal design learning is the learning when we ensure that every learner is learning in the classroom. Okay, So okay, okay. that Yes, yes. we ensure I that got it. every, yeah, that is the, Okay. it's rather opposite way what you are Okay, okay. asking. Yes, Yeah, yes. yeah. Because I do not agree with a common pattern of teaching. That's why that particular doubt I asked. Because Ayurveda, I belong to Ayurveda fraternity,
and our textbook talks about, we have three main textbook of Charaka Samhita, Sushruta Samhita, Ashtanga Hridaya, which are majorly referred to teaching undergraduate as well as postgraduate students. What I observed was every student's learning was very different. Now it is 10th year of my teaching, and every student, because he came from a very different background of physics, chemistry, biology, mathematics and suddenly to Ayurveda background. For us teaching Ayurveda from basics, it was like really basic level of teaching. I felt that students at times lost their confidence too. So we had to bring student to our terms, and that drawback was there because earlier education system was with the Darshana Shastra background. Student used to understand the darshanas, Vaisheshika, Nyaya, Sankhya, Yoga, the darshanas, Vedanta darshanas and all. They had this understanding of first knowing self, and they used to analyze self, and then they used to come to understand other subjects like medical science, like Ayurveda. But now it is that was not the case, and they have come with a very different background to Ayurveda. Teaching was really a challenge, and then I understood every student has to be approached differently. Though it is mentioned that some students belong to very intelligent group, very middle group and very low group, and such classification also comes in when NAC accreditation etc. comes. They expect us to tell some students are slow learners, documentation has to happen in terms of slow learners and all. I find it very difficult to tell that certain students are slow learners because their orientation of learning was different. In such cases, we cannot point them out as slow learners. I have seen few students feel demotivated, keeping them in that terms. So what a plan I did was, what thought I did was, I approached every student differently. Even that is a challenge because around in the classroom of 100 students, it was difficult to approach every student differently, but having eye contact with every student, seeing their expression and knowing them by person, every student by person, and reaching them was very much necessary to know whether they have understood or not. And this approach helped me a lot to bring them to my terms. And I feel that assessing them based on the marks was the mistake that the present education system is doing. We need to have a different style of approach because their learning may not be just based on memorizing skills. I point out learning must happen through nature, and a student who can nature, I'm not just telling observing the Prakriti, I'm telling from every situation that they are going through, if they are learning, it means they are intelligent students, not just because they have scored well, they are intelligent students. So a common kind of teaching methodology cannot be followed, but yes, if I want to give a universal learning should happen in among the students, Ayurveda has certain teaching methodologies that is being taken. For example, like our previous speakers have mentioned about stories and all, we Ayurveda people also have certain things called nyayas, drishtantas, etc. Very simple examples like how urine formation happens in the body, for which Ayurveda quotes example of how pot is newly made pot oozes out the fluid from its surface when cold water is kept in it. Similarly, urine is accumulated or formed in the body. So this kind of example will be understood by the student only if he is observing the nature. Because of the very strict tight time schedule that we have from 9 to 5, 9 to 6, keeping them packed in school, probably this kind of learning will not happen. They have to go out, they have to be with their parents, they have to be with their grandparents to know the stories like what Tanuja madam and all mentioned, or Atal sir mentioned. They mentioned about the stories, which definitely have come to the children through the grandparents, etc. Profession used to pass earlier from parents to coming generations earlier. That way they are way more skillful rather than writing exam and scoring better marks.
So probably a little change in the examination pattern, etc., would make us feel that students are getting the knowledge in an inclusive way or not. As we don't know how to teach, we ourselves are not aware of what our drawbacks are, what our strong points are. In case we knew how we were approached, we would know how to approach the students. So probably such kind of training must happen. Trainings are happening. They are lectures, 9 to 5 packed with the PPTs from beginning to end. Not that kind. I'm telling about the trainings where the trainers are understanding us, what problems we are having, and what is the intelligence problem we are having. If we are approached that way, probably teachers would be able to approach the students also with that same soft corner towards them, and to identify their problems, their drawbacks, and then give them the complete understanding. So this is what my observation are. My observations are limited because I teach in medical school. I don't know about how we teach small children. So this is my observation, madam. Thank you. But very well, whatever you said, every sentence has the meaning. So it's really important. आपने बहुत दो तीन बहुत important बात बोली. आपने वहां से बोली कि जब यूनिवर्सल डिजाइन लर्निंग से हमारा लेंस यहाँ से शिफ्ट होता है कि आई विल मेक श्योर एज अ टीचर दैट एवरी चाइल्ड शुड लर्न इन माय क्लास, तो वहां पे टीचर सबसे पहले ये क्वेश्चन अपने आप को करिए, एम आई कॉम्पिटेंट, और मेरे को अपने आप को स्किल करना है कि आई एम एबल टू टेक केयर ऑफ ऑल दी नीड्स. बिकॉज वो तभी लेंस शिफ्ट होता है जब आप यहाँ से सोचते हैं कि यस आई मेक श्योर दैट एवरी लर्नर इज लर्निंग इन माई क्लासरूम. और यही आज जो एजुकेशन सिस्टम में जो बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है. बिकॉज वी ऑलवेज हैव बीन सीन, अगर हम डिसेबिलिटी की बात करें या बच्चों की बात करें, वी ऑलवेज ब्लेम द चाइल्ड दैट कि बच्चा नहीं सीख पा रहा, बिकॉज देर वॉज ऑलवेज अ टेलर मेड विद, देर वॉज नेवर अ कस्टमाइज लर्निंग फॉर अ चाइल्ड, देर इज ऑलवेज अ वन साइज फिट फॉर ऑल. और तब हमने हमेशा ब्लेम बच्चों पे ये करा कि शायद ये बच्चा स्लो लर्नर है. आपने सही बोला कि बच्चा इंटेलिजेंस उसके ऊपर नहीं है, बिकॉज हर बच्चे का जो, व्हेन वी टॉक अबाउट मल्टीपल इंटेलिजेंसेस, हर बच्चा अलग अलग तरीके से सीखता है. और अगर हम एक तरीके से पढ़ाते हैं तो हम एक तरीके से ही बच्चे को आंक सकते हैं, जिसमें सारे बच्चे फिट नहीं हो सकते. एंड फॉर मेनी इयर्स वी हैव बीन पुटिंग द ब्लेम ऑन चिल्ड्रन रादर देन वी रियली क्वेश्चन आवरसेल्फ कि am I really trained enough to ensure that every learner is learning. क्योंकि यहाँ से शिफ्ट होते ही आई थिंक सबसे पहले काम हम अपने आप पे ही करना शुरू हो जाएंगे. when we are into education, we are educator, yes, I have to skill myself that ensuring that every child should be learning. Secondly, you said very very important बात आपने बोली कि एजुकेशन चार दीवारी में नहीं हो सकती, बाउंड्रीज में नहीं होती, एजुकेशन एवरी मोमेंट पे हो रही है. सो एजुकेशन का पर्पस ये नहीं है कि कुछ चीजें याद करके आप एग्जाम दे दीजिए. एजुकेशन का मतलब ये है कि यू आर मेकिंग चाइल्ड दैट ही इज ऑब्जर्वेंट अराउंड, वो हर चीज को देख रहा है, हर चीज को क्वेश्चन कर रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है. तो तब उसको आप लिमिट नहीं कर सकते सीखने के लिए. देन देयर इज अ वास्ट नॉलेज अवेलेबल, बट वहां तक तैयार करना है बच्चों को कि उनकी इंक्वायरी ड्रिवन, जो आज हम बात करते हैं 21 सेंचुरी स्किल्स की बात करते हैं, हम इसकी बात करते हैं, एजुकेशन हैज टू बी फ्रॉम द रोट लर्निंग टू द कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग. सो एक चीज की जब बात करते हैं तो सारे क्वेश्चंस वहीं से एड्रेस हो जाते हैं कि हाउ वी हैव द एजुकेशन हैज टू बी देयर. आई कंप्लीटली एग्री विद यू. थैंक यू सो मच. Whatever you said, it was really really relevant and need of an hour. Thank you so much, Nikita ji. So now I will be asking Mr. Sayantan Roy. He is from the system. I must say that Department of Education, West Bengal. Sir, I would like to ask, especially जब हम आज इंक्लूसिव एजुकेशन की बात स्कूल लेवल पे बहुत हो रही है, और मैडम ने बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बोला कि एज अ टीचर टीचर हैज टू बी रेडी, आई हैव टू बी रेडी फॉर टीचिंग. So in school, I want to ask you that how strengthened we feel that we are strengthened in in inclusive education, और टीचर्स के लेवल पे हमें क्या तैयारी करने की जरूरत है. क्या एक जनरल टीचर जो है, मेन स्ट्रीम टीचर, हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी
to ensure that inclusion is happening in the classroom? Thank you, madam, for inviting me in this international conference on integrating IKS. I also thank the Aurobindo Society for inviting me as a panelist. See, myself is a master trainer also, and I'm the only one in the field of mathematics from the West Bengal. So, what I felt during my training as a master trainer in IKS, see, now whatever you have asked, and also Dr. Atal Bihari Tripathi and Tanu ma'am, Ekta ma'am, all they have what they have said. So, if I union them, I mean myself from mathematics background, so I may use the terminologies from mathematics also. So so if I union them, then the thing is, see, whenever we are seeing that whatever the school students they are learning, so let me give you one example. We all know about the Pythagoras theorem, right? Pythagoras theorem we all know. So Pythagoras is from 527 BC, if I am not approximate 527 BC. But in 827 BC, so 300 years back, we also have Bodhan Shulva Sutras. We also have Kattan Sulva Sutras. Why we have Manava Sulva Sutras? We have Apastam Sulva Sutras. We have lots of Sulva Sutras. In Bodhan Sulva Sutra, we know that there is a slok, and from that slok, it is very much well known that the Pythagoras theorem, whatever we are calling as Pythagoras theorem today, that was known already. So why not teach these kind of things in the school level? Why not delete the Pythagoras theorem? I'm not saying that we have to delete the Pythagoras name from Pythagoras theorem. I am saying includes. I mean, we are talking about inclusive education, right? So why not include Bodhan's name in that theorem? So why don't we call Bodhan Pythagoras theorem? So that would be the first step, right? So we are in our school system also, we are trying to build up these kind of things. There are other things. So the Sulva Sutras, there is basically transforming the shapes. How to, I mean, the constructions. So how to convert from circle to square, or square to circle, or from trapezium to another shape. So basically in their question paper, they will be asked to draw these kind of things. So why not teach them in a very I will not say in a sophisticated manner, because that will require many, I mean, they will require the Sanskrit language and all those things. But we can also teach them the methods, how they have been, I mean, how our ancestors have done those things, right? Also, second point I want to mention is that you were asking about the teachers' education, right? I am fully agree with that. So to teach the teachers what we need, we have to understand the teaching methodologies of our ancestors. If I took the book of Aryabhatyam, there are 110 slokas, right? So how you will say, I mean, Aryabhatta cannot be treated as a mathematician. He can be treated as a Sanskrit person who knows the grammar, who knows the linguistics and those things. So in our NEP 2020, the inclusive or the multidisciplinary approach, that is basically there in that time also. I mean, suppose somebody is writing a book, say Rasashastra or chemistry or Natashastra, everything, they are basically, I mean, learning the language. Today we will say that, yeah, if you don't know English, then you have no use. So at that time, if you don't know Sanskrit, then it has no use. That's why this is called Dev Bhasha, right? I mean, there are other aspects also for Sanskrit language. I mean, recently I was teaching in some place. I mean, I was explaining them. We all know about this automata theory, right? Finite state automata theory. So automata theory is basically related to how you understand, how you are able to make understand the computers. Okay. So in that automata theory, there is a statement, there is a thing called context-free grammar. Okay. So Sanskrit language is basically a context-free grammar. I mean, it has no dependency on the context, because you see, if I say that Ram eats rice,
And if I change those positions, eats Ram rice, then that has no meaning. But in Sanskrit, if I say Rama Annam Khadasi, then I mean, if I shift these things, so I mean, that would be amazing, right? So these kind of things we need to teach our students. Also in the Bodha, I mean, this Buddhist logic, there are four systems, right? The Arya Satyas, okay? So that is very much related to fuzzy logic. So the teachers have to study more so that they can teach. I will give another example. Am I audible? Yes, sir. Yes. You're Yeah. audible. So I will attach another thing. I was reading an interview of Manjul Bhargav, who got field medal in recent times in mathematics. So he was working with something in number theory. I am also a number theory. I do research in number theory also. So I was reading an article of him. So where he mentions deliberately the name of Brahmagupta, that I got this idea which is basically used to have some research in black holes also. So I got this idea from one or two slokas of Brahmasura Siddhanta, and he mentions those slokas. So for our teachers, we need this kind of training system. Why we should not speak about that? Yeah, I mean, we have a great past. I mean, what is lying in there? I mean, ऐसा बोलने से कुछ और क्या नहीं था. We have so many things we should proud of. Also, we have so many things we should not proud of. I mean, recently I was talking to a young fellow. Yeah, I asked her that, do you feel proud of an Indian? She says, no, I don't feel proud as an Indian. Then I asked her why. So I mean, she answered me like this, that अभी तो सर बहुत रेप हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, हम लोग गर्ल्स से, सो हम निकलने के लिए डर रहे थे. Then I told her that at that time of, I mean, I mentioned the incident of Draupadi. That time also, yeah, our avatar Krishna was present. So that thing happened. So these things will happen. Nobody can say this will happen again and again. All that. This has happened earlier also. This has happened, I mean, today also, and this will happen tomorrow also. You cannot change the human psychology. So I mean, if I take these negative things, and I mean, then that has no help. So we have, I mean, the teachers should study more to discuss these things with the students, because young minds जो है ना, they are able to catch those things. Okay, so हमें presentability थोड़ा ठीक से करना पड़ेगा. That is the thing. Okay, so I have nothing much to Thank say. you so much, sir. Very well said that we have so much in terms of to teach whatever is we are having, we have given to our children. We realize that we already have way back, and it's time to tell that there are so many theories which were present, which has been discoveries and inventions were there in India, which has never we took the credit, but definitely our generation, the new generation should know that where we are. Very well said. Secondly, you said that multidisciplinary approach की जो बात आप कर रहे हैं, बिल्कुल वही हम बात कर रहे हैं कि you cannot teach in one way. There are so many ways we can teach, and we need to again बात वही है जैसे पहले मैडम ने बोली कि कुछ भी करने के लिए it's a time that our teachers should start. पहले हमें तैयार होना पड़ेगा. हम बच्चों से जो आज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या हम उस तरीके से रेडी हैं, चाहे वो पढ़ाने का तरीका हो, चाहे वो असेसमेंट करने का तरीका हो, या हमारे को जो आपने बोला एक जो नॉलेज एक्वायर करने की भूख है कि आई हैव टू एक्वायर, जब तक एक टीचर में एक शिक्षक में नहीं होगी टू नो दैट हाउ वी कैन जनरेट दैट इन चिल्ड्रन आल्सो.
So that is there. So we need to, teacher has to be now the, it's not a, जैसे for many years, अगर आप पुराने एग्जाम्पल से जब आप बात कर रहे थे कि when एक गुरु जो था, गुरु was there to take the responsibility कि एक बच्चे के चरित्र निर्माण से लेकर उसकी जो एजुकेशन में जो उसको कुछ स्किल्स लर्न करनी है या जो कुछ पढ़ना है, वो सारी चीजों को ओवरऑल पे पूरी जिम्मेवारी लेते थे और बच्चे को उसकी नीड के हिसाब से, उसकी स्ट्रेंथ के हिसाब से तैयार भी किया जाता था, एंड टेकिंग केयर ऑफ ऑल द type of the learning tools what we were using. And so आज वही शिक्षक, और for many years we have left our that system of tradition, and we went to the modern system where the knowledge, the teacher and student relation was just to impart the information. और आज हम जिस कगार पे खड़े हैं, तो अगर हम इंफॉर्मेशन की बात करें तो टीचर का रोल ही खत्म हो जाता है, बिकॉज इंफॉर्मेशन तो आज एक क्लिक अवे हर बच्चे के पास एक्सेसिबल है. सो it's an important that teacher has to understand that they have to move out, that their role is not to impart information. Role is to impart the information in a right way and the right information, and how to ensure that the child, it is not an information, the information get really been processed well in the brain of a child, and it has to come out in the right outcome. So very well said. And this is how we have to move ahead. Thank you so much for sharing your valuable inputs. I'll be coming to, I'm sure, I think I'm so sorry I missed Dr. Beshali Mukherjee, and she is from the Chennai School of Music Therapy. And when we talk about new education policy also, art integration की बात हो रही है, and we are working with children with disability. आज हम बात करते हैं, music has a lot of role to play. So ma'am, I would like to know your inputs, how you see the correlation, and how it will help us to integrate inclusive education with IKS. So ma'am, you have to unmute yourself. Thank you, ma'am. It's a very nice question and context as well, and valuable inputs from all speakers here. First of all, my deepest respect and gratitude to Aurobindo Society for considering me to come and present on this platform. First of all, I would like to start. My background is actually, one side is psychology, mental health in the children domain. So basically, I work with kids with mental health issues. And the other side is music in psychology. So basically, my area is psychology of music, and application is in the music therapy, as well as in the educational context. So first of all, I would like to start by saying inclusive education and music are a very powerful combination. They go hand in hand. One of the reason is the music is one of the very natural response that children makes immediately after their birth. So a baby's response to the mother is musical. There are several researches done in this area, because at that time, what the mother says to her baby, that meaning of the language is not important to the child, to the baby, but the prosody of the mother's voice, what we talk in terms of up and down, high pitched, a musical intonation in the voice to match to the baby's health, the baby's emotion, they all have musical properties. What a baby can understood immediately after it is born. So that is from where actually music in human life starts, from a mother's voice. So definitely that tool, that medium, when we bring it to the context of education, of course, it helps a lot to the children and of course the students. Now I'm going to the other side. If I have to connect and integrate from IKS,
Indian knowledge system. So in Indian knowledge system, music is seen as a god. One of its very primitive origin that it is believed universe was created from sound Om, which is part of that sound, that mantra, that chanting experiences is part of each and every Indian's life. The sound Om. So sound is viewed as a god. At the same time, universe is believed to be created from sound. So this line of research, this line of knowledge also come and get very well integrated into the educational context. So these two are my principles to talk further. So now I'm coming to the how music can be inclusive for all in a classroom. So more practical strategies. You see, music is a medium where all participants who are into that context, who are participating in music, is considered as similar, as same. So where we can really overcome any kind of impairment or disability or any difficulties that a particular child has, but in the context of music, they are all equal and we can bridge that gap, basically the gap in social understanding, gap in cognitive ability, gap in other mental abilities. So in all areas, by using music, we can actually remove that gap among the students when it is music. And in terms of teaching and implementing, there are many ways that music can be applied. So here I have heard some of you were talking about storytelling. You see, when folk music is used by integrating the local cultural components into the storytelling, it goes very well to the children. And it can also be a very powerful medium of their cultural identity. And if we look at in today's scenario, because of lots of advancement in technologies and also the availability of the technologies in our daily day-to-day life, overusage of technology through smartphone and all, many children we see, especially the young generation, they are losing their cultural identity. So the regional belief, the regional habits, cultural practices, which can very well be delivered through music in a classroom. And apart from that, you see, starting from the sensory motor abilities, sensory stimulation to very advanced level of cognitive growth and development, most importantly, the emotional regulation among children, which is also a very important aspect, which is to be integrated through some tools or some medium, that how to help children to regulate their emotions in a socially desirable manner. So there also music is something, by using what you can very well help a child to self-express. And self-expressions can be related to the emotional expression. Self-expression can also be related to the creativity. So the creative expressions, when you are allowing somebody in the class to express themselves creatively, automatically the emotions in a very positive and desirable manner get connected to that creative acts. So music is something in a very fluid manner. It can be integrated, and you can say music as a tool is very much an inclusive factor or a medium in the classroom context for both the student's perspective and also from the curriculum perspective. And of course, you see that the music, not only just the cognitive growth, so sensory motor ability, emotional regulation, but music is also a medium of bonding. Simply going to a class of maybe the first year students, second year students, when they are academically pressured, stressed, you say just ask them to sit in a circle and do some jamming together by using some percussion instruments. Even if the percussion instruments are not also there, it's fine. Use your own body percussion, use your own body rhythms and produce something. You see, immediately the connection forms between children.
So, at various stages of the student development in a child's development, and also for the higher education sectors, also at all levels, I feel music is one of the most powerful way that as a teacher we can connect with children, and for students also it becomes a medium of self-expression and creativity. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. You very well said. Even I have seen that music, there's a lot of acceptance comes with the music. I have seen people, they don't have a language, they particular language they're not comfortable in speaking. They don't, but their love for music, basically they sing in a particular language. Even they don't understand the meaning, but they understand the music, which inspires them to adapt and accept the language also. So that is there. And music has lot of you said that the creating vibrations which are very very important and positive, and it has a lot of neural effect also. So scientifically proven that so it has a very positive effect on the learning of learner. And so it has a lot of role to play. And so when we talk about in education also, the whole curriculum, because of our current system, or मैं कहूँ कि कुछ साल पहले से, the way we have adopted ourselves, we have not given importance to certain the subjects in the school. So ऐसे लगता है शायद art and culture important subject नहीं है. Only studying math, science, and this is something, and it was always been thrust upon. But the whole curriculum is designed that everything which is there, चाहे वो चाहे वो exercise हो, चाहे वो yoga हो, चाहे वो music हो, चाहे वो sports हो, every activity has a role to play, and everything is important, which should not be neglected. और सबसे बड़ी गलती हम तब करते हैं, अगर जब जब कोई बच्चा परफॉर्म नहीं कर रहा होता, तो सबसे पहले हम ये सारी चीजें हटा देते हैं. एक्चुअली दोज आर ऑलवेज द मोटिवेटिंग एंड सपोर्टिंग फैक्टर, कि जहाँ बच्चा सीख सकता है, और सबसे पहले यही हटाते हैं कि नहीं, खेलना बंद कर देते हैं, गाना बंद कर देते हैं. ये इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ पढ़ना इम्पोर्टेंट है. सो दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट everything has a role to play in the development of the child. And in education it is important. And I whatever I also just would gather. like to mention, ma'am, one more thing, that it is also a kind of research area for me, that as we talk about the resource rooms in school for children or for specially able children, so in the resource room, definitely we know that there will be a presence of special educator, there will be a presence of a school psychologist. So I think the time has definitely come. The music should be a part of a resource room, because through music, a lot of functional skills can be taught to a specially able child. As you said, that speech and communication, any kind of neural issues, social interaction, communication, so many things a child can learn. So music therapists should be a part of Yeah, it should resource be room not only the in the yeah, presence context. Yes. it not only the resource room, it should be the part of the classroom. Only then we can see Classroom, that the yes, inclusion definitely. happens in the classroom. It should be Yeah. given the due importance. That this is As I simple completely agree as with you. a day can be started with chanting. So Yeah. it's immediately that the stress, any kind of negativity, Yeah. it can be vented out through simple chanting, maybe just a 10 minutes at the start of a day and the end of the day. If a students get opportunity to start the day with chants, and So because coming from that, I'm leading a program on inclusive education on the behalf of Sri Aurobindo Society. So I can very well relate what you said. We have rehab centers across country जहाँ पे हम इस तरीके की सारी practices को involve करने की कोशिश कर रहे हैं. और जो आज के सेशन में जो what I just wanted to sum up that what we all agree that जो आज हम इंक्लूजन की बात कर रहे हैं वो नई बात नहीं कर रहे हैं. ये पहले से प्रैक्टिसेस थी.
The only thing is ki something we left in between. Now we have to come again. Through this, we want to request all the educators also that this is not something extra you'll be doing. This is expected from every teacher, every stakeholder rather. When you are working with children in education, then we have to understand that children will always come with the diversity. Cannot be one classroom with all same kind of children, and then definitely there will not be any creativity in the world. We will be having those diversity in our classroom. So rather than expecting them to change, we have to alter ourselves, and we have to ensure that we are taking care of every need of every child, and ensuring that the education has to be more meaningful for them and enjoyable experience for them. And for that, if we have to learn many techniques. We have to learn as a teacher, मेरे को म्यूजिक भी समझना है तो मेरे को कोशिश करनी पड़ेगी, so that I'll ensure that every child in my class is able to learn and grasp. And so right from the school education to the higher education, everywhere every step is important. And जब हम बात करें disability with the lens of disability, the earlier classes जहाँ पे हम बहुत सारी चीजें छोड़ देते हैं, when those are the most important year of child development, जहाँ पे हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि बच्चे का लर्निंग स्टाइल क्या है, बच्चा कैसा है, कैसा समझना चाहता है। क्योंकि वहीं से जितनी जल्दी हम बच्चों को पकड़ लेते हैं, उनकी लर्निंग चैलेंजेस को समझ लेते हैं एंड अडेप्ट आवरसेल्फ एज पर देयर नीड, उतनी ही आगे जाके वही बच्चे बहुत ही कामयाब और अच्छे और एक इंडिपेंडेंट इंसान बन सकते हैं। नहीं तो कहीं ना कहीं हम अपनी जो कमियों को बच्चों के ऊपर अ, डाल देते हैं, और हम ये कहते और देन वी यूज एज पीपल वी यूज कि शायद ये बच्चा स्लो लर्नर है। तो बच्चा कोई स्लो लर्नर नहीं होता, बच्चे का लर्निंग पैटर्न अलग होता है। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट पैटर्न एंड वी हैव टू alter ourselves, and we have so many things in our system, indigenous Indian knowledge system, which we can actually bring here today, and we can strengthen our inclusive education, चाहे वो म्यूजिक की बात हो, स्टोरी टेलिंग की बात हो, चाहे हम हमारे वैदिक मैथ्स की बात हो, so many things which are available. The only thing we have to just dig deep into what we had, and now we have to incorporate those things into our teaching practices, so that we can make a beautiful um, country, and the coming generation will be more responsible, more empathetic. और जो हम बात सर ने कहा कि आज बहुत सारे समाज में हमें इश्यूज आज बात करते हैं, और मैक्सिमम जब हम क्रिमिनल एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं, या बहुत सारी प्रैक्टिसेस ऐसी हो रही हैं जहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा यूथ इन्वॉल्व है। सो एज एन एजुकेटर हमें जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। वी हैव टू क्वेश्चन आवरसेल्फ वेयर वी वेंट रॉन्ग, so where we have to change, where we have to strengthen ourselves, so that we can actually create beautiful souls, and those are more responsible, and they can do the justice. So with that, I will I end up our discussion. And still we have a time. Is there anybody who wants to add something more about it, more to it? Please, you can contribute. Namaste, madam. Yes, ma'am. I wanted to tell one more point about we have a syllabus-oriented teaching methodology. We get the syllabus. Teachers are receiving syllabus point and teaching methodology. In fact, I feel it should not be restricted to that particular teaching methodology, because it will differ from student to student. So in case we have that observation, if the teachers are trained to observe which kind of student want, which at times lecture may only be needed for that student. I have one batch student telling me that, madam, please don't follow that syllabus pattern because it is only happening for documentation. Please do give lecture because we are not understanding these Samskrita shlokas. Please do lecture. We want that lecturing. So at times lecturing only may be what the student is needed for that particular topic.
So let the teacher decide according to the need for the student. So if that kind of orientation is given for the teachers when the teaching training is happening, that would help the students a lot for learning. So this is one Very request well. probably. Yeah, I thank IKS Aurobindo Society for giving me this opportunity to put forth this one point. Extra minute So I have taken, madam. I'm sorry. no, no, no. So that's good, and I'm happy that you brought that. I just wanted to bring into the light that Sri Aurobindo Society is actually working on this at a bigger level. So through our program Project Inclusion, we have created end-to-end cycle for teachers, जहाँ पे हम teachers को सिर्फ sensitize and train नहीं करे to understand inclusive education, to understand various neurodiversities and learning challenges in children. उसी के साथ-साथ हम ये पूरा प्रोग्राम डिजिटल है जो पूरे कंट्री में आज अडॉप्ट हुआ है, जहाँ पे टीचर्स समझ भी रहे हैं। उसके बाद वो स्क्रीन करके बच्चों के उन चैलेंजेस को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं एंड उन्हीं टीचर्स को हम कस्टमाइज़ प्लान्स भी देते हैं कि बच्चे के नीड के हिसाब से कैसे वो यूनिवर्सल डिज़ाइन लर्निंग के प्रिंसिपल पे उन उन पैडागॉजीज़ को वो क्लास में यूज़ कर सकती हैं, जिससे वही बच्चा नहीं सारे बच्चे सीख सकें। जो आपने कहा कि वी हैव डेवलप्ड अ प्रोग्राम, द प्रोग्राम हैज़ बीन वेरी वेल accepted by Government of India, Department of Person with Disability. So whatever you are saying, it has now come on, is available, and you can also be a part of it. But that's really, really important. Thank you so much for saying. So thank you all the panelists for your giving your valuable inputs and time. And it is just a beginning. We need to have such more discussions, more and more, so that we can bring something more beautiful here. Thank you so much. Thank you. Hello, everyone. There will be a short break of 10 to 15 minutes. We will again rejoin the session, the next session and the last session of the day. So we'll see you all at around 3:45. Thank you.
तो भारत की स्कूली शिक्षा में एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। एक नया चार्टर आया है जो हमारी क्लासरूम्स को शायद हमेशा के लिए बदल सकता है। और देखिए, ये सिर्फ सिलेबस में एक और चैप्टर जोड़ने की बात नहीं है। ये एक पूरा रोड मैप है कि कैसे हमारी हजारों साल पुरानी ज्ञान परंपराओं को आज की मॉडर्न एजुकेशन से जोड़ा जाए। तो चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि इसका असल में मतलब क्या है। वह अपनी समृद्धि लुटाती है, जैसे अनंत अंतरिक्ष के हर इंच को जीवन और ऊर्जा से भर देता है। श्री अरबिंदो के ये शब्द सही मायनों में इस चार्टर की आत्मा है। ये भारत की उस बेहिसाब क्रिएटिव एनर्जी की बात करते हैं जिसे ये नई शिक्षा नीति फिर से जगाना चाहती है। तो समझिए, ये सिर्फ एक सरकारी दस्तावेज नहीं, ये एक नई सोच की शुरुआत है। तो सबसे पहला और बड़ा सवाल, आखिर इस चार्टर की जरूरत ही क्यों पड़ी? ये कोई और सरकारी दस्तावेज तो है नहीं। इसके पीछे एक बहुत गहरी सोच है। तो चलिए पता करते हैं कि इस बदलाव की नींव में आखिर है क्या। आज हमारी शिक्षा व्यवस्था एक तरह के चौराहे पर खड़ी है। एक रास्ता हमें ग्लोबल दुनिया की तरफ ले जाता है और दूसरा रास्ता हमारी हजारों साल पुरानी सांस्कृतिक जड़ों की तरफ। अब सवाल यह है कि क्या हम दोनों पर एक साथ चल सकते हैं? ये चार्टर कहता है हाँ, बिल्कुल चल सकते हैं। और सच कहूं तो यही संतुलन बनाना सबसे बड़ी चुनौती भी है और सबसे बड़ा मौका भी। अच्छा, हम बार बार भारतीय ज्ञान या इंडियन नॉलेज की बात कर रहे हैं, पर इसका मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ वेद पुराणों की बातें हैं या कुछ और भी है इसमें? ये समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए देखते हैं कि ये चार्टर खुद इसे कैसे डिफाइन करता है। तो ये बात बिल्कुल साफ है। आईकेएस का मतलब सिर्फ पुराने ग्रंथ नहीं है। हम बात कर रहे हैं साइंस की, फिलॉसफी की, आर्ट की, आर्किटेक्चर की, इन सब का एक बहुत बड़ा और जीता जागता खजाना। ये भारत की इंटेलेक्चुअल विरासत है जिसे अब क्लासरूम्स तक लाने की तैयारी है। और ये कवर इमेज ये पूरी सोच को एक तस्वीर में दिखा देती है। जरा ध्यान से देखिए कैसे साइंस, आर्ट और ट्रेडिशन के सिंबल एक ही पहिए में साथ घूम रहे हैं। ये यही बताता है कि ज्ञान को अलग अलग डिब्बों में नहीं बांटा जा सकता। ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि इतने बड़े ज्ञान के भंडार को क्लासरूम में लाया कैसे जाए? क्या बस नया सिलेबस जोड़ने जैसा आसान काम नहीं है। इसे बहुत ही जिम्मेदारी से करना होगा। और इसीलिए ये चार्टर कुछ गाइडलाइंस देता है, कुछ सिद्धांत जो इस पूरे प्रोसेस की नींव है। पहला और सबसे जरूरी सिद्धांत, ये ज्ञान सबके लिए है। चार्टर बिल्कुल साफ कहता है कि जो भी पढ़ाया जाएगा वो किसी एक धर्म या विचारधारा का प्रचार नहीं करेगा। ये हर तरह के स्टूडेंट्स के लिए होगा और भारत की शानदार डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करेगा। इसका मकसद जोड़ना है, तोड़ना नहीं। दूसरा सिद्धांत है एकेडमिक मजबूती। इसका मतलब ये कि आईकेएस को अंधविश्वास की तरह नहीं, बल्कि एक साइंटिफिक और लॉजिकल नजरिए से पढ़ाया जाएगा। जो भी फैक्ट्स होंगे वो ऐतिहासिक रूप से सही होंगे। और इसका मकसद होगा स्टूडेंट्स को सवाल पूछने और क्रिएटिव बनने के लिए उकसाना, ना कि आंख बंद करके कुछ भी मान लेने के लिए। और हाँ, यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। आईकेएस कोई नया अलग से सब्जेक्ट नहीं बनाया जाएगा। ऐसा करने से तो बच्चों पर सिर्फ बोझ पड़ेगा, बल्कि इसे मैथ्स, साइंस और आर्ट्स जैसे मौजूदा सब्जेक्ट्स में ही गूंथा जाएगा, ताकि स्टूडेंट्स चीजों को गहराई से समझे, सिर्फ रट्टा ना मारे। ठीक है, तो सिद्धांत तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, पर सबसे बड़ा सवाल, ये सब कागज से निकलकर असली क्लासरूम तक पहुंचेगा कैसे? जमीन पर इसे लागू कैसे किया जाएगा? चलिए अब इसके कैसे वाले हिस्से पर आते हैं। तो इसके लिए चार्टर एक 4 स्टेप का रोड मैप देता है। पहला, ये एनईपी 2020 जैसी बड़ी नेशनल पॉलिसी के साथ मिलकर चलेगा। दूसरा, और ये बहुत जरूरी है, टीचर्स को सही ट्रेनिंग और रिसोर्स दिए जाएंगे। तीसरा, जैसा हमने अभी बात की, इसे सब्जेक्ट्स में इंटीग्रेट किया जाएगा। और चौथा, स्थानीय कारीगरों और एक्सपर्ट्स को सम्मान के साथ इस प्रोसेस में शामिल किया जाएगा, ताकि ज्ञान सिर्फ किताबों तक ना रह जाए। और इस पूरे प्रोसेस को जमीन पर कामयाब बनाने के लिए चार्टर एक बहुत ही प्रैक्टिकल सुझाव देता है। हर स्कूल में एक आईकेएस कोऑर्डिनेटर होगा। ये वो इंसान होगा जो इस बदलाव को लीड करेगा, टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए मेन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा। ये सिर्फ हवा हवाई बातें नहीं है, इसके साथ जवाबदेही भी जोड़ी गई है। चार्टर ये भी बताता है कि प्रोग्रेस को नापा कैसे जाएगा। टीचर्स, स्टूडेंट्स और स्कूल तीनों लेवल पर देखा जाएगा कि बदलाव हो भी रहा है या नहीं। इससे ये पक्का होगा कि योजना सिर्फ कागजों पर न रह जाए, बल्कि क्लासरूम में वाकई असर डाले।
तो इन सब नियमों, सिद्धांतों और योजनाओं को मिलाकर देखें तो बड़ी तस्वीर क्या बनती है? इन सब के पीछे का असली मकसद, द एंड गेम, क्या है? चलिए सारे डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। आखिर में सारी बात एक ही लक्ष्य पर आकर टिक जाती है। एक ऐसा लर्निंग माहौल बनाना जो अपनी जड़ों से जुड़ा हो, एकेडमिक तौर पर मजबूत हो, सबके लिए हो और आने वाले कल की चुनौतियों के लिए तैयार हो। बस यही इस चार्टर का सपना है। और अंत में हम एक बार फिर श्री अरबिंदो के उन्हीं शब्दों पर लौटते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि ये सिर्फ सिलेबस बदलने की कवायद नहीं है, ये एक तरह से सांस्कृतिक पुनर्जागरण की कोशिश है, हमारे प्राचीन ज्ञान को फिर से पाना और उसे आज की दुनिया के लिए रेलेवेंट बनाना। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या प्राचीन ज्ञान और मॉडर्न एजुकेशन का ये मेल वाकई कल के इनोवेटर्स तैयार कर सकता है? ये इस पूरे चार्टर का सबसे बड़ा वादा भी है और सबसे बड़ी चुनौती भी। जवाब तो खैर वक्त ही देगा, लेकिन इतना जरूर है कि ये चार्टर उस भविष्य की तरफ एक बहुत ही साहसी और जरूरी कदम है। Hello, everybody. We would like to wait for another 5 minutes. We have a few more panelists who will be joining us.
Hello, everybody. Welcome to the last session of the day. I know we have been very eagerly waiting for this particular session. Since morning, we have spoken a lot about the different aspects of IKS, be it IKS through the lens of science and maths, IKS through the lens of art, IKS through the lens of inclusion. And now we will be speaking about the most important aspect, which is the implementation of IKS inside classrooms today. And with this, I would like to call upon our panelists for the day. We are joined by Dr. Rana P.V. Singh, who is a retired professor from the Banaras Hindu University. We also have with us Dr. Anjani Prasad, who is from the Suman Uttarakhand University. We also have with us uh, Doctor from the Department My of name is Environmental Kshama Planning. Kshama Purdambekar, yeah. Thank you so much, Dr. Shama. So we have with us Dr. Shama, who is from the Department of Environment Planning. We will also be joined a little later by Dr. Anuradha Chaudhary, who is from the Department of Humanities and Social Sciences, and is also from the Ministry of Education, Government of India. But just to kickstart this particular panel, I would like to direct my first question to Dr. Rana. Dr. Rana, when we've heard a lot today about IKS, but from the vast experience that you have and the work that you have done, what are the few crucial action points that we should keep in mind when we think about IKS implementation in the classrooms today? Thank you very much. So let me say, based on our practical exercise, what we are doing since last 5 years in a school that is called Smith Memorial School in Varanasi. So there are only two aspects that to be discussed and that to be practically implemented. First thing is to make awakening among students, especially we are talking about the young students, that what is the cultural heritage. So we have a movement called Reconnecting with Your Own Culture. So every Saturday we have a program that let the children may know in their own area that what is the cultural heritage, what they can learn. So it is something like self-awakening program based on the cultural heritage. So we have, first thing is the awakening, to know that how they are reacting, not first to impose, but let them first come like this. And then let them say how to explain this, how they can co-share this. And then the third is that what they can do to preserve that. So that is the very basic idea. What you said, these are the 3 steps. And all together we call it like deep education. So generally when we are talking about the educational system, we have a lot of systems, modules, and methods and techniques. Okay, our main aim is that to start from the culture, self-recognition, and in spiritual sense. When we are talking about, okay, I am not a specialist for Aurobindo. Of course, I have several, in my writings, I have quoted him. So basic thing is spirituality. Religion is a step, it is not destination. Spirituality is a destination. Spirituality is so many ways maybe, but the spirituality is always self-realization. Swa antarakarana jagarana. That you can say in the Sanskrit myth. From in the self, inner side. The outer side, whatever you are practicing, inner side you have to do. So that is practically, since 5 years we find good progress. And already we have reported in one of the UNESCO program, which is in the process, in probably that will be published, that what is the result. So 2 things we have found. The one thing I found that what we call in our literature, sansakara. So they are trying to do something for the family, for the neighborhood, and especially how I got that to the place, because they were not knowing me, I was not knowing
Anyway, so somehow through the newspaper, they came to know that here is a person doing something for the cultural heritage. So teachers suggested that you have to select an old guy who may be retired old, and you can say, here is my grandpa, like that. And then you have to choose that person from the city, this city of Varanasi. So 5 years ago, they chosen me. So I was surprised, my goodness, how this program is going on. What is that? This way the whole thing started. And now, since the last 2-3 years, what happened, like last year, 2 kids has prepared all these things, how to communicate to the other culture. And that had been accepted in Japan. And 2 child gone to Japan. The Japanese Association of that children education, they said, my goodness, how wonderful this is. Something they have plotted, here is a temple, and that is something from Japan, what to do, something like that. So we say that first thing is awakening, then advocacy, that you have to communicate, action, and not for you. You can learn, but always co-share. So altogether, this we can put in a simple word and our philosophic term. If you follow Aurobindo's philosophy, then we can say, so we are not using the word spiritual. Spiritual is the root. It is infinite. And that is the core of the Indian knowledge system also, in a way. Of course, now this is a catchy word everywhere, Indian knowledge system. So it is okay. So we call it that is parallel to that deep ecology movement, what is started in Norway by Erne Nas long back. So same way we have coined this word deep education. And this way our program is going. So I will, when this paper will be out, our proof will be ready, that may be ready by December. Then I can send that what we have highlighted and what they are doing. So this is the way, what is the things, practically what we are doing. So that is in short, I have tried to narrate that. Thank you very much. Thank you so much, Dr. Rana. I think that that was a great opener and shed a lot of light on the implementation that is happening. My next question would be to you, Dr. Anjali. I would like to know that what steps, how do you think IKS might shape the future direction of Indian education going forward? Dr. Anjali? Hello. Hello. Please tell me. Please repeat the question. Yes, sir. So I wanted to know, Dr. Anjali, how is it that IKS might shape the direction of Indian education going forward? एक मिनट जरा इसको देख लें. हेलो, हाँ मैम जरा कृपया दोबारा बताएंगे कि क्या पूछ रहे हो. Sure, sir. Sure, sir. Sure, sir. I would like to repeat my question, sir. I would like to ask, how do you think that IKS is today shaping the future direction of Indian education? हाँ मैम, ये बड़ा महत्वपूर्ण आपका पहली बात तो ये आपने ये विषय रखा, और हम की चर्चा करें आईपीएस के भी राणा पीबी सिंह सर बता रहे थे इसको स्पिरिचुअल और कैसे दिया जाए, पर मुख्य मुद्दा ये है कि हमारा जो यूथ है जिसके लिए हम ये इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं वो कितना इसका स्टेबल चाहिए. मैम प्लीज, हाँ, वो इसको लेके कितना, पहली बात तो इसको लेके कितना इंटरेस्टेड है और कितना वो इसको सहज रूप में लेना चाहता है, क्योंकि सारा कुछ मेरा जो कुछ भी हम होमवर्क कर रहे हैं आईकेएस को लेके, अल्टीमेटली हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, जो हमारा गोल है, हमारा स्टूडेंट्स है. आज हम जब इंटरेक्ट करते हैं अपने यूथ से तो वो बिल्कुल अलग दिशा में जा रहा है. तो हम जब इसको फ्यूचर के लिए जब हमने अपने उस युवा मन को पहले पढ़ें कि वो चाहता क्या है. आईकेएस तो बड़ा गूढ़ है, रहस्य है और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के लिए इसकी बड़ी उपयोगिता भी है. तो सबसे महत्वपूर्ण है यूथ मन को पढ़ना. एक
दूसरी चीज, अब वो बड़ा बेहद विषय है, उसके ढेर सारे क्षेत्र हैं। मैं विचार कर रहा था कि इसके 4 बड़े क्षेत्र हैं। एक तो हमारा जो कैरिकुलम डिजाइन करते हैं, सरकार एनईपी लेके आई है और उसमें उसने मैंडेटरी कर दिया कि IKS को इसका पार्ट हो गया। हम लोग वोकेशनल और डिफरेंट उसमें इसको पढ़ा भी रहे हैं। लेकिन मुद्दा है कि मैंने कहा यूथ उसको किस रूप में लेता है। अब इसके लिए हमें तो एक तो मैं विचार कर रहा था, इसको हमें इंक्रीमेंटल मोड में लागू करना होगा कि हमारा जो स्कूल एजुकेशन है उसमें, जो हमारा मिडिल है उसमें, और जो हायर एजुकेशन हम लोग हैं उसमें, कि अलग अलग लेवल को इसको हमें पहले उस हिसाब से हमारे सिलेबस को डिजाइन करना होगा कि जो कंटेंट हम दे रहे हैं वो हमारा किस लेवल का बच्चा है और उसके लिए कितना ये उसको ग्रैप्स कर रहा है, कितना ग्रहण कर रहा है, और महत्वपूर्ण इंटरेस्ट उसका कैसे है। तो सबसे मेजर इसको एक इंटरेस्ट बच्चे का कि हम कैसे उसके रुचि के हिसाब से IKS को उसको हम डिलीवर कर पाए उसके। तो एक बड़ा मुद्दा इसमें, इसके लिए क्या कर सकते हैं कि उसको हम इजी वे में, जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि बच्चा नई चीजों को, पहले मैंने उसका इंटरेस्ट है नहीं इसमें, वो तो भागा दौड़ की आज की जिंदगी है, डिजिटल जिंदगी, तो लेगा नहीं। तो इसको कैसे डिजिटली हम रूप में इसको उसको हम प्रस्तुत कर पाए उस बच्चे के सामने। तो मैंने कहा इसको देखना होगा हमें कि किस लेवल के बच्चे को हम हमारा फोकस ग्रुप हमारा कौन सा है, बच्चा किस लेवल का है, उसके हिसाब से अपने पाठ्यक्रम में इन कंटेंट को हम रख पाएंगे। एक दूसरी चीज है कि जो हमारा IKS का जो पूरा का पूरा जो हमारी जिसे हम भारतीय ज्ञान कहते हैं, अब भारतीय ज्ञान एक बड़ा बेहद पहलू है। भारतीय ज्ञान कब, प्राचीन से लेके वर्तमान सभी भारतीय ज्ञान है। जब हम पढ़ते हैं तो शब्द को जरा ध्यान दीजिए, प्राचीन भारतीय ज्ञान नहीं, सरकार ने इसमें रखा है ये नीति में कि भारतीय ज्ञान। तो भारतीय ज्ञान प्राचीन से लेके वर्तमान तक का हमारा शामिल। तो पहले तो इसे हम डिफरेंट पीरियड में डिवाइड करें कि किस, हम प्राचीन, फिर मिडिल, फिर वर्तमान समय, किसमें करना क्या चाह रहे हैं। अब जो प्राचीन ज्ञान है वो तो उसमें एक हम लोग भी जब से लागू कर रहे हैं अपने यहाँ, तो उसमें बड़ी दिक्कत ये आ रही कि जो हमारी जो प्राचीन ज्ञान है वो 3 क्षेत्रों में मोटे तौर पे विभक्ति से हम सनातन धर्म कहते हैं, बौद्ध और जैन धर्म। अब उनके जो मुख्य जो स्रोत हैं पांडुलिपियां, वो तो आप देखते हैं कि हमारा भारत देश का है, पहले उपनिवेश काल रहा है, कितने इसमें तो मेन जो पांडुलिपि क्या हमारे देश में या एब्राड्स में है, तो पहले उनको ढूंढा जाए। एक दूसरी चीज कि जब हम उसको अपने सिलेबस में ले आते हैं तो हमारे पाठ्यक्रम में जो कंटेंट है वो अपने जो मौलिक उसकी जो स्वरूप है, उसका जो अर्थ है, उसका जो भाव है, यदि हम उस रूप में उसको नहीं रखेंगे तो वास्तव में जो भी हमारे पास जो रीडिंग मटेरियल, जैसे हम लोग मैंडेटरी कर दिया सरकार ने तो सिलेबस में हमारे आ गया, पर मुद्दा है कि बच्चे को जो एक्चुअल रीडिंग मटेरियल नहीं मिल पा रहा है। तो अब वो रीडिंग मटेरियल वाया 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 अनुवादित किया हुआ मिल रहा है। तो सबसे IKS को जो हम लागू करने जा रहे हैं फ्यूचर के लिए, तो सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारा जो मेन कंटेंट है वो क्या अपने जहाँ से उसका मेन सोर्स है उसमें क्या उसी रूप में, उसी अर्थ और उसी भाव के रूप में उसे हम अपने बच्चों को दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, इस पे वो ध्यान देने की हमें आवश्यकता है। फिर उसके डिफरेंट सेक्टर्स हैं। हम अपने जब भारतीय ज्ञान की चर्चा करते हैं तो धर्म है, दर्शन है, पर्यावरणीय चेतना है, इसके अलावा कृषि है, हमारे राजस्व है, खगोल विज्ञान है, तो ढेर सारे सेक्टर। अब हम बच्चे को देना क्या चाह रहे हैं, इसके लिए मुझे उसको एक ऑर्डर में करना होगा। फिर मैंने कहा कि उसमें बच्चों को मुझे देखना होगा कि किस ग्रुप के लिए हम दे रहे हैं, किस स्टेज के लिए हम दे रहे हैं। इसको मैं सिस्टमेटिक रूप में जो हम इसको बच्चे को दे पाएंगे वास्तव में तभी फ्रूटफुल होगी। हम लोग में चर्चा ही करते रह जाएंगे। और हमारा, मैंने कहा मेन फोकस क्या, बच्चा हमारा, हमारी जनरेशन जिसको आगे लेके जा पाए, उसके लिए बहुत जरूरी मैम कि उसको हम व्यवस्थित रूप में, लॉजिकल रूप में, बच्चे के इंटरेस्ट के रूप में। और आज हमारा कई चर्चा हम लोग करते हैं आपस में, एकेडमिक चर्चा होती है कि क्या हम, एक चर्चा इसमें ये भी होती है कि क्या हम पीछे लौटना चाह रहे हैं, दुनिया आगे चंद्रमा और पे जा रही है, तो क्या हम जब भारतीय ज्ञान की चर्चा करते हैं तो एक सामान्य अर्थ ये जाता है कि अपने प्राचीन की तरफ लौट रहे हैं। तो ये भी महत्वपूर्ण तथ्य है कि प्राचीन के साथ जुड़े तो, लेकिन हम रिलेवेंट हों, हम साइंटिफिक हों, हम लॉजिकल हों। इन बिंदुओं को यदि हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से अपने हम इंडियन नॉलेज को लागू करेंगे और बच्चों को रिच को देख के, तो मुझे लगता है हम ज्यादा सार्थक होंगे और ये फ्रूटफुल भी होगा बच्चों के लिए भी और हमारे लिए। व्यस्तताएं बहुत है, दरअसल एग्जाम चल रहा है, मैं इसलिए भागा दौड़ी में हाँ शामिल हो पा रहे आपके साथ। थैंक यू सो मच सर। नहीं, आई थिंक आपने बहुत ही clearly and in a lot of detail आपने define किया है कि what are the next steps and what are the things that we should keep in mind, and all of the points जो आपने किए हैं, all of them are extremely valid. Dr. Sharma, I would thank you for your patience, ma'am, and I would like to invite you now to share your thoughts
based on what sir has said, is there anything you would like to add to it? Or are there any examples जो आपने देखे हैं real life में जहाँ पे IKS small doses में implement हो रहा है, standardized way में हो रहा है, या relevant form में, contextual और relevant form में implement हो रहा है on the ground? हाँ, इसके पहले के दोनों ही स्पीकर ने बहुत ही अच्छी बात बोली है। दोनों ही चीजें जरूरी है, लाइक वन हैविंग अ फोरफादर फिगर, ग्रैंडफादर फिगर, और दूसरा जो सर ने कहा है बिल्कुल कि लाइक कमिंग टू द ग्राउंड एंड थिंकिंग व्हाट, लुकिंग एट व्हाट यूथ वांट्स. So to bridge those two things, it is a challenging job. So now there are different levels at which you can actually insert it. So first, when we look into the reading material or the text which is there in the school, it is really very sparse. बहुत थोड़ी थोड़ी जगह पे कुछ कुछ बातें होती हैं. We need to revamp it. Government has taken up under NEP that we have to take it. So I think it will fall in place very soon. दूसरी होती है पर्सन शुड फील इंटरेस्टेड, जैसे सर ने कहा. तो वी हैव स्टार्टेड दिस वन थिंग इन आवर IKS वेयर वी थॉट वी हैव मेड गेम्स. लाइक जब हमें पद रचना, संरचना सिखानी है, लाइक यदि हम आई एम फ्रॉम टाउन मतलब स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, तो इसमें मेरा रोल है एज अ डेवलपमेंट और अंडरस्टैंडिंग ऑफ टाउन प्लानिंग इन द सिटीज. सो व्हाट वी डिड वाज, जब हमारे पास एक पदरचना होती है, एक सर्टन लेआउट होता है, जनरली हम लोग स्क्वायर में ही रखते हैं, तो हाउ टू मेक पीपल इंटरेस्टेड इट. सो व्हाट वी हैड डेवलप्ड इज वी हैव मेड अ गेम. तो उस गेम में क्लूज हैं. तो जैसे इंद्र के लिए यदि कोई क्लू है पीछे, तो उसमें देर आर मल्टीपल वेज ऑफ लर्निंग. थोड़ा एक पजल गेम भी होता है और उस तरह से यूथ इंटरेस्टेड भी होता है. तो वी डिड दिस इन द वन ऑफ द मीटिंग व्हेन देयर वाज इन by Council of Architecture, it was done. So पद विन्यास के लिए we tried to make them understand. So we took that game और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला. So I think that is one of the way where you can connect to people. अभी मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ इंस्टाग्राम पे देर आर सर्टन ऑप्शंस एंड प्रपोजल्स कि भारतीय जो पुराने खेल हैं या पुरानी चीजें हैं उसको दैट पीपल आर मेकिंग गेम्स आउट ऑफ इट एंड सेइंग बच्चों को सिखाया जाए. सो आई थिंक दैट इज इनकलकेटिंग ऑल दिस इनटू एट द लोएस्ट लेवल, जहां पर हम लोग पहले एनवायरमेंट सिखाया करते थे. एक सब्जेक्ट हुआ करता था EVM, इफ यू रिमेम्बर, तो वो EVM सब बच्चों को पढ़ना पड़ता था. तो सिमिलरली दिस काइंड ऑफ थिंग हैज टू कम अप एट अ वेरी ग्रास रूट लेवल. तभी, क्योंकि यदि अभी मैं देखती हूँ मेरे बच्चे हैं, दे डू नॉट हैव वेरी गुड फेथ इन द इंडियन नॉलेज. बोले प्रूफ कहाँ बताइए. नाउ बिकॉज एवरी चाइल्ड और स्टूडेंट वांट्स प्रूफ. सो बट नाउ इफ यू गो टू द नेक्स्ट जनरेशन जो अभी आ रही है, यू स्टार्ट गिविंग प्रूफ फ्रॉम बिगिनिंग. तो अभी कुछ सालों में इसके ऊपर काम हुआ है. राणा सर भी अग्री करेंगे कि कुछ सालों से इसका अवेयरनेस भी बढ़ा है. अभी देयर इज अ सेक्शन ऑफ यूथ हु इज आल्सो इंटरेस्टेड इन लुकिंग इनटू इट, एंड सम ऑफ आवर स्टूडेंट्स आर ओनली डूइंग दिस. दे आर मेकिंग सम इवेंट्स व्हेन बुक रीडिंग होता है या टेक्स्ट रीडिंग होता है. तो उस तरह से व्हेन यूथ डज इट, तो उनको लगता है कि हमारा पीयर कर रहा है तो मे बी राइट, इट इज द राइट टाइम, वी शुड ऑल्सो टेक पार्ट इनटू इट. तो इस तरह की जो प्रोग्राम्स है दैट वुड बी रियली गुड एंड इंटरेस्टिंग टू क्रिएट अवेयरनेस अमंगस्ट जनरेशन हु इज गोइंग टू बिल्ड द नेशन. अभी क्या मतलब व्हाट आई एक्सपीरियंस इज, सारा हम लोग आफ्टर अ सर्टेन एज ही फील नहीं भारतीय ज्ञान को भी देखना चाहिए, एंड देन वी रीड इट. तब तक जो मेकिंग ईयर्स ऑफ द कंट्री है वो चले जाते हैं. देन वी थिंक कि नहीं ये अच्छा है, अच्छा, बट आप तो you haven't practiced it and you are expecting that you should do. तो इंस्टेड ऑफ दैट यदि हम लोग नीचे लेवल से ही इस एजुकेशन को प्रमोट करें तो दैट वुड बी गुड. एंड आई थिंक गवर्नमेंट इज डूइंग लॉट एंड पीपल आर ऑल्सो गेटिंग अवेयर एंड डूइंग इट. So that is one of the best thing which would happen. Now IKS centers जो अभी खोले हैं यहाँ पर from the AICT, they are also doing a good job. So at our place, we also have an IKS center for town planning and governance. That is what we have taken because governance and town planning go hand in hand. जनरली हम कौटिल्य अर्थशास्त्र पढ़ते हैं तो वी जस्ट टेक इट फॉर गवर्नेंस, टैक्सेशन एंड ऑल दोज थिंग्स, बट इट हैज लॉट ऑफ इन डेप्थ मीनिंग फॉर आवर टाउन प्लानिंग ऑल्सो. तो ऐसे ग्रंथ जो आइडेंटिफाई किए, अभी हमारे यहाँ कुछ इंटर्नशिप बच्चे कर रहे हैं एंड देन दे आर गोइंग बैक एंड टेकिंग अ थीसिस टॉपिक ऑन दैट. So when they take a thesis topic on that, they are actually looking it into detail. So I think that first level of inculcation is happening. One of my friend has a center in NIT Calicut, which is on
landscape for this place. So that center looks into the landscape part of it. So sacred landscape and all those things. So there also it is getting. So there should be certain thematic or zoom in or niche areas where that has to be strengthened. And never to say कि हेल्थ में तो ये हो ही रहा है, हेल्थ में कोई बात ही नहीं है, इसमें तो काफी ज्यादा काम हो रहा है. तो ऐसे जो नीश सेक्टर्स है उसमें भी ध्यान दिया जाए तो दैट वुड बी ग्रेट. So I think if you want, this content is sufficient for taking on the discussion. I would like to stop my comments here. Sure. Thank you so much, Dr. Sharma. My question back to you, Dr. Rana. I would like to know that the teachers who do not have prior school leadership and teachers who do not have prior experience with IKS, how do we also introduce them to it? Are there any pointers that you would like to share with us? How do we bring about more acceptance? How do we increase confidence of school leaders, of teachers, of principals, of the wider school community, sir? And the same extends to also higher education, just not just the school ecosystem. There are two levels you have to, in my what I think, practicing in that field. My basic field is a degree is geography, but practicing term you can say I am very close to Shamaji landscape architecture, and school is this part of this. The first important thing is that how teachers are ready to do this. That is another problem. Majority of us, due to pressure, due to legal system or government system, Indian knowledge system, like that, it is coming up. So it is just like a superimposition of something. This is one side. So you have to realize this, what to do. And that's why what we are trying to say, awakening among teachers first. In that school, that is by chance, they were already doing since 10, 15 years. They are not worried about that government should say and course is what. It is nothing like that. This self-awakening system like this. And this way it is going on. So we want very simple thing like another scholar has cited the Buddhist and all these religious. Very simple thing is like this. We say the Pancha Tattva, the 5 gross elements. Okay? Sky, water, fire, air, earth. These are the things that make that. To put that in point, and informal education, it is not like always you say the course. Course can't change everything in your mind. It is the most important thing is to, what another term has been used, that let them say, let them awaken. So something program like this. And this is in another way you can say fully involvement. So first, how teachers are ready to do this. Only it got government wants. That's why, no, not at all. Never. Sorry. We are doing some work since many years involved in 2-3 countries, Italy and South Korea and Japan. They are not bothering about what is the course system, what government wants. They always try to say that how we can make good human beings. Our main purpose is always go in higher education, always to get job and how much package, how much money. So money became important, mind became low. So that type of, this is a psychological problem. So maybe some psychologists we can invite and say that how that can be adjusted like this. So these are some of the things. Like another example, when you talk about these 5 gross elements, so that you can say that is based on the Vedic tradition, we are going to pure tradition, it's like this. So this is school principle. The same thing, she changed, Anita had changed in a different way, they call punch. So that is perseverance, attitude, nature, compassion, and honesty. Like this. So simple way say that like here is the 5 gross elements, and the meaning is like nowadays, and you have to do like this. So they have prepared. It is not a linked course, but it is more influential and going like that. Recently, a group of teachers from high school, Norway, Oslo High School, they came here. They say, "My goodness, how you people are doing?" So this is simple thing, self-awakening.
know our culture, to feel about our root, and then try to awaken the young masses. And it is below 10th grade. It means at least 15th, 16th year, you can say below that age, that is the program. This is one side. The other side is when we are talking about very higher level, this is more academic exercise till that I feel with all this apology. Let me say, I have also writing now report, etc. So that we try to link. Let me cite one example of Vivekananda Center Vedanta Society in Chicago. 2 years back, I was there just by chance. Some program happened and they have arranged my lecture, so I have gone there. When we enter in the temple, there's a beautiful, you can say, exhibition hall of all the murtis and so many things old. One example is here. When they are talking about the atomic sense, so here is Dalton. So they have 3D beautiful model. So Dalton is saying, then explaining something like atomic, and then here is Kanad Rishi. So you say, oh, my, then comes, and we find 10, 15 students, all American students, no Indian root. And teachers, there's complete silence. You have to listen, learn. Okay, we were 2-3 hours. Then outside we came. When that they came, student came out. Then we asked a little bit. They were very happy to know that I am from Varanasi. They said, oh, that is a holy city. I've heard like this. Okay. So they become a little bit affectionate. So I asked the teacher that you are American. Are you Christian? Yes. Then what is your interest? Simple things we realize that how to make the world one family. What Chicago lecture that Vivekananda. With that idea reading, we came to this place and we gave background to the students. A student may see the old. Like this now, we have talked that to add with Veda or not. No, we have to take the old but modern science also. Simple example is this, like what is atoms? I am the example giving based on that. What is the atoms? So simple way you can say that when you divide that in different parts, some particle and infinite parts, then from that it comes like that in a literal sense. And the same image with all this 3D arrangement was going on there, and then the voice coming based on Kathopanishad, and they say, Anore, Anuyani, Mahato, Mahiyan. It means that particle which is going to be diffracted into so many parts, then that becomes more powerful than that, and that to be called as Paramanu. So parallel like this. So when we are going to talk about this Indian knowledge system and awakening system, so simply to say everything is in our culture and everything in our root. Now we have also to say that how this can be linked. So we have been very good in theoretical perspective. West has been more practical perspective. We have been very much eternity. They have more externity. So we have to make a bridge. And that who will take? Not only course, not only that the different thing is defined, but there should be some system of self-realization among the teachers, especially below high school, because that we have to generate. It's nothing like that. And higher level, okay, now, like one example, last example I am citing. The Indian Science and Society that is sponsored by Government Culture Department, etc. The project is going on. The Indian knowledge system in Purana. A big, maybe 2-3 volumes, they will publish that. So recently they have also invited me to contribute to this. So I ask very simple thing. Who will read that your book? For whom you are writing? Then simple thing is you have to learn how to write a very, very popular and simple language. The thing is like this. When critically you are going to talk, here Carl Sagan said that, French of Capra, and here is a physics, who will read that? It's an academic exercise. So that also to be kept in mind, that how very simply we have to say. And the last line, based on Arvindo's one of saying, which is very, very popular, not exactly I can put, but based on that, whenever I give my lectures, maybe 2-3 times in a
month, and always I end with that one. He said the more crucial and cruel species in the whole world is man. But also remember, the only divine being is man. So solution will come from man's mind. Okay. And now the same thing, if higher education you are going to see, then I love this last line. You see Lena White, now no more. He already died long back. So he was at Harvard University, professor of history of science, and perhaps only such person who published in famous journal Science paper the religious root of ecological crisis. He never cited Aurobindo, but see that thing. So he is citing 67. Aurobindo is talking that was 1940, around that book from where I have quoted. And the line is like this: all the problems generate from the mind, solution will come from the mind. This way the article starts. And then he criticized badly that what is going to happen in Western world, there will be crisis. He talked in 67. So that is the thing we have to think. The last word will be to bridge East and West, old and new, tradition and modernity, and nothing to say separate like this. We have to synthesize. We need synthesis. Analysis, we have too much. Logic, we have too much. So that art we have to develop. So people, those who are more young and they are more serious, then they can think over that. Thank you very much. Thank you so much, Dr. Rana. I think that explains the answer quite beautifully. My next question is to you, Dr. Anjani. I really want to know, sir, that I think इससे पहले जब आपने बात की थी तो हमने यूथ के अग्रीमेंट की हमने बहुत बात की थी, लेकिन अगर हम यंगर ऑडियंस को देखें तो पेरेंट एक्सेप्टेंस भी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या आपकी उसके ऊपर कोई राय है कि हाउ डू वी इंक्लूड पेरेंट्स, हाउ डू वी पेरेंट कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ाया जाए? जो थोड़े बड़े बच्चे हैं या जो यूथ है, वहाँ पे तो हमें डायरेक्टली यूथ से ही बात करनी चाहिए। लेकिन जब हम यंगर जनरेशन की बात करते हैं, तो पेरेंट एक्सेप्टेंस एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है सर। सो आई वुड लाइक टू इनवाइट योर थॉट्स सर, प्लीज। थैंक यू मैम। खाली पेरेंट्स ही नहीं, हम समझते हैं कि हमारी जो सोसाइटी है वो भी, पेरेंट्स तो हैं एक महत्वपूर्ण पहलू। तो मैंने शुरू में कहा था इसके जो 4 मुख्य आयाम है। पहला तो जो हम अपना करिकुलम डिजाइन करते हैं वो, दूसरा बच्चा या हमारा विद्यार्थी जो है वो अपने परिवार और समाज के संपर्क में रहता है। तीसरा एक महत्वपूर्ण पहलू इसका हमारा जो कैंपस है, चाहे वो स्कूल हमारा जो कैंपस हो या उसको भी हम कैसे डिजाइन करें, कैसे इस तरीके के करें कि बच्चा लगातार हमारे IKS से रिलेटेड विभिन्न पहलुओं से परिचित होता रहे। और अगला जो पहलू है कि जिस अपने पर्यावरण में वो रहता है, जो उसका सर्कमस्टेंस है, उसका जो परिस्थितियां, जो उसका परिवेश है वो कैसा है। तो परिवार के लिए हम एक तो देखते हैं जो हमारा जो जनरेशन है, वास्तव में यदि हम चर्चा करें तो अलग अलग जनरेशन हम लोग जिससे आते हैं और आज का जो टीनेजर्स है वो, तो पारिवारिक पृष्ठभूमि तो जो हमारी सांस्कृतिक विरासत रही है, जो हमारे, इसको हम एक रूप में देखें कि हमारी जो लाइफ स्टाइल है, हम जीवन जीते कैसे हैं, बड़ा सरल सा है। तो हमारा जो भारतीय दर्शन है जिसे हम जीवन पद्धति कहते हैं, सुबह से लेकर शाम तक। और हम क्या करते हैं कि जो हमारे विश्व के तो ग्लोबल हमारा जो युग है, हम पूरी दुनिया से जुड़े हुए हैं, उसके विभिन्न आचारों विचारों से हम प्रभावित होते रहते हैं। तो जो नमस्कार तो जो हमारा परिवार है, जो हमारी पुरानी जनरेशन है, वो तो काफी कुछ उसकी दिनचर्या में ये जो हमारे भारतीय ज्ञान के विभिन्न आयाम हैं, चाहे वो जीवन दर्शन से संबंधित हो, चाहे पर्यावरण चेतना से संबंधित हो, चाहे जो दर्शन है और जो विज्ञान है उससे संबंधित हो, चाहे जो ज्योतिष है उससे संबंधित हो। तो हमारी जनरेशन तो जो जिसे परिवार कहते हैं, जो उनका बच्चों का है, वो तो काफी कुछ उससे परिचित है। अब डिपेंड करता है कि उनको भी हम कैसे, लेकिन वही है कि वो चीजें जैसे कि धूल लग गई है, तो वो भी इस आधुनिक परिवेश में
अपने प्राचीन विरासत को, प्राचीन परंपराओं को कितने हद तक वो सजो के रखे हैं या कितने हद तक आज उससे वो जुड़े हुए हैं, उनको भी एक बार जागरूक करने की आवश्यकता है। मैं इस पॉइंट को हमने पॉइंट आउट किया था कि उनको भी कैसे एक बार हम जोड़ें, तो उनको जागृत करने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए एक सामाजिक चेतना की आवश्यकता है। भारत सरकार लगातार, मेरी आवाज आ रही मैम? Yes, sir. Yes, sir. We can hear you, sir. तो भारत सरकार भी Yes, sir. लगातार, हाँ हाँ, भारत सरकार भी लगातार इस दिशा में कार्य कर रही है। ढेर सारी सामाजिक गतिविधियां और जो विभिन्न सामाजिक संगठन हैं, जो आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जो हमारे आजकल संगठन है, वो भी इस दिशा में काम कर रहे हैं। तो वास्तव में सब एक कड़ी है, चाहे परिवार है, चाहे समाज हो, चाहे सरकार हो, या विभिन्न सांस्कृतिक और सामाजिक समूह हो। ये एक सामूहिक चेतना के रूप में ये चीजें आपस में संबद्ध नहीं होंगी, जुड़ेंगी नहीं, तब बच्चा भी उसी की एक कड़ी हुई। तो परिवार को भी जरूरत है फिर से जागरूक करने से, और फिर से उसे इस जो हमारी पुरानी सांस्कृतिक विरासत है, हमारी जो आध्यात्मिक चेतना या उससे कैसे हम उसको जोड़ें। तो सबको वास्तव में विभिन्न स्तरों पर काम करने की आवश्यकता है कि हमारे समाज को, हमारे सांस्कृतिक संगठनों को, सरकार को, सामाजिक सब मिलके काम करेंगे तो हम अपनी उस जो पुरानी थाती है उसको कैसे, मैंने कहा फिर वही कि जरूरी है कि उसमें कुछ ऐसी चीजें ना आ जाएं जो कम से कम प्रासंगिक भी हों और तार्किक हो और वैज्ञानिक। हमारा जो आज का युग है उसको हम अगर तालमेल बिठा के चलेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। तो परिवार को भी इससे जोड़ने के लिए हमें उन्हें जागरूक करने की जरूरत है। और हमारे विद्यालय में भी, हमारे स्कूल पे भी, यूनिवर्सिटी लेवल पे जो कार्यक्रम होते हैं उनमें उनको हम जो पेरेंट्स हैं उनको उसमें इनवाइट करें। IKS से संबंधित कोई एक्टिविटीज होती हैं, और मेरा तो ये सुझाव था कि चाहे विद्यालय स्तर हो या यूनिवर्सिटी हो, उन पे जैसे अध्यापकों के लिए तो उनके लिए सेमिनार हैं, ग्रुप डिस्कशन ये तो होने चाहिए, लेकिन साथ ही साथ मैं चाह रहा, जैसे हमारे यहाँ एक IKS सेल बना हुआ है, डायरेक्टर है उसके डिपेंड, तो उन पे पूरा एक वार्षिक कैलेंडर एक हो कि साल भर की गतिविधियां संचालित हो और उसमें पेरेंट्स को भी जोड़ा जाए, समाज के विभिन्न वर्गों को भी जोड़ा जाए। जब तक कि विचार विमर्श में हमारे डेली रूटीन में आएगा नहीं, तब तक इसे हम वास्तव में बच्चों और परिवार और समाज में ले नहीं जा पाएंगे। तो इसे एक सतत, ये एक दिन होके ना रहे, ये हमारी पूरी वार्षिक गतिविधि के रूप में आए, इसका एक शेड्यूल बने जिसमें पेरेंट्स, समाज और विद्यार्थी सब मिल के काम करेंगे, तभी हम इस जो हमारा जो ध्येय है कि अपनी प्राचीन हम सांस्कृतिक विरासत, उसके जो मुख्य मूल्य हैं बड़े महत्वपूर्ण है। मैंने कहा यदि आप हम अपने भारतीय प्राचीन वांग्मय को देखें तो आज हमारा जो बच्चा चाहता भौतिक सुख और आध्यात्मिक सुख, मैं देखता हूँ दोनों की चरम प्राप्ति हमारा प्राचीन दर्शन बताता है। यदि हम रावण की चर्चा करें तो इतना आज तक कोई दुनिया में जितनी भौतिक सुख नहीं मिल पाया। आध्यात्मिक सुख की चर्चा करें तो वो भी हमारा ज्ञान देता है। यदि हम पाश्चात्य दर्शन को देखते हैं तो एकांगी, उसमें ये चीजें नहीं मिलती, लेकिन भारतीय दर्शन में दोनों चीजें हैं कि भौतिक सुख की भी चरम काष्ठ वो भी प्राप्त करने के मार्ग है, साधन है, और जो आध्यात्मिक सुख है उसके लिए हम योग और ध्यान के लिए हम कहाँ भारत की तरफ आकृष्ट होते हैं। तो दोनों की चरम की प्राप्ति हमारे यहाँ है, लेकिन जरूरत है कि उन तत्वों को, उस गूढ़ जो तत्व हैं उनको हम सही अर्थों में, सही संदर्भों में कैसे हम परिवार और बच्चों के सामने प्रस्तुत कर पाएं। तो एक सामूहिक चेतना के रूप में इसे हम साझा एक सम्मिलित प्रयास के रूप में यदि हम जब संचालित करेंगे इस कार्यक्रम को, तभी अपने लक्ष्य में हम सफल हो पाएंगे। इसी दिशा में हम सबको कार्य करने की आवश्यकता है। Thank you, Dr. Anjani. I think that is definitely, you're absolutely right, sir. My next question to you is, Dr. Sharma. I would like to know, ma'am, I think IKS, in my opinion, and depending on what we've spoken about today all day, IKS definitely helps children connect their education with their real life. तो उसमें आपके कोई, would you have any thoughts when it comes to IKS as an implementator of experiential learning? So for this, I would like to put a very good example, which we have experienced firsthand. A few months ago, we had made an exhibition of how a temple can be constructed. तो हमारे यहाँ क्या था, हम लोगों ने छोटे छोटे मॉड्यूल बनाए ब्रिक्स के, which you can compose for yourself and make a temple. तो वो एक हमने एग्जिबिट करके अपने कॉलेज में लगाया था, इंस्टीट्यूट में, एंड वी हैड नियरली 4,000 to 5,000 स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट स्कूल्स coming and visiting and seeing
कि जैसे हमारी धरोहर ये जो शब्द हमेशा बोला जाता है, तो व्हाट इज दैट धरोहर इन द टर्म्स ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग। तो वो वहाँ एग्जिबिट हुआ एंड इट वाज रियली इंस्पायरिंग फॉर स्टूडेंट्स। उसके बाद हमें बहुत सारे लोगों ने पूछा कि आप क्या यदि कॉन्जर्वेशन पढ़ाते हैं या प्लानिंग पढ़ाते हैं या आईकेएस पढ़ाते हैं, तो उसमें उसमें जाने के लिए क्या रास्ता है। सो नाउ दे आर लुकिंग एट व्हाट आई वांट टू डू एंड दस दे वांट टू सी द पाथ फॉर इट। सो इस तरह के जो अवेकनिंग या इस तरह की जो एग्जीबिशंस हैं, एक्सपोजर टू स्टूडेंट्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सीइंग इज बिलीविंग, आई बिलीव इन दैट। तो जब बच्चों को हम दिखाएंगे कोई चीजें, ओनली देन दे वुड अंडरस्टैंड कि यस, हाँ ऐसा है। अभी बिना कुछ दिखाए सिर्फ हम बोलते रहे अच्छा है अच्छा है अच्छा है, तो दैट इज लाइक पीपल या चिल्ड्रन डोंट बिलीव। वो पहले जमाने थे कि माँ बाप से सवाल नहीं पूछे जाते, बोला है तो करो। अभी ऐसा नहीं है, अभी यू हैव टू गिव एन एक्सप्लेनेशन व्हाई इट इज टू बी डन। So I think that is for a good cause. I don't say that it should not happen. It should happen. You should always be aware of it. बहुत छोटे छोटे हमारे रिचुअल्स रहते हैं कि ये ऐसे क्यों करना, इस समय ये नहीं खाना, उस समय वो नहीं खाना। तो जो कहते हैं कि भाई अब बैंगन नहीं खाना जब बारिश होती है, now if children like it they would say कि नहीं क्यों नहीं खाना। So you have to say that it is not good for your digestion, so therefore you should not eat, and therefore there is the reason कि जब बारिश खत्म हो जाती है या ऐसा हो जाता है तब हमें ये करना। So those little things which are there as a ritual, I would say, has to be explained to the children. जब भी हम कहते हैं कि 4 महीने के लिए जब भगवान सोते हैं, आई जस्ट सेड दैट इट इज लाइक ड्यूटी हैंड ओवर। सो जो है भगवान विष्णु थक जाते हैं, सो इट इज ड्यूटी हैंड ओवर टू डिफरेंट पीपल। शंकर भगवान को कुछ दिन, इनको कुछ दिन, इनको कुछ दिन। सो दैट वे दे कनेक्टेड कि अच्छा हाँ इस समय ऐसा क्यों, उस समय वैसा क्यों। सो उस समय उनके बर्थडेज आते हैं, उस समय उनका सेलिब्रेशन रहता है, इसलिए उनको उससे कनेक्ट करो। तो जब ऐसा आप थोड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरीज बच्चों को बोलेंगे तो दे वुड एक्चुअली, आई थिंक, वुड कनेक्ट टू इट। तो एक एग्जाम्पल मैं लाइव बोलूंगी। ये अमर चित्र कथा का एक ब्रांड पहले आता था। व्हेन आई वाज यंग, हर बार ट्रेन में बैठने के पहले आई नीडेड दैट कि एक अमर चित्र कथा चाहिए। सो उसमें इतनी सारी पुरानी चीज, मतलब इतनी सारी कॉन्टेक्चुअल चीजें अभी भी, जैसे कई जगह आती रहती कि क्या आप अन्नपति सुई ये नाम जानते हैं, क्या आप रानी अब्बक का ये नाम जानते हैं। सो ऑल दो स्टोरीज आर एक्चुअली देयर इन अमर चित्र कथा, एंड इफ दे हैव रेड इट, अभी तो डिजिटल भी शुरू है, if people read it they really will connect to at least some part of it, and then there is an interest created. दूसरी चीज है the knowledge of the subject domain and knowledge of Sanskrit. तो हमारे बहुत सारे जो ग्रंथ है, दे आर ऑल इन मोर और लेस संस्कृत अंडरस्टैंडिंग। बहुत सारे ट्रांसलेशंस हुए हैं, बट यदि आप रूट पे जाते हैं तो आपको उसी शब्द का अर्थ एक डॉक्टर अलग निकाल सकता है, एक आर्किटेक्ट अलग निकाल सकता है, एक प्लानर, एक बॉटनिस्ट, सबको अलग अलग अर्थ निकाल सकते हैं, क्योंकि संस्कृत शब्द का मतलब कॉन्टेक्चुअल मीनिंग होता है। तो यदि संस्कृत सीखना एक बात है और उसको कॉन्टेक्स्ट में लाना एक अलग बात है। सो लर्निंग बोथ द थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट। सिर्फ संस्कृत आता है तो कई बार आप डोमेन नॉलेज नहीं होने के कारण उसको एक अलग इंटरप्रेट करते हैं। वन ऑफ माई फ्रेंड वॉज डूइंग हर नेहरू स्कॉलरशिप ऑन दिस, वन ऑफ द चैप्टर्स, जहां पर एक ही शब्द का अर्थ था, तो उनका जो इक्वेशन कहते हैं वो वैल्यू फिट नहीं हो रही थी, क्योंकि ऑल अदर मैथ्स वाज fitting right, but that value if interpreted in some other way was not getting it. Once they started interpreting in a different way, they just got that answer and the thing was actually made. So इसलिए I would say there are two things which are important. One is domain knowledge and the Sanskrit knowledge, and bringing it in very common language, very easy language. I think Rana sir has also said on it कि आम भाषा में बोलिए। बहुत आप टेक्निकल भाषा में बोलेंगे तो नहीं समझ में आएगा, तो आम भाषा में बोलना जरूरी है। सो दैट इज आई थिंक द क्रस्ट ऑफ ब्रिंगिंग द नॉलेज टू ऑल पॉपुलेशन। अभी नहीं तो इट इज जस्ट 1% और 0.5% ऑफ द पॉपुलेशन जो ये सब सुन रही है या इसके बारे में समझ रही है या कुछ कर रही है। यदि आपको यू वांट टू ब्रिंग इन मासेस, सो यू हैव टू इनकलकेट दैट इनटू द एजुकेशन। जैसे मैकोले ने कहा था कि टू break them you need to remove the language, now to build them you need to bring in the language and the text earlier. So I think that would be strengthening our knowledge system and our what should I say, individuals or humans as a good nation, good member of the nation. I think that's that would answer what you are saying.
Thank you. Thank you. Thank you so much, Dr. Sharma. We are also joined by Dr. Anuradha Chaudhary. Ma'am, I would like to welcome you to our session. Dr. Anuradha Chaudhary is the coordinator of the IKS division of AICTE, Ministry of Education, Government of India. And she's also an assistant professor at the Department of Humanities and Social Sciences. Dr. Anuradha, we would like to welcome you to the panel. My next question would be to you, ma'am. I had asked this earlier, but I would like your thoughts on this. The integration of IKS into the vision of NEP 2020 and what that means for the future of education in India, ma'am. We would love to hear your thoughts. Thank you very much, first of all, for this kind invitation, and I apologize to all the other panelists for not being able to join you a little earlier due to some other commitment. But thank you very much again. And the question that you've asked is a very relevant question, especially in today's context, where the NEP is mandated IKS, and there hasn't been sufficient orientation in many quarters about what really this is and why is it important at this point. So if I can just present it in a short manner, and maybe I'll use a slide to share 2-3 quotations which will highlight the importance of this particular agenda, if I can put it as plainly as that. So why do we need to talk about IKS in today's context, and what are the best ways in which we can bring it forward? So with your permission, I'll just show you 2-3 slides, and do I have sharing possibilities? Since this is that possible, or I can just read it out, whatever. If it's easier for me to just read it out, I can even just do that, whatever works for you. Ma'am, I think I'm not sure if we have enabled the sharing option at the moment. Are you able to see the option? Is it visible on your screen? Share screen option, are you able to? So up till now, we've not had any presentations, Anybody which showing? is why I'm No, double these checking. are just nice, important quotations. And I think if we just see some data and some quotations, then it becomes very clear. The whole point becomes very clear. So I think the green button on my screen is on. If you can just see if it is on your screen as it will well. allow The me to share do screen so, is green. Yeah. So I'll just put the slide in place and I will do it. Can you see it? Yeah. So we have some data here. Yeah, it is coming. So we just have some data here, which is by Angus Maddison in his book, The Contours of the World Economy from the 1st to the 2030 AD, where he's saying that, almost between the 1st and the 18th century, we had anything between 32 to 24.4% of the world's GDP. Such wealth normally has certain implications. The sustained prosperity for over 200 years has certain very clear indications. So one, for example, would be that you can have prosperity when there is a demand of your products. To have products of that demand, they have to be of a very advanced quality. So high level, so that quality can only happen when there is a lot of in-depth knowledge on certain the products that you're making. So knowledge domain has to be of an advanced category. There has to be skill. There has to be monetization. There has to be the entire setup in terms of systemically. The trade routes have to be good. The accountability, the security. So there was an entire ecosystem which facilitated this prosperity to take place. And this went on for almost 2,000 years. Because it also then implies, when we're talking of prosperity over 2,000 years, it implies that it was not in a single domain. It was spread across disciplines. So it was very inherently multidisciplinary. And it could not have happened again if there was just one section of society participating in it, which meant that entire sections of society were contributing towards this wealth in their own particular manners. So then it continued for 2,000 years, which means that the transmission mechanisms were very strong. Now, if the transmission mechanism was strong, it means that there were strong institutions of learning and transmission. Now, if those institutions were there, what was the kind of knowledge that they were teaching? Was it only knowledge that was looking backwards, backwards and saying that, we had very advanced knowledge? Or was it contemporary in its adaptation of the best practices and future oriented? So we see that all of these were characteristics of that knowledge that was evolving over at least 2,000 years. And this becomes evident just by looking at the figures that we have in front of us.
Why did it drop to 24.4%? The major reason being because the Mughals, who were there for at least 700 years, were not very seafaring people. They were more landlocked in their entire operational mechanism. And therefore, we lost out on the incredible maritime trade that we had in different times. So that was the reason for the drop. But the thing about the Mughals invasion in our subcontinent was that they had come to stay here. So they did not majorly disrupt the existing systems. And therefore, the prosperity was allowed to continue. Come 1950, we see it has dropped to 4.2%. Why? Because we just see that Robert Clive, when he took over in the Battle of Plassey from Sirajud-Dowlah, he took back almost 2.5 million at that time. Now, we're really talking of huge amounts of wealth, and which is almost 215 million pounds today. So in 2024, we are at about 8.23. So why do I say this? So we've arrived at these understandings of what might have led to that prosperity, and we see this quotation by Syed Al-Andalusi, who was the Qadi or Chief Justice of Toledo. And these are what he's saying. He's writing a global study of history of science, which focused on the debt the Arabs owe to the thinkers of South Asia. It is one of the most contemporary statements, important and contemporary statements of the power of Indian ideas and prestige in the Indosphere in the medieval Arab world. So he says the first nation to have cultivated sciences is India. So when we're talking of IKS, I'd like everybody to just listen to what all was there. All right. And then we'll appreciate why we are again requiring to bring this back into context today. So he says, this is a powerful nation having a large population and rich kingdom. India is known for the wisdom of its people. Over many centuries, all the kings of the past have recognized the ability of the Indians in all the branches of knowledge. First and foremost, I'd like to just draw your attention to the first line where he says about the first nation to have cultivated science is India. So, when we look at IKS, we tend to think of it as only the Vedas, and there is this wrong impression going around the country that when we're talking of IKS, it's primarily the philosophical, spiritual text that we're referring to. No, so it's referring to a lot more than that. We're talking actually of sciences in that age. So what were they? And then he's saying that the kings have recognized for several centuries before that, and they're referring to India. They're not referring to kingdoms. So even already in the 11th century, the notion of Bharat or India as such did exist for not just us, but also for people who were coming from outside. Then he says the Indians, as known to all nations for many centuries, are the metal or the essence of wisdom, the source of fairness and objectivity. Again, when we're talking of IKS in today's context, we're not just talking about bringing back subjects. We're talking also about bringing back the Bharatiya Manas. What was this Bharatiya mind that was capable of these genius creations? When Sri Aurobindo talks of the genius of India, what was that mind? What was the worldview? And then he says that in spite of the fact that the color, so they are peoples of sublime pensiveness, universal apologues, and useful and rare inventions. Then he says, in spite of the fact that the color is in the first stage of blackness, Allah and His glory did not give them the low character and poor manners of the inferior principles associated with this group and rank them above the white and brown peoples. Then he says, now this is where the IKS part really begins. He says, to their credit, the Indians have made great strides in the story of numbers and of geometry and have acquired immense information and reached the zenith in their knowledge of the movements of the stars, astronomy, and secrets of the skies, astrology, as well as other mathematical studies. So just if mathematical studies are very strong, there would be different domains or disciplines of knowledge that would be strengthened automatically just by the fact that we have a good understanding of the movement of the stars. Implies that things like astronomy, things like agriculture, maritime traditions, these would have been automatically strengthened. With mathematics being strong, everything that has to do with numbers, so be it constructions, the entire engineering field, all of this has to be well developed. So he says, after all that, they have surpassed all the other peoples in the knowledge of medical science and the strengths of various drugs, the characteristics of compounds and the peculiarities of substances. So if chemistry is strong, then medicine, metallurgy, there's so much that emerges just from these few utterances that are here. The kings are known for their good moral principles. So the governance was in good hands, their wise decisions, and the perfect methods of exercising authority. As to theology, they are in agreement as to the unity of God. So all of this was in the 11th century. What happens when the British came? So I'll just start reading from the quotation where it says, nearly every kind. I'd really like you to pay attention to the words. And this is as recent as the 18th century.
He says that nearly every kind of manufacture or product known to the civilized world, nearly every kind of creation of man's brain and hand existing anywhere, prized either for its utility or beauty, had long been produced in India. India was a far greater industrial and manufacturing nation than any in Europe or any other in Asia. Her textile goods, the fine products of her looms, cotton, wool, linen, and silk were famous all over the civilized world. So were her exquisite jewelry and her precious stones cut in every lovely form. So were her pottery, porcelain, ceramics of every kind, quality, color, and shape. So were her fine works in metal, iron, steel, silver, and gold. She had great architecture equal in beauty to any in the world. She had great engineering works. She had great merchants, great businessmen, great bankers, and financiers. Not only was she the greatest shipbuilding nation, but she had great commerce by land and by sea, which extended to all civilized countries. Such was the India that the British found when they came. And what happens after that? In 1835, when Macaulay gives his minutes, so he says, a single shelf of good European library was worth the whole native literature of India and Arabia. The intrinsic superiority of the Western literature is indeed fully admitted by those members of the committee who support the Oriental plan of education. The literature, Sanskrit and Arabic, inculcates the most serious errors on the most important subjects, including false history, false astronomy, false medicine, in company with a false religion. Instead, he proposed English is better worth knowing than Sanskrit or Arabic in order to form a class who may be interpreters between us and the millions whom we govern. A class of persons, Indian in blood and color, but English in taste, in opinions, in morals, and in intellect. All right. And it's in this context that NEP becomes very relevant. Because as I normally say, so once you have this background, we realize that if that is the mindset of Macaulay's mindset, that everything that is Western is superior, and everything that has been in India for the past 5,000 years that has been so highly praised, everything is trash. Then I have to set up. They were given the task of setting up an education curriculum or an education syllabus. What will you teach there? You'll teach everything that is Western because that is what you consider as superior. Now, anyone studying in that, where will they go to get higher knowledge? They will go to the West. Now, if I am an investor and the education is the biggest sector in the government that I'm putting my money into because it's the next generation that's growing there. So, if I'm putting my money into something, where is this tree that I've grown bearing its fruits? In the West. So, as an investor, the basic thing would be that, what is my investment to returns? We are running on a minus when it comes to education. And we see that the rest of the world is benefiting from this knowledge tradition immensely because of the value. And in fact, just today I was reading an article where they're saying that in Pakistan they have taken up the study of Sanskrit in Lahore University ever since partition because they have realized the worth and the overwhelming response they are getting for the the wisdom that seems to lie in it and the reclamation of this knowledge also as part of their Vedic heritage. So it's just quite fascinating how while there are so many sections within our society that are busy trying to discredit this entire attempt, people around the world are waking up to what it has to offer. And William Dalrymple, he says, that half, if not more, of the world's ideas have come from India. And why is it that we Indians know nothing about it? So when we are trying to present, present IKS in today's context, it really is in the spirit that there is so much of wealth. And we are so ignorant about that. So how can we bring back a certain some of these jewels so that we can be the first benefactors of our own heritage, the wealth of our heritage, and then make sure that the future generations can use them in today's context. So in the present scenario, this is just one part of it, and the last I don't know how much time I'm just like speaking. You please feel free to interrupt because I am in a flow. So No, not at all, ma'am. I think we can take another couple of minutes, 2 to 3 minutes. And then I would have to open the stage to the questions. But I think we can take another 2 minutes. Okay, because what I'd like to just add in that case is that so the IKS division, when we came into the picture, we said that we want to bring back this knowledge with 3 dimensions. One is what is the drishti, and here I'd like to invite everybody to do an exercise with me. All right, and the exercise is very simple. The exercise is imagine that you're standing in front of a mirror. What do you see? It's a bit interactive, so if you want to unmute and speak, I'd be really grateful. So if you're standing in front of a mirror, what do you perceive? What do you see of yourself in the mirror? What are the factors you will identify?
So you would see, for example, color, you would see size, you would see age, you would see gender, maybe religion, maybe, you would observe all these phenomena which the external eyes can capture, and that would have an impact on your behavioral choices you're making. Now, secondly, if imagine you have an X-ray lens in front of your eyes, what would you see in the mirror? What would you see yourself as, looking at yourself through an X-ray lens? We'll see skeleton. So if you're seeing a skeleton, will you lift a heavy object as easily as you do without thinking about the tensions on your bones? You think twice about lifting a heavy object or even banging your hand like that, right? Because you can see the shock. If you take another, let's say, microscopic lens, suddenly you see germs and bacteria, and if somebody was a pure vegetarian, it would affect the way in which they consider what they consider vegetarian and non-vegetarian, because everything is teeming with bacteria, including the pot of curds. All right. So then it would modify behavior. It would modify perceptions. Finally, if you have a quantum lens, imagine you put on a quantum lens, then what do you see? Do you see yourself standing there? No. Would you see more energy or more space? More space or more matter? More space. Vibratory or static? Vibratory. Vibratory. Is it? Are you aware that are you there or are you not there? That's difficult to answer. You are there. One Who else you is are there. watching? You're there. Who else is You're watching? the observer. You're the Correct. observer. But we are not there as we exist as such. Right. Absolutely. Now the next question is, so there are a few things. You are there. You're conscious that you're there. And if you put that specs and look all around you, if you put that lens and look at the whole world through that lens, what happens suddenly? The world looks very different from what you're If somebody used to said this perceiving is it a as. man, this is a woman, fat, thin, black, white, nothing will matter. It will not matter. Nothing exists. Absolutely. How would you feel then? Suddenly, if all these differences, which are the basis of our decisions and of our behavior, suddenly if all that is completely taken away, how would that change the way we live in life? So we would be a lot more inclusive. Yes, we would be a lot more inclusive. And what we consider priority would really change. A lot of things will happen. Exactly. So the thing is that the Bharatiya Jivan Drishti included this lens of universe that extended all the way on one side from the subtle and on the other to the gross. So our existence was a reality that spanned this entire distance. And what we wanted to plug ourselves into is what you would see. Okay, so that was very important to recognize through this Indic lens. And that would then determine behavior. So the Bharatiya Drishti held these possibilities. And if we can bring that back into the classroom, the awareness of the spectrum of consciousness that we are made of, and whom are we talking to when we're talking to students? What is our relationship? Why are we the way we are? What is the scope of our being? So these are all the things. And secondly, what are the paramparas of IKS? Who are the writers? What are the texts? What is the vocabulary? We have become totally alienated from our own terminologies. Right. And each of these terminologies is a worldview in itself. So how do we bring that back? And finally, we had always a very practical regard on things. On one side, where there was a philosophical, high darshanic basis, we knew the sources of things. We were never limited by that. We always converted into how does this take our lives forward? How does it help us make our existence more towards perfection? So you start from near and you go to far, which is what Sri Aurobindo really says. Yes. And then you recognize that each individual is so unique. So how do you allow each soul to grow in their own thing? So consult their own mind and their own growth. And because everything is from a quantum lens, there is no you know more, I know more. The knowing is there. Whoever can tap into it. So nothing can be taught. So we allow the space for children, first of all, to recognize that nothing can be taught. You have to discover. So how do we open up, unfold possibilities for them? So the more we are able to do that, more we move towards what I call, the Bhaswan or the Bharatiya Swadhyaya Andolanam, which is how do you and Swadhyaya here is search for verifiable and authentic dimensions of heritage. I'll just maybe show these last quick, literally in 1 minute.
I will just take your permission, and in a minute, I will just show the slide because it's easier seen than heard. So Sure, ma'am. which is Bharata Swadhyaya Andolanam, or the shining one, it means. So what is Swadhyaya? Search for verifiable and authentic dimensions of heritage for youth advancement based on yogic applications. And what are these yogic applications? It basically says there are 5 I's of IKS, Indian knowledge systems. These are traditional knowledge systems. They have a paradigm and they have content. There is geographical part. There is a regional, national, and international impact. So if we can help our students appreciate the regional dimensions of it, how the same principles express themselves diversely in the different parts of the nation, and what was their international impact. There's a historical context. So what are the chronologies of things? What is the cultural drishti that is underlying it? And finally, what are the languages, as ma'am was saying before me? So unless we're bringing those bhashaएं अगर हम वापस नहीं ला रहे, our worldviews will be limited by a particular lens that a language has changed it into. Okay, and then internalizing. This knowledge has to be essentially internalizing versus externalizing, integral versus partial, interdisciplinary versus compartmentalized, intuitive versus mental, and inclusive versus exclusive. So these were just certain parts of IKS which I think we need to bring back. And more, when I'm talking to people about this, I'm saying it's not just about bringing back what did Aryabhatta do. That, of course, is very important and all. But what we have lost tragically is the Bharatiya Manas. What was the Bharatiya mind that was capable of juggling with genius ideas? Because what the vision of things, the potential of things, the honesty, the truth with which we would deal with things is what made us Bharatiya. So Right, ma'am. I think this is perfect. As the final comment of the panel as well, that it really is about bringing connecting, changing one's perspective towards IKS, understanding that the what all IKS holds and what is the wealth of knowledge that we need to revive. Because it is there. It just needs to be connected again. It needs to be contextualized again. It needs to be brought back again. Thank you so much for that, Dr. Anuradha. In the context of time, because I think we would love to speak for another half an hour. There is so much that has to be said about IKS and its implementation on the ground. But keeping in mind the timeline, I would like to invite only one question from the audience. I'm really sorry, audience, but we'll be able to take only one question today. So I would like to invite somebody to raise their hand so that I can allow you to unmute and a question can be asked. Ankita ji has a hand up. Ankita ji, I think we can invite you, ma'am. So we have had the opportunity to hear some inspiring examples like this implementation throughout the session and the vision ahead. It truly encourages, I think, most of the facilitators here and those who are in education. So I would like to know there are many facilitators, primary grade facilitators, middle school facilitators who want to start with implementing IKS in their classrooms but don't know where to start from. So what would be the initial steps that they can take to get started in their classrooms with their learning? Thank you, Antika, for that question. So the question really is, what are the few steps that educators can take today to kickstart the process within their classrooms, irrespective of the teaching category that they are in? Did I get that right, Antika? Wonderful. I would like to direct this question to you, ma'am, Anuradha, ma'am, if you would like to share some of the comments on this. So one, I think the first and foremost, what was important for the teacher is to just understand the importance of the role that they're playing there. Even before you start teaching anything, I think the first shift that we have to do is a major attitudinal shift. And for that, I'll just give a small example in terms of how can we understand it.
So in Sanskrit, when you have a verb, it has two dimensions to it. First is that every verb has a fruit and every verb has a process. So for example, if you say educate today, what is the fruit of educate? What is the end product that we regard as successful? Very typically, the end product is one who has a job, who gets a job. Teaching in an IIT, it's very, very clear that the best fruit of this education system is one who's got the highest package. Now, if that is the fruit, then the entire process is geared towards that. It's not geared towards the human being. You just have to create a machine that can bring you out the best package at the end of the day. Human being it doesn't matter. It's not in the accounting at all. Okay, and then when you take it to a school level, you see that the entire process therefore gets regulated towards that. The highest mark for that, the kind of teaching, for that, what the system is interested in, for that, what we are teaching in the classroom. So, what is the relationship between the teacher and the taught? Everything is regulated by that end product. So, what was the end product from IKS? The end product, the starting point is that you're here with living souls. We're all living souls. We're not actually even very different from each other at a fundamental level. We are here. You just happen to be in that body. I happen to be in this body. We are here on a collective experience. So how can I help to bring out the best in you? This is the role that I have to play here. So when a teacher enters a classroom with this understanding, IKS has already begun, because that's the core way in, and that changes everything. That changes the way in which, first of all, you're regarding the children in front of you. You want to give them the best. For that, you're ready to recognize that every soul is a unique soul. Mother Nature is far too smart to duplicate her experiments. So everybody's unique. So you can't say ye bacha smart hai to wo bacha gadha kyun nikla. That child has some other thing that it then becomes a responsibility of the teacher to help that child blossom into. So while these things sound idealistic, at the end of the day, we realize that how the teacher will behave with the student over a certain period is going to determine what the child is going to become and how they're going to even relate to society after that. So that would be the first place. So I would say attitudinal is the first place. Second, what I would request everybody very humbly is to just ask yourselves that in my domain, what has been Bharata's contribution? Just that little effort. So I believe in Japan, you cannot complete a PhD if you have not included what has been Japan's contribution in that subject. So what has been Bharata's thought and contribution in this particular subject? Can we study that ourselves and bring in examples from the local context, which is what Sri Aurobindo says, going from near to far. So from the local context, what are those things that from everyday life, how can we problematize? How can we ask research questions from the environment around us? And third is, what is the best way to evaluate? So how do you assess things like that? What are you assessing? And how do we communicate that assessment in a manner that children realize that what you get, the marks you get are good, they're important, they're absolutely necessary, but that's not the end of life. That marks, forget end of life. Today, marks is life for many. No marks, no life. We've reached such ridiculous levels of equations that we have completely, I think, not lived up to the expectation that so that our civilization had from teachers about our role towards our future generations. So I think just if we understand that our role is to understand the laws of life, present them to the children so that they become capable of driving really well in any kind of situation, that I think is the little bit of contribution we can do. Thank you so much, ma'am. Thank you so much for answering this question. You're absolutely right. I think it comes down to each person, igniting the confidence among each person by them shifting their perspective to see how we have come forward because of the knowledge that we have gathered through IKS. That's very important. Thank you so much for that, ma'am. So with this, I would like to close the second international conference on IKS today. I would really like to thank all the moderators, all the panelists, and all of the participants. Thank you so much for joining us today. We also have the second day, which is tomorrow. So I would really like to invite everybody for that. All the participant certificates will be delivered to you by the end of the day today.
So that will also happen, and we look forward. From the family of SAS, from all of us, we would like to thank you for your presence, and we look forward to you joining us tomorrow as well. I would like to thank everybody. I would like to thank the panel as well. Thank you so much. Thank you very much to everybody. Thank you.